Hello. Yes. No, boss, puro no. Hello.
येवकार मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लब आयोजित मुली चषक पाचवे पर्व जसे आम्ही म्हणतात सेमी फायनल आणि फायनल थोड्याच वेळान सुरुवात जातली. ताज्या पयलीं आज मोठो दीस हिंदू हृदय सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज हांची जयंती आणि त्या निमतान आज मोठ्या दबाज्यान हांगा उक्तावण जातलें. जे एक दृढ वाद्य पथक आयलां मडकयच्यान आणि तांचे वाद्य हांगा आमचे जे मानेस्त सगळे हांगा हजर जाल्ले आसात. भोमानेस्त बाब सिद्धेश नायक झेडपी खोर्लीम आणि नॉर्थ गोवाचो जो आमचो मुखेल सोयरो आसा. तशेंच जयेश बाब नायक सरपंच मार्शेल, नंदकुमार शेट सरपंच कुमारजुआ, संदेश बाब शिरोडकर सरपंच चिंबल पंचायत, बाब समील वळवयकर सोशल वर्कर नामनेचो सगळ्यांचो लागींचो, तसोच निलेश बाब शिरोडकर सोशल वर्कर, सुरेंद्र नायक पंचमे सदस्य, सुधीर फडते, बाय अर्चना परब सेजल नार्वेकर, अनुज नायक, सौरभ बाब रायकर सोशल वर्कर डॉक्टरेट तांची इंजिनियरिंगान आसात. तशें प्रशांत बाब भांडारी आनी एक सोशल वर्कर, विकी परब, तशेंच नीलम परब आणि नारायण बाब नायक आमचे रिपोर्टर बंधू पत्रकार बंधू हांगा सगळे आमचे मानेस्त आसा जे हजर जाल्ले आसात. आणि आतां आमी रोखडेच जे दृढ वाद्य पथक मडकयच्यान आयिल्ले आसा जे तुमकां आज तांचो जी शैली आसा वाजोवपाची ती तुमकां दाखयतली. आणि आमी आतां म्हाका दिसता जवळपास सगळे जे सोपस्कर जे आसा ते पूर्ण जाल्ले आसा. थोड्या क्षणान काही खिणान आमी सुरवात करतात. हल तर सगळ्यो तयारी जवळपास पूर्ण. जशें आमी म्हणटात आज अख्ख्या गोंयभर महाराष्ट्रभर ज्या राजाक जो राजा सगळ्यांच्या मनान आसा काळजान आसात आणि एक हिंदू हृदय सम्राट असो हो राजा जाचे आज आमी जयंती मनयतात मोठ्या दबाज्यान मोठ्या उत्साहान. आणि तशेंच जे ऑर्गनायझींग कमिटी आसा जे सदस्य आसा ते दर वर्सा हो टुर्नामेंट जो आसा तो घडोवन हाडटा. आणि टुर्नामेंट अशा टायमार घडोवन हाडटा ज्या खिणाक छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती त्या टायमार येता. आणि प्रत्येक फावट प्रत्येक पावलार प्रत्येक पर्वार प्रत्येक वर्सा जशें तुमकां दिश्टी पडटा जे पताका आसात ध्वज पताका आसात आणि जे हांगा संगीत चलता ते फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणल्यार जशें ढोल ताशा पथक अशें आसा तेंच हांगा जे संगीत आसा तें चलता. ज्यो मुर्ती आसात ज्यो प्लेयर ऑफ द सिरीज, मॅन ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट बॅट्समॅन, हे सगळ्यो ज्यो ट्रॉफीज आसात ती सगळ्यो ट्रॉफीज तुमकां प्रतिमा आसा ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची आकृती तुमकां दिश्टी पडटा. आणि प्लेयर ऑफ द मॅच सुद्दां आमी जे दिताले ते सुद्दां छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जशे नाणे आनी तांची प्रतिमा आशिल्ली अशी एक प्रतीक जे प्रत्येक आमी मेंबर्स जे आसात जे जिखतात तशेंच ज्यो टिमी हांगा भायर पडटात जिखनात फुडें पावनात तांकां सुद्दां आमी ते एक यादस्तीक अशें भेटवण करतात. सो सगळे जे आसात ते हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज फक्त गेम क्रिकेट आसा ती चलता पूण क्रिकेट म्हाका दिसता फुडें दवरून छत्रपती शिवाजी महाराज मनान दवरून कशे तरेन फुडें वचप म्हाका दिसता हे मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लबान उत्कृश्ट रित्या दाखयल्लें आसा. कला आणि संस्कृती तसोच क्रीडा म्हणल्यार खेळाचो जो एक उत्तम तांणी हांगा जोड पालो केल्लो आसा तो जोड पालो म्हाका दिसता सामको सक्सेसफूल जाता दर वर्सा सक्सेसफूल जाता आणि ह्याही वर्सा यशस्वी रित्या ते पार पाडपाचो प्रयत्न करतात. आतां पळोवया आमी थोडोच खीण उरला थोड्याच खिणान हे वाद्य पदक आसा ते वाजयन गाजयन आमचे जे मानेस्त आसा तांकां सन्मानान जी छत्रपती शिवाजी महाराज हांची एक प्रतिमा आसा हांचे एक मुर्ती जी आमी हांगा दवरिल्ली आसा तांचेर हार अर्पण करतले. आणि मागीर सोपस्कर जे आसा आज छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे ते पूर्ण जातले आणि मागीर मॅचीस चालू जातल्यो.
हात घेऊया कोई नाही हात घेऊया हमारे गणपती बाप्पा आई नवदुर्गा माता की
राम बोला जय हनुमान जय श्री राम बोल बजरंग बली की जय बोला जय श्री राम बोला जय हनुमान जय श्री राम बोल बजरंग बली की जय
उत्कृष्ट ताल लय हांचो मेळ घडोवन हाडपी दृढ वाद्य पथक मडकय ह्या म्हाका दिसता ह्या पंगडाक जोरान ताळी फावो जाता. सुंदर तांणी हांगा संगीत सादर केल्लें. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती सगळ्यांक उनीत परबी दिता आनी एक बरी सकाळ ज्या सकाळीन म्हणल्यार एक बरें संगीत बरें वाद्य ढोल ताशे जगाट हांचो एक उत्कृश्ट मेळ घडोवन हाडपी हें दृढ वाद्य पथक मडकयचें. आनी म्हाका दिसता हें वातावरण जरूय क्रिकेट टुर्नामेंट क्रिकेट सर्त आसूं हांगा पूण वातावरण जें आसा तें म्हाका दिसता सांस्कृतीक केल्लें आसा संगीतमय केल्लें आसा ह्या वाद्य पथकान. मायक आसना रे मायक आसा Disconnected. हॅलो आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम वज्रजुडा अलंकृत पुण्यश्लोक राजमाता राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा महाराज गणपती गजपती अश्वपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवदान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रात शास्त्र प्रारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय असो. धर्मशास्त्र मंडित ज्ञान गोविंद सर्जा रणधुरंधर छत्रपती संभाजी महाराजांचा छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव. जगदंब जगदंब जगदंब. संगीताचो उत्कृश्ट मेळ जाल्लो आसा आनी आतां आमचे मानेस्ती हांगा तयार आसात. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी मुर्ती आसा त्या मुर्तीचेर आमी आतां हार अर्पण करतले. आमचे सगळे जे मानेस्त हांगा हजर आसा हांव मागता विकी बाब परब हाणें सगळे मानेस्त आसा तांकां सन्मानान मुखार हाडचें. सिद्धेश बाब नायक झेडपी खोर्लीम हाचो आनी नॉर्थ गोवाचो तशेंच सामील बाब वळवयकार सोशल वर्कर नामनेचे हांगा ह्या वाठारांतले तशेंच जयेश बाब नायक सरपंच मार्शेल नंदकुमार बाब शेठ सरपंच कुंबारजुवेचे संदेश बाब शिरोडकार सरपंच चिंबल
निलेश बाब शिरोडकर नामनेचे सोशल वर्कर, तसेच सुरेंद्र नायक, सुधीर फट्टे, अर्चनाबाई परब, सेजल नार्वेकर, अनुज नायक हे पंच सदस्य हांगा आमच्या बरोबर आसात. तशेंच बाब सौरभ रायकर हे एक सोशल वर्कर आसात. तशेंच प्रशांत भांडारी आनी एक सोशल वर्कर, विकी बाब परब खुद्द आसा. तशेंच मॅडम नीलम परब, नारायणबाब नायक आमचे पत्रकार बंधू, तशेंच गजानन परब आनी किशोर बाब सिनारी हे आमचे सोशल वर्कर हे सगळे हजर आसात. आमचे मानेस्त हांगा तयार आसात. हांव रिक्वेस्ट करता बाब सिद्धेश श्रीपाद नायक हाणें मातशें मुखार वचचें. ताजे बरोबर बाकीच्या मानेस्तांनी ताका हळू हळू तेंको दिवचो, फुडें येवचें. आनी ज्या तरेन आमी हांगा एक सुंदर असो मेळ घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केला ऑर्गनायझर्सांनी, हार अर्पण करतले आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ह्या प्रतिमेक. इतिहासाच्या पानार, रयतेच्या मनार, मातीच्या कणार आणि विश्वासाच्या प्रमाणार राज्य करणारो, अधिराज्य गाजवणारा एकच राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. तर आमच्या बाकीच्या मानेस्तांक हांव हांगा रिक्वेस्ट करता मातशें मुखार येवचें आनी एक एकट्यान ज्या प्रमाणे हार अर्पण करचो आनी ह्या प्रतिमेक तुमी नमन दिवचें. आज व्हडा उत्सव आसा, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आनी ह्या उत्सवा निमतान म्हाका दिसता मुली चषक मॅक्लरन स्पोर्ट्सान आयोजीत केल्ले आसा. आनी ज्या प्रमाणे दर वर्सा ते हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी जयंती आसा तेन्नाच टुर्नामेंट घडोवन हाडटात, तेन्नाच हो मोठो तुमकां दबाज्यान दिश्टी पडटा. आनी त्याच तरेन कला आनी सांस्कृतीक क्षेत्र जें आसा तें घट्ट धरून आनी क्रीडा क्षेत्रांचो मेळ घडोवन हाडून ज्या तरेन मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लब एक संयोग म्हळ्यार एक ताल हांगा घडोवन हाडटा की दोनी जे वेगळे वेगळे क्षेत्र आसात ते कशे तरेन तांचो मेळ हाडपाचो, कशे तरेन तांकां एकजूट हाडपाचो, जोडपालो कशें करपाचें हें म्हाका दिसता ह्या ऑर्गनायझरांनी हांगा दाखोवन दिल्लें आसा. आनी दोनी म्हळ्यार क्रिकेट आनी संस्कृती ही कशी टिकोवपाची हें जर ताच्या मनान आसा, तुज्या काळजान आसा जाल्यार तूं कशाय तरेन मुखार येता आनी ती टिकोवपाक प्रयत्न करता. आनी तेंच म्हाका दिसता विकी परब आनी ताजे सगळे साथीदार जे आसा, वांगडी जे आसा, तांणी हांगा उत्कृश्ट रित्या हें दाखयल्लें आसा की हें घडपाक शकता, हें जाता आनी ताणें तें साध्य केलां. म्हाका दिसता परबी दिवपा सारकी सगळे मानेस्तां हजर जाले आसाच हांगा. जशें कौतुकास्पद म्हणटा ते ऑर्गनायझर जाणी हो उत्कृश्ट मेळ असो घडोवन हाडला. आज तुमी पळयल्या दृढ वाद्य पथकान सुंदर असो ताल लयाचो एक संगीतमय वातावरण हांगा निर्माण केलें. आनी तेंच ताच्या फुडें आमी वचून आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेक हार अर्पण करतात आनी एक बरी सुरवात आमी आयच्या दिसाक करतात. हाच्या नंतर जी जातली ती 2 सेमीफायनल सर्त्यो जातल्यो आनी ताजे नंतर जी आसतली ती मेगा फायनल जी तुमकां सांज वेळार दिश्टी पडटली. तर आमचे एक एक मानेस्त हळूहळू मुखार येता आनी फुलां अर्पण करतात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्तीक. फेब्रुवारी तारखेक सुरवात जाल्लो हो सगळ्यांत एक मोठो नामनेचो असो हो टुर्नामेंट मुली चषक जाका लोक आनी जे क्रिकेट मोगी आसा, क्रिकेट खेळगडी आसा, जे आतुरतेन वाट पळयतात. आनी जेन्ना 15 तारखेक सुरवात जाल्लो तेन्ना आज ताची सांगता
खंयचोय टुर्नामेंट खंयची सर्त जी घडोवन हाडटा ताची सांगता जी आसा ती आयताराक जाता नाजाल्यार शेनवाराक जाता पूण हो असोच एक टुर्नामेंट जो आसा जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आसा तेन्ना ताची सांगता जाता तो सोमार आसूं पूण म्हाका दिसता आज सगळे खेळगडे हांगा हजर आसतले आनी जे छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या एक आदर्श स्थान अशें दवरता प्रेरणा स्थान अशें दवरता तेय दिसता म्हाका लीव जाल्यार लीव काडटले तरी पूण हांगा जें उत्कृश्ट रित्या आयोजन केल्लें आसा ऑर्गनायजर्सांनी तांकां दाद दिवपाक तांची तोखणाय करपाक हांगा आमचे मानेस्त हजर आसा सगळे क्रिकेट मोगी हजर आसा आनी फायनल म्हाका दिसता सोमारा जावन सुद्दां आज सगळे हांगा टायमार शिस्तबद्ध रित्या आयल्या आनी बरो असो खेळ दाखयतले आनी आशा करता की आमकां एक बरी सेमी फायनल आनी फायनल मागीर पळोवपाक मेळटली. सगळे आमचे मानेस्त आसा शिस्तबद्ध रित्या एक एक मुखार येवन तांणी फुलां आनी हार अर्पण केल्ले आसा. हांव मानेस्तांक हांव रिक्वेस्ट करता मातशें तांणी सगळ्यांनी एका बरोबर रावचें एक फोटोक. म्हाका दिसता कौतुक करपा सारकें विकीबा परब आनी तांच्या ऑर्गनायजर्सांनी कारण जेन्ना टुर्नामेंट येता मोठो घडोवन हाडटा तेन्ना पयलींच खूब टिमी हाडपाच्यो टिमीक ऑर्गनायज करपाचें पीच अरेंज करपाची पीच रोल करपाची ग्रावंडाचे म्हाका दिसता ज्या तरेन तुमी पळयता रोप आसात होर्डिंग्स आसात गजिबोस आसा स्टेज आसा अशी कितलीशीं कार्य आसता ऑर्गनायज करता आसतना क्रिकेट तरी पूण हें इतली कार्य आसतना म्हाका दिसता हे सगळे ज्या ताणें पथक हाडलें आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती हाडिल्ली आसा हें आनीक काम तरी पूण ताणें तें मनान पेलना कारण तांच्या मनान छत्रपती शिवाजी महाराज एक आदर्श स्थान म्हणून ते दवरतात आनी तांकां दिसता की आमचो हिंदू हृदय सम्राटांची ज्या तरेन छबी आसा तांचे मुखार व्हरपाक जाय आनी ती म्हाका दिसता ऑर्गनायजर्स उत्कृश्ट रित्या फुडें व्हरतात आनी तें हांगा ताणें घडोवन हाडलां. क्रिकेट आनी म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती हें जर कोणें गोंयान उत्कृश्ट रित्या बऱ्या तरेन केल्लें आसा जाल्यार म्हाका दिसता ते मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लब हांचे सगळे ऑर्गनायजर्स. हांव आमचे मानेस्त सगळे जे हजर आसात तांकां रिक्वेस्ट करता ऑर्गनायजर्सा खातीर एक बारीकशी ताळी जावनी कारण तांणी खूब मेहनत घेतिल्ली आसा परिश्रम घेतिल्ले आसा हें करपाक.
तशेंच पयली जी सेमीफायनल सर्त जातली ताच्या कॅप्टनाक लागीं रिक्वेस्ट करता ध्रुव पारशे आनी तुवी क्रिकेटर्स ध्रुव पारशे आनी तुवी क्रिकेटर्स मातसो येवचो आनी तुजी जी पळय टीम शीट आसा ती मातशी हांगच्यान कलेक्ट करची नांवां बरोवपाची आनी ताजे नंतर टॉसाक येवचें ध्रुव पारशे आनी तुवी क्रिकेटर्स कॅप्टन मातशे बेगीन येयात आनी तुमची टीम शीट कलेक्ट करा नांवां बरयात प्लेईंग 11 आनी रोखडेच ताजे नंतर टॉसाक येवचें सेमीफायनल फर्स्ट म्हळ्यार एक आसा ती सेमीफायनल सर्त आसा ती थोड्या खिणान आमी सुरवात करतले ताजे खातीर आमकां मातशी सगळ्यांनी मदत करची कॅप्टन दोगांय रिक्वेस्ट करता तुवी क्रिकेटर्स तशेंच ध्रुव पारशे मातशे बेगीन जातितले बेगीन माचे कडेन येयात आनी हांगा येवन तुमची जी आनी सेमीफायनल आनी फायनल ह्यो सगळ्यो जातल्यो त्यो 8 ओव्हरीच्यो जातल्यो लक्षांत दवरात सगळ्यो सेमीफायनल आनी फायनल ह्यो आसतल्यो त्यो 8 ओव्हरीच्यो जातल्यो सो जात तितले बेगीन मातशे हांगा येयात आनी आमकां नांवां दियात तुमची जे प्लेईंग 11 आसतले ते शीट व्हरात Captains, two cricketers and Dhruv Parshe are requested to report here in the commentary box immediately. दोन्ही टीमीच्या कॅप्टनाला रिक्वेस्ट करतात जात तितले बेगीन येवचे हांव मागता ध्रुव पारशे आनी जी दुसरी टीम आसा तुवी क्रिकेटर्स दोगांयनी हांगा येवचे आनी जात तितले बेगीन मॅचीस सुरवात करपाक आमकां मदत करची तशेंच म्हाका दिसता आज आमचे जे मानेस्त आसा खूब बिजी आसा कारण हो एकच तांचे खातीर प्रोग्राम हांगा ना आनी खुबशे कडेन तांकां वचपाक जाय तरी पूण ते हांगा हजर आयले तरी पूण आनी सगळ्यांनी हांगा पावले आनी ज्या तरेन ऑर्गनायजर्स आनी विकी परब आनी सगळ्यांक एक बरे रित्या संगीतमय वातावरण हांगा घडोवन हाडिल्लें ढोल ताशे पदक हाडिल्लें रुडवाद्य पदक मडकयचें तें इतलें बरें आशिल्लें इतलें उत्कृश्ट तांणी हांगा सहयोग घडोवन हाडला आनी तरी पूण सगळें बिजी शेड्यूल आसून म्हाका दिसता मानेस्त हांगा हजर रावले तेन्ना मानेस्तांक ऑर्गनायजर्स तर्फे हांव मनकाळजांतल्यान उपकार आठयतां आनी तर मानेस्तांनी आपली सन्मानान माचयेचेर बसका घेवची
तशेंच हांगाचे ग्राउंडार कोण खेळटा ते ग्राउंड क्लियर करचो इमिजिएटली. ऑर्गनायझर सर्वे कळोवपा वता की तुमी हांगा ग्राउंडार पिचीचेर खेळनाकात. मातशें रिक्वेस्ट करता मातशें भायर सरात. ग्राउंड मातसो क्लियर जावनी. कॅप्टन ध्रुव पारशे आनी कॅप्टन तुई क्रिकेटर्स मातसो टॉसाक येवचो टीम शीट घेवन. कॅप्टन हांगा तुई क्रिकेटर्स पाविल्लो आसा. तुई क्रिकेटर्स कॅप्टन हांगा पाविल्लो आसा. हांव मागता ध्रुव पारशेच्या कॅप्टन मातसो टॉसाक येवचो बेगीन. कॅप्टन ध्रुव पारशे हो तुका लास्ट कॉल आसा. ध्रुव पारशे कॅप्टन मातसो बेगीन येवचो टॉसाक. तुवी क्रिकेटर्स हांगा ऑलरेडी टॉसाक रावलात. ध्रुव पारशेचो कॅप्टनाक हांव परत एकदां सांगता की मातसो टॉसाक येवचो. दोनूय टिमी जे आसा ते डगआउटान येवपाक जाय. डगआउटांतल्यान ज्या प्रमाणे बॅट्समॅन वतले ते डगआउटाच्यान तुमकां मुखार वतले. सो सगळ्यांनी जे तरेन हांगा डिसिप्लीन दवरिल्ली आसता शिस्तबद्ध रित्या हांगा टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला ते आज ताजो निमणो दीस. आज दिसाक ज्या तरेन आमी जी डिसिप्लीन दवरिल्ली आसा शिस्त दवरिल्ली आसा ती शिस्त आजूय पाळची. तुय क्रिकेटर्स हाजो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आसा बाब दर्शत बांदेकर. तर मालवणचो विस्फोटक ऑलराउंडर दर्शन बांदेकर हो खेळटलो तुवी क्रिकेटर्स आनी भूषण गोळे तसोच एक खडेगाज प्लेयर तो खेळटलो ध्रुव पारशे ह्या टिमीक. तशेंच आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मानेस्त जे आसा तांणी बसका घेतिल्ली आसा माचेर आनी आतां हांव ऑर्गनायझींग कमिटी मेंबर्स हांकां रिक्वेस्ट करता तांणी मातशे एक एक जे मानेस्त आसा आमचे तांकां सन्मानान वेचिकेचेर फुलांनी येवकार करचो. फुलांनी परमळीत येवकार दिवपाक सगळ्यात पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी आमचो परमळीत येवकार स्विकार करचो. समील बाब ओके. तशेंच निलेश बाब शिरोडकर हांचोय बी आमी येवकार करतात फुलांनी. सुरेंद्र नायक पंच सदस्य
हांचो आमी हांगा फुलांनी येवकार करतात. फुडल्या सुवातेर सुधीर बाब फट्टे, पंच सदस्य सुधीर बाब फट्टे हांचो आमी भोवमान करया, हांचो आमी येवकार करया. अर्चना बाय परब पंच, अर्चना बाय परब पंच सदस्य, सेजल बाय नार्वेकार पंच सदस्य हांचोय आमी येवकार करया. तशेंच अनुज नायक आनी एक आमचे पंच सदस्य आनी आवर्जून हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा. ह्या सगळे पंच सदस्यांक हांव मनकाळजांतल्यान तांकां नमन करता, कारण तांणी आज वेळ तांकां आनी खूब फंक्शनां आसतलीं तरी पूण ते सगळे आमचे मानेस्त हांगा हजर जाले. फुडल्या सुवातेर सौरभ बाब रायकर, एक जाणी डॉक्टरेट इंजिनियरिंगा भितर पदवी प्रस्थापीत केल्ली आसा आनी सोशल वर्कर सौरभ बाब रायकर आमी येवकार करतात. तशेंच प्रशांत बाब भंडारी आनी एक सोशल वर्कर जाणी जे सदांच आसता ह्या वाठारांतल्या भुरग्यां बरोबर, अशे प्रशांत बाब भंडारी हांकां आमी येवकार करता. बाब निलम परब जो हांगा आसा, निलम बाब परब हाका आमी येवकार करया. नारायण बाब नायक जे आमचे पत्रकार बंधू आसा, आनी पत्रकार बंधू ना जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच गोष्टीक पब्लिसिटी मेळना. मिडिया हे आमचे एक आनी एक स्तंभ, चवथो स्तंभ म्हणटा तो पत्रकार, ते हांगा हजर आशिल्ले आसा. येवकार करता तुमकां. गजानन बाब परब हांकांय बी आमी येवकार करया फुलांनी. तशेंच किशोर बाब सिनारी नामनेचे सोशल वर्कर ह्या वाठारांतले किशोर बाब सिनारीक आमी फुलांनी येवकार करया. अमे बाबान चडशे जाणांक येवकार केल्लो आसा. आनी देव बरें करूं म्हणटा ऑर्गनायझर कमिटी तर्फे तुमी हांगा हजर जाले, उपस्थिती लायली, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेक फूल आनी हार अर्पण केलें आनी आमकां आमचोय बी भोवमान वाडयलो, आमचोय बी मान केलो, म्हणून आमी तुमचे उपकार वाडयता. तशेंच विकी बाब परब जो एक म्हाका दिसता हे सगळे जे प्लॅटफॉर्म आसा ज्या तरेन तो घडोवन हाडटा, सगळ्या भुरग्यांक एकवटान दवरप, सगळ्या भुरग्यांक बरे मार्गार म्हणल्यार क्रिडा क्षेत्रान, कला संस्कृती क्षेत्रान वळोवप, तांकां बरो मार्ग दाखोवप, हें विकी बाब परबान हांगा जें उद्दिश्ट दवरिल्लें साध्य केलां आसा आयच्या दिसा, हें सगळ्या दोळ्यां मुखार आसा. तो कौतुक करपा सारकें विकी बाब परबाचें. आनी आतां म्हाका दिसता जे मानेस्त राविल्ले आसा आतुरतेन वाट पळयतात हांगा आतां सेमी फायनल 1 हाजी सुरवात जातली. ह्या सर्तीची सेमी फायनल 1 जातली. ध्रुव पारशें जी पेडणेची एक टीम, तशेंच तुवी क्रिकेटर जी सांकवाळ विलेज पंचायत म्हळ्यार वास्को वाठारांतली एक टीम. तो आतां पळोवया नॉर्थ आनी सावथ हांच्या मदीं आनी एक झुंज जातली हांगा. आनी आतुरतेन वाट पळयताले कारण दोनूय टिमी भितर बरे व्हडले बरे प्लेयर, खडेगाज प्लेयर्स हांगा आसात. तशेंच तुमकां खबर आसा की सेमी फायनल जेन्ना सर्त जाता मुली चषक हो असो एकमेव सर्त जंय आउटस्टेशन प्लेयर आसता. सेमी फायनल आनी फायनलाक टॉस ही ध्रुव पारशें हांणी जिखिल्ली आसा आनी तांणी फिल्डिंग घेवपाचो निर्णय घेतला. ध्रुव पारशें ही पेडणे वाठारांतली टीम, ती आतां फिल्डिंगेक येतली आनी तुय क्रिकेटर्स हांचे बॅट्समॅन रोखडेच मुखार येतले. तुय कॅप्टन मातसो हांगा यो बॉल सिलेक्ट करपाक. सेमी फायनल 1 जातली, ताची सुरवात जातली. आनी तुमी पळयलें आसा की हो जेन्ना आयोजन जाता ह्या सर्तीचें मुली चषक 5वो पर्व हो मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लब कुंभारजुवेचो आयोजीत करता. आनी ह्या टुर्नामेंटाक, ह्या सर्तीक अख्ख्या गोंयचे जे क्रिकेटर्स आसा ते वाट पळयता केन्ना हो टुर्नामेंट एनावन्स जातलो, केन्ना हो टुर्नामेंट खेळटले. आनी सगळे म्हाका दिसता जे टिमी नॉर्मली तुमकां खंयच्या दुसऱ्या टुर्नामेंटाक दिश्टी पडना ते ह्या टुर्नामेंटाक आवर्जून उपस्थिती लायता, कारण एक बरें आयोजन आसता जातून सगळ्यांक मान सन्मान मेळटा. सगळे क्रिकेटर्सां जे हरता तांकां सुद्दां एक यादस्तीक अशी भेटवण जाता. हो असो एकच टुर्नामेंट जो हरता तांकां सुद्दां यादस्तीक भेटवण करता प्रत्येक पर्वाक. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांत चड एंट्री जर तर खंयचे टुर्नामेंटाक येता जाल्यार ते मुली चषकाक येता. असो हो नामनेचो गोंय राज्यांत फामाद असो हो टुर्नामेंट. आनी आज ताचो निमणो दीस. आज निमण्या दिसाक आमी जशे मोठ्या दबाज्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती हांगा मनयली सगळे ऑर्गनायझर्स आनी सगळ्या मानेस्तांनी, तशेंच आमी आतां क्रिकेटूय फुडें व्हरतात. क्रिकेट सेमी फायनल 1 तुमकां मोठ्या
तयारीन मोठ्या दवाज्यान तुमकां दिश्टी पडटली आनी एक बरी आमकां संद आसा की दोनी ज्यो बऱ्यो टिमी आसात पळोवपाक मेळटले बरी क्रिकेट आनी क्रिकेट मुखार दवरतले आमचे अंपायर जे हांगा आतां फुडें वतले ही सर्त सुरवात करपाक. बोरिंग टाइम कटे
त्या जाग्यार राविल्ली आसा ध्रुव पार्शेची टीम आनी टॉस जिखून पयली फिल्डिंग घेतिल्ली आसा आनी तूय क्रिकेटर्स आतां बॅटिंगेक येतले तांचे बॅट्समॅन दोगांय जे आसा ते आतां वाटेर आसात येवपाच्या आनी लोक हांगा हळू जमतले तशेंच ज्या तरेन फोटोसॉनीक प्रोडक्शनाचेर हें लायव्ह जें प्रक्षेपण तुमकां दिश्टी पडटा हें अख्ख्या जगान हें प्रक्षेपण वता आनी खंय खंय वाठारांत जे मुली चषक जे सपोर्टर्स आसा मॅक्लॅरन स्पोर्ट्स क्लबाचे जे प्रत्येक वर्सा प्रत्येक दिसाक फॉलो करता की कोण बरें क्रिकेट खेळटा कोण बरें हांगा आपल्यालें प्रदर्शन घडयता अशा प्रत्येक प्लेयर्सांक ते म्हाका दिसता नामनाय मेळटा तशेंच जे प्रेक्षक आसा ते फक्त ग्रावंडार आसना जाल्यार आपल्या मोबायलाचेर आज प्रत्येक कडेन खंय बसता तेन्ना लोक पळयतात की ज्या तरेन एक बरी मॅच तांकां पळोवपाक मेळटली एक बरे शॉट्स बरी बॉलिंग दर्जेदार बरी फिल्डिंग पळोवपाक मेळटली कारण वर्ल्ड वायड वेबाच्यान जेन्ना युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान हें वता तेन्ना अख्ख्या गोंयाक हें आनी अख्ख्या गोंया भायर जगार सुद्दां हें लिंक वता आनी क्रिकेट जगत जें आसा जें मुली चषक फॉलो करता ते आतुरतेन म्हाका दिसता फायनल आनी फायनल पळयतले ज्या तरेन आमी तांणी आमकां भरघोस असो प्रतिसाद दिल्लो आसा पयले 4 दिसाक तशें 5व्या दिसाक म्हाका खबर आसा आनी एक शिखर अशें गाठतले मुली चषक 5वो पर्व आनी ताजी आतां सुरवात जाता ह्या सेमी फायनल 1 Yes, we are all set for the semi-final one. The toss won by Dhruv Parshe and electing to field first. And Amir Salgaonkar has been a prolific all-rounder here for the team. And he will be starting from over the wicket. Chappu at the non-striker's end. Azim on striker's end. Here comes the first ball of the first semi-finals. Starts off in the air, might be a chance, difficult chance, and it's dropped. Oh my God, what a start it would have been. What a start it could have been here for Dhruv Parshe. It was almost, he has taken it in the position to take it, but sometimes if you get a chance in the very first ball, it's never easy. It's never easy for any of the fielders because your concentration is not at the topmost of your game. Your mindset is something different. You are yet to get yourself set in the match and that's the reason why maybe lack of concentration or maybe he could not side the ball properly but finally a drop chance is a drop chance and that too of the opener. Azim and Chappu, Sarfraz Nawaz are explosive batters. Explosive batters. You don't give them chances, especially in the semi-final of Muli Chashak 5th edition. It's the semi-final. It's one of the biggest semi-finals played in this month. That's it. That's it. That's the star Chappu is known for. He is known for a devastating start and that's what he has given for his team. The man is really in his top of the game. Although, as many doesn't know that he was an all-rounder, or he's still an all-rounder. Right now, I think he's trouble with his groin injury or an injury of some sort that has kept him away from the bowling department. And now he is looking even more dangerous. This time he likes this shot, swept away nicely. This is good fielding coming all the way from the mid-wicket region and Sarfraz Nawaz knows. So look at the agility of the man. He knew that while the ball was collected by the fielder, he was off balance. He was off balance over there and he threw the ball one-handed. I think we need to see the injury over here of the fielder. I think
The man, Ram Nagvekar, the captain, was slightly injured, so umpire had to be absolutely convinced about his position. And here is Amit Sarvagaonkar back from over the wicket. In fact, his ball from around the wicket. That's an inside-out shot. Fantastic. That's a splendid shot here from Chapu. And is really one-man army for this team. He can single-handedly win the matches and win the championship. This is in the air. This is the golden chance. This is the golden chance. No, it falls in no man's land. Falls in no man's land. Well, heart must have been in the mouth of Sarfaraz Nawaz, but luckily the ball landed at a place where the fielder was not placed. He's still going for the shot. I still remember in Sanwadem Cup trophy recently in the last month, Sarfaraz Nawaz was playing very well, and everyone around in Sanwadem Kurcharem area thought maybe just a wicket of Sarfaraz Nawaz in the semis or the finals could fetch them the title for the opposite camp. But he single-handedly, one-man army, won that tournament for them. Going for the switch hit, no chance of a single there. And I was talking about that point. He got 50s and continuous 50s, kept on getting the scores, kept on getting the 50s. And the opposite teams were well balanced, strong teams. But he never stopped. He backed his instincts, kept playing and went for his shots, got the shots and got the runs. And he won that championship in the last month single-handedly. So you can imagine the explosive instinct of this man, and he is in a prolific touch. The more advantage to Sarfaraz Nawaz is he can play on both sides of the wicket. He's a fantastic leather ball cricketer. So it's not that he can play the cross-batted shots. He can play the forward shot as well, down the ground easily after the end of 1 over. It's 14 without loss. And once as a player, as a batter, you have got shots on both sides of the wicket. When you're playing on the offside, leg side, it becomes even more difficult for the bowler where to bowl. Bhushan Gole. So Bhushan Gole has come on to bowl, and he knows that Sarfaraz Nawaz's wicket is very important. They've got Darshan Bandekar waiting in the camp, the devastating, the Terminator of Malwan, you can call him. So they may have kept a plan here that Darshan Bandekar will come later on. They need his services maybe somewhere around after the third, fourth over, where he need to up the ante, go after the bowling, get the big ones. He's known for getting the big sixes. But right now, the big ask is getting Sarfaraz Nawaz back in the pavilion for Dhruv Parshe. And Bhushan Gole, man from Satara. And he has played here last edition of Ranchi Royals Kudne. He played for their team, so he knows very much how is the organization, how to go about in Muli Chashak. This time, Dhruv Parshe has got him in their side, Ram Nagvekar. So Ram and Bhushan are definitely going to talk with each other with the experience they have. I think Ram knows very much, very well how his team, where to place a particular fielder in a particular position, what are the angles to be placed. And you can see he just wants to be absolutely correct here, without any errors from his side. Here comes Bhushan Gole. Oh, welcome Bhushan Gole to Muli Chashak. Welcome with a bang from the six of Sarfaraz Nawaz.
Is what Sarfaraz Nawaz is. He is a fearless cricketer. This time played down the ground. Should be boundary here. Went like a tracer bullet. Beautiful timing and straight batted. This is elegance from Sarfaraz Nawaz. To be bowling on this wicket. This time, oh, he has created a chance, but falling in front of the keeper over there. So Sarfaraz Nawaz is taking his chances and he's taking it very well. 24 at the moment in just the second over. So he's not taking it a bag. He is taking bull by the horns here. Taking the attack to Bhushan Gole, who is the out-Asian player, and he's not seeing him off. He is actually going after him. Once again went for his shot. This time straight to the man in the square leg mid-wicket region. So gets a single, gets at the non-striker's end, moves the score to 25. And the way Sarfaraz Nawaz backs himself, he knows his instinct is aggressive. And he has got shots down the ground as well. He can play that on drive, off drive, cover drive, square cut, uppercut shot, switch it sometimes. Oh, actually in no position to play that shot. The ball bounced a little bit more, hitting his shoulders, then maybe the back of the head, and falling somewhere on the offside, getting a single. So very good delivery here from Bhushan Gole. Shot of good length, bouncing a little bit more, change of pace. So that's exactly what is required for a bowler over here. You can't be predictable. You just can't bowl one line. You can't bowl the shot of good length. You can't bowl in the slot. You can't be predictable. That's the most important part here on a flat deck like this. Oh, mighty shot. Mighty shot. This is the biggest of all. This is humongous from Sarfaraz Nawaz, and an expensive over from Bhushan Gole comes to an end. Beautiful and aggressive and devastating opening batting from Sarfaraz Nawaz. 2 overs gone. Is 32 without loss. 2 weak cricketers. Bowled pretty decently the first over, but he was taken for 14 runs. And now he has come back to bowl his second over on a trot from the same end, from the commentary box end. Amir and Azim on strike. And there's Age here. And the batsman is walking, so there was no need of the signal from the umpire to give it out. So batsman was walking. He knew that there was an outside edge. Sarfaraz Nawaz is telling, try to play it straight rather than cross, but there is no point in talking. He has to go back to the dressing room and think what has gone wrong. That's the first wicket here for Dhruv Parche, coming at the score of 32. Azim goes back and in comes a new batter.
the first wicket. This was badly needed actually. The way Sarfaraz Nawaz was batting, he was taking the game away in the first 2 overs. 8 overs normally we have seen 6 overs the games were played. 6 overs normally see somewhere around 80 being a good total. So if you consider 8 overs, they have to get somewhere around 100 at least in 8 overs. In comes Sangnesh. This was a premeditated shot. Before even the ball was about to be delivered, he was already into the shot of playing that reverse hit, and bowler saw him, fired it down the leg. So pretty sensible bowling here from the bowler. These are power play overs. So the power play overs in fact have got over 2 overs. That's lovely slower ball. Nicely swept away. Very nicely swept away. That is not a bad ball, but this was, you can say, the sweeping of the shot and the placement was the key, getting a boundary. Of the mark with a sweep shot. That's outside edge, going down to the short third man region fielder. No chance of a single, and Sarfaraz Nawaz knows that he was at the dangerous end. So he didn't even think of going at the striker's end and took that run. His mere presence on the wicket is enough. If he can play for another 2-3 overs and take the game deep somewhere around 6 overs and get the company of Darshan Bandekar later on, it can be a little difficult for the bowlers to bowl at both these batters. Another wonderful delivery here. He's bowling those quick cutters. He's bowling those leg cutters. So Sarfaraz may be thinking and telling the batters, don't play across, try to play in the covers region. There are 2 short covers being placed close to each other. If they can get above that fielder, can get a certain boundary. There's an outside edge once again. Well, this over has been totally engulfed here by other batters, not giving opportunity here to Sarfaraz Nawaz. He was stranded at the non-striker's end. 3 overs gone. And I think the previous over, I think very nicely bowled by Amit Salgaonkar, just giving 4 runs, getting Dhruv Parshe back in the match and picking up a wicket, breaking the partnership, opening stand of 32 runs between Azim and Sarfaraz Nawaz. In comes the new bowler from the far end, Sachin. He bowls very well. He has got a pretty nippy action and sometimes delivers the ball with a quick leg cutter section. So good intense battle between Dhruv Parshe and 2 cricketers is in progress currently in the semi-final one at Muli, Chashak. This time, once again, back-to-back good deliveries. In fact, the problem is they are even struggling to get singles and give strike to Sarfaraz Nawaz. I think that will trouble Sarfaraz Nawaz in the back of the mind. This is 4 overs. 8 overs will just go like this. So instead of taking the dot balls, will pile up the pressure at the non-striker's end.
he will feel he is itching to get the strike, but somehow the strike has not been given so far. This time played nicely. There is a man in the deep and it's been caught. It's been caught. So Dhruv Parshe are coming back in this match. Although they are not getting the danger man, but at the moment they are getting their partner. Sangmesh, just the boundary for his name, and I think a lot of dot balls piled up by him that has put a pressure on himself and his team. It's in the fourth over. At the moment the score is just 37 for the loss of 2. Well, now Riaz, the big hitter, has come onto the wicket. I still remember in the third edition of Muli Chashak, when I was in the commentary box and I was doing the commentary, as he had hit 6 sixes of 6 balls. So Riaz, the danger man, the big man of this team, has come onto the wicket. He had hit 26 runs of just the 5 deliveries that he had faced. So he looks to be in good nick, good touch, and he always plays in Muli Chashak. Nicely bowled. So far, this is good bowling. And what happened is after the second over, when two cricketers were actually going very well, 32 without loss. The next over from Amir Sargaonkar just costed 4 runs, picked up the wicket. And then 6 dot balls were played by Sangmesh. Out of the 4 runs that he has scored of the 7 balls, 1 was a boundary and the rest 6 balls were dot balls. So that what prompted Sarfaraz Nawaz to get Riaz in early. After 6 dot balls is almost like 1 over played. And that's exactly what happens when you know that right now you are slightly back in this match. You have to do something extra. You have to do something different. If the singles were taken in the third or the fourth over, then Sarfaraz Nawaz would have played normal game. But now he has to see that he has to get the runs. He has to try maybe a shot out of the book and try to release the pressure somehow, getting a boundary at least. That's exactly what he's doing. He's trying hard. And a slight miscalculation in his run-up. So he goes back to his bowling mark once again. Sachin bowled very well. The last 2 overs, Dhruv Parshe had bowled magnificently, not conceding any boundary or a 6 so far. And that's taken. That is taken. Look at them. Look at the jubilation. They know that it's a big fish. The big fish goes back to the pavilion. Sarfaraz Nawaz departs and Dhruv Parshe are on the roll at the moment.
after completion of 4 overs, 38. I think if you look at the scoreboard, in 2 overs it was 32 and now it is just 38. So just 6 runs considered by the bowlers of Dhruv Parshe in the last 2 overs. And the dot balls that was piled by the other batters piled up the pressure on Sarfaraz Nawaz, and a beautiful catch taken by Ram Nagvekar behind the wickets. A juggling act was going about his. Is the man of short stature, but still timing the jump perfectly and taking it into the second or third attempt. It was the most important catch of the match. Sarfaraz Nawaz going back to the pavilion. Is a prolific striker in form. And certainly Bhushan Gole has changed his ends. Was bowling from the far end, now bowling from the commentary box end. And there will be a change in the commentary as well. Over to Ashok next, sir. थैंक यू हरीश, धन्यवाद। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5वें ओवर की शुरुआत हो चुके हैं मैदान पर। बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं भूषण गोले, खुद का दूसरा, और सामने रियाज और उन्हीं के साथ दर्शन बांदेकर जो स्ट्राइक एंड पर। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, लेकिन मैच में वापसी कर रही है ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी शुरुआत रही थी सरफराज नवाज उर्फ चप्पू की। पावर प्ले में 2 ओवर में 32 रन बनाए थे, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही, खास करके सचिन के और आमिर सालगांवकर की। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे रियाज, नॉन स्ट्राइकर इन पर दर्शन बांदेकर। खेल चलता हुआ 5वें ओवर का सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मैदान पर। ओवर पिच गेंद, इस बार एक लेफ्ट हैंड शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे ओवर पिच गेंद हाफ वॉले पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक बिल्कुल गजब का टाइमिंग रियाज के बल्ले से। अपने लंबे रनअप के साथ भूषण गोले अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते बिल्कुल रन की गुंजाइश को समाप्त कर दिया। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। फुल टॉस गेंद, इस बार थोड़ी सी भीतरी किनारा लेती हुई, और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो शुरू की चर्चा कर रहे थे पावर प्ले में 32 रन बनाए थे, तब लग रहा था एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही, लेकिन क्या वापसी की। आमिर सालगांवकर ने 4 रन दिए, एक विकेट चटकाया, और उससे बेहतरीन गेंदबाजी रही वो रही सचिन की। सचिन ने सिर्फ 2 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, बाद में अपना दूसरा ओवर समाप्त कर दिया। भूषण गोले ने इस ओवर में बने टोटल 9 रन। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आ चुके अपने बॉलिंग मार पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। इस टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे, सबसे हाईएस्ट टोटल बनाया वो है
सेल्डिम ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने, लेकिन वो मैच 6 ओवर का था। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव है। 8 ओवर का मैच है। दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार पर, और सामने है दर्शन बांदेकर, मैन फ्रॉम मालवण। और फुल टॉस उड़ाया। रियाज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर इन पर दर्शन बांदेकर, और इस बार खराब गेंद, बिल्कुल फुल टॉस गेंद, और डीप वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर रियाज के बल्ले से मिले 6 रन स्कोर के खाते में। और इन 6 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए तुवी क्रिकेटर्स साकवाल क्रिकेट टीम के। विकेट के पर राम नागवेकर जाकर बिल्कुल निश्चित रूप से बातचीत हुई, चर्चा हुई, काफी ढेर सारा अनुभव राम नागवेकर के साथ। और इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, और एक बड़ा आगाज मैदान पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। स्कोरिंग की पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव। स्कोर आगे बढ़ा 59, 59 रन पर टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर, 20 पर अपने खुद के व्यक्तिगत रियाज, और नॉन स्ट्राइकर इन पर दर्शन बांदेकर 1 पर। सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर छोड़ा, इस बार जाने दिया, बल्ले को हटाया, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्क्वायर लेग पर रूपेश गावस उर्फ भालूस, सामने नीलेश पारसेकर, दोनों अंपायर बिल्कुल बहुत ही शानदार मैदान पर अपना काम निभाते हुए। और इसी बीच अगली गेंद सचिन की, छोड़ा, फिर से जाने दिया, थोड़ी सी परेशानी, शायद मेरे ख्याल से 2 बड़े शॉट लगे, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूसरा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और वहीं पर थोड़ा प्रेशर में आ गए। लेकिन मैं एक अच्छी बात जरूर देखने को मिले, विकेट कीपर जाकर कुछ बिल्कुल चर्चा कर रहे, समझाते हुए कि किस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए इस मैदान पर, और ये बहुत ही अच्छी बात होती है मैदान पर। सामने रियाज स्ट्राइक पर, खुद के व्यक्तिगत 20 पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। और फुल टॉस, एक लेफ्ट हैंड शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद चलेगी डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। विकेट सचिन पाटजी, लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं महंगा साबित हो रहा है। थोड़ी सी फुल टॉस गेंदबाजी हो रही है, शायद मन में सोच होगी यॉर्कर गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन वहीं पर फुल टॉस गेंदबाजी और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रियाज स्ट्राइक पर। एक बड़े स्कोर की और शुरुआत अच्छी रही थी 32, बाद में 2 ओवर में अच्छा कमबैक था, लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं रन बनते हुए मैदान पर तुवी क्रिकेटर्स साकवाल वास्को क्रिकेट टीम के लिए। दाहिने से ओवर द विकेट डोर वाले छोर से सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्क पर, और एक फुल टॉस, और एक बार उड़ाया गेंद को, वाइड लॉन्ग ऑन पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। चार छक्के अब तक लग चुके हैं इस ओवर में, और अगर 2 लगाने में सफल रहे, यानी पूरे टोटल ओवर में अगर 6 छक्के लगे तो मिलेंगे आपके लिए 5,000 रुपए का इनाम सर।
अमेय परब जिनके ओर से। अमेय परब सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 छक्के लग चुके हैं और अगर इस ओवर में अगर 2 लगे आपको मिलेंगे 5,000 रुपए का इनाम। बहुत ही बड़ा आयोजन, 5वां पर्व मूली चषक मैकलन स्पोर्ट की ओर से। खेल चलता हुआ 6ठे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी है। और अब राउंड विकेट आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सचिन पाटजी। स्कोर हो चुका है टोटल 73, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक चौथे विकेट के रूप में बड़ी साझेदारी मैदान पर बन रही है इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। शायद दर्शन बांदेकर थोड़ा सा खामोश है, ज्यादा मौका नहीं मिला है, सिर्फ 1 रन पर, लेकिन सामने बिल्कुल तोड़फोड़ की बल्लेबाजी हो रही है रियाज के बल्लेबाजी में। और इस बार फिर से ये मौका बनेगा, देखना होगा अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे। ओहो, क्या छूटा। शायद ये मौका बातचीत होनी चाहिए थी, भूषण गोड़े के लिए मौका देना चाहिए था, लेकिन खुद निकले गेंदबाज गेंद के नीचे तो भूषण गोड़े थोड़ा सा दूर हो गए, नहीं तो ये बिल्कुल मौका वो भी बिल्कुल हाथों में लपक सकते थे। फिलहाल एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ अब बड़ी देर के बाद दर्शन बांदेकर स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। 2 ओवर का खेल बाकी है इस ओवर के बाद और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, ये 2 बल्लेबाज है मैदान पर, शायद लग रहा है कि बड़ा स्कोर सामने बिल्कुल बना देंगे मैदान पर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, आज काफी भारी संख्या में दर्शक मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार, लोअर फुल टॉस, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर फील्डर 1 रन। दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन बिल्कुल मना किया स्ट्राइक एंड से रियाज ने। एक सिंगल बढ़ गया, ओवर की समाप्ति हुई 6ठे। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 75, 75 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मैच में फिर से वापसी करनी पड़ेगी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। आने वाले 2 गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि लगभग 90, 92, 95 का टोटल ये विकेट भीम सिंह जो पिच क्यूरेटर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन विकेट बनाया है। जिस मैदान पर पिछले 4 दिन में बिल्कुल बड़े बड़े शॉट, बड़ा बड़ा टोटल देखने को मिला है, तो बैटिंग पिच है और अगर 100 से थोड़ा आगे निकलेगी तो अतिरिक्त दबाव होगा मैच का, देखना होगा। फिर से चर्चा जारी है, राम नागवेकर कप्तान, काफी क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव और प्री क्वार्टर फाइनल का मैच मुझे याद आ गया, क्या विकेट कीपिंग, क्या कप्तानी थी राम नागवेकर की। बिल्कुल 2-3 नाम टेनिस क्रिकेट में मेरी जुबा पर भी इस वक्त आ गए, योगेश पेंडकर रणझुंझार, किरण खटकर का नाम, उन्हीं के साथ संजू नागवेकर जो डैजलिन क्रिकेट के साथ और गोपाल भट्टा सिंधुदुर्ग जिले के साथ, राजाराम वॉरियर तलवडे क्रिकेट टीम के जो कप्तान, विकेट कीपर और बिल्कुल बुद्धिमानी क्रिकेट हमेशा मैदान पर। देखिए 5-6 ओवर का समाप्त खेल, 7वें ओवर चर्चा हो रही है और आखिरकार देखना होगा कौन आते हैं। मेरे ख्याल से लक्ष्मण नाइक आ रहे गेंदबाजी करने के लिए। ये 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे मैच में। अगर ध्रुव पारसे की मैं बात करूंगा, अब विकेट की जो कि बिल्कुल परवाह नहीं होगी, आपको रन बचाने हैं अच्छी गेंदबाजी के साथ। और सामने अगर भी क्रिकेटर्स की मैं बात करूंगा, वो अब सोचेगी टारगेट है 75 का, 100 से आगे निकलने की जरूर कोशिश करेगी। देखना होगा 12 गेंदों का एक निर्णायक खेल, लक्ष्मण नाइक बॉलिंग मार्ग पर और सामने बल्लेबाज है रियाज और नॉन स्ट्राइकर इन पर है दर्शन बांदेकर। बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 पर बल्लेबाजी, 5 छक्के लगाते हुए रियाज और सामने अब 2 पर दर्शन बांदेकर। 7वें ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स के ओर से लक्ष्मण नाइक जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। ओह, उड़ाया हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई, एक गगनचुंबी सिक्सर दर्शन बांदेकर के बल्ले से निकला 6 रन के लिए।
81 पर पहुंचा टोटल स्कोर, खुद का व्यक्तिगत 8 सामने नॉन सेकंड इन पर 33 पर रियाज और दाइनेट से ओवर द विकेट लक्ष्मण नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 15-16 कदमों के साथ अगली गेंद लेकर। और इस बार ऑन साइड पर और एक हवाई फायर डीप लॉन्ग ऑन सी मारेका से बाहर, गेंद चली गई 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 87 पर। ये दो बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज है, आपको एक की विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी इस मैच में। और शॉर्ट आर्म पुल वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दर्शन बांधे करके बल्ले से निकली गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। ये दो बल्लेबाजों के बीच में मेरे ख्याल से रस्सी खेज हो रही है कि कौन सबसे ज्यादा लंबा छक्का लगाता है। शायद ये बिल्कुल रस्सी खेज इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। 5,000 रुपए का इनाम है। 6 छक्के लगातार अब बल्लेबाज एक ओवर में लगाने में सफल रहे तो सर जी अमेय परब जिनसे और से 5,000 रुपए का इनाम। अब राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर लक्ष्मण नाइक। और सामने उड़ाया कमेंट्री बॉक्स के पीछे हवाई फायर, दर्शन बांधे करके बल्ले से सनसनाता दंदनाता शॉट 6 रन के लिए। आया है 5 गेंदों में 5 छक्के, 6 गेंदों में 6 छक्के लगा चुका है, लेकिन पिछले 2 सालों से बिल्कुल 5 गेंदों पर 5 छक्के। और छठी गेंद अगर फुल टॉस भी मिली तो यह गेंद सम्मानजनक खेलता है। बिल्कुल सामने गेंदबाज का बिल्कुल गेंदबाज की बिल्कुल जो कि निश्चित रूप से परवाह रखता है। और इस बार ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। अमेय जी परब सर, आपने 5,000 रुपए का इनाम रखा है। 6 गेंदों में 6 छक्के। दोस्तों इस खिलाड़ी ने यह कारनामा कई बार किया है, रियाज ने यह कारनामा किया है, लेकिन दर्शन बांधेकर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं आखिरी गेंद इस बल्लेबाज को फुल टॉस भी मिले तो भी सम्मान करता है। क्या होगा इस मैदान पर, देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक गेंदबाज ने वहीं से लेकर क्रिकेट छोड़ दिया। जब छठी गेंद पर छक्का लगा तो मन में बिल्कुल दिल को बिल्कुल बुरा लगा था दर्शन बांधेकर को, लेकिन क्रिकेट है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, ये इतिहास है। आज वर्तमान मैदान पर क्या होगा, आने वाली गेंद पर फैसला होगा। दर्शन बांधेकर स्ट्राइक पर 5,000 रुपए का इनाम। लक्ष्मण नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ देखिए ये क्रिकेट है दोस्तों, ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये तालियां जरूर गूंजती रहेगी दर्शन बांधेकर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन बांधेकर के लिए ये तालियां दोस्तों, ये क्रिकेट है। सचिन तेंदुलकर को महान क्यों कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को महान क्यों जाता है कहा, बिल्कुल ये बात क्रिकेट है दोस्तों, और ये क्रिकेट होना चाहिए दोस्तों मैदान पर। चलिए खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 7वां ओवर समाप्त हुआ, और 7 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 105, 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, लेकिन उसी खिलाड़ी ने हैट्रिक भी मुकम्मल की थी। ये बिल्कुल दो की बात याद रखनी पड़ेगी। आखिरी ओवर 7 ओवर समाप्त हुए। टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 138 का शेल्डेम ब्लास्टर, लेकिन वो मैच 6 ओवर का था, ये मैच 8 ओवर का है। एक बड़ा टोटल, लेकिन भीम सिंह पिच क्यूरेटर ने जिस तरह से विकेट बनाया है, मेरे ख्याल से कितने भी रन बना लो, जब से 434 का मुकाबला रहा था वही से लेकर हमने कमेंट्री बॉक्स में भी चर्चा बंद की। बिल्कुल दोस्तों, सामने बड़ी देर के बाद रियाज को स्ट्राइक मिल चुका है और आखिरी ओवर लेकर साहिल आरोलकर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर छोड़ा, जाने दिया। इस बार ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। पावर प्ले में 2 ओवर में 32 रन, उसके बाद 2 ओवर में सिर्फ 6 रन, 4 ओवर 38 रन, लेकिन वहीं से लेकर रियाज मैदान पर बिल्कुल छा गए। 5 छक्के रियाज के बल्ले से, 33 पर खुद के व्यक्तिगत और सामने 32 रन पर दर्शन बांदेकर। इस बार ऑन साइड पर खेला, बल्ले पर बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ा सा बाहर किनारा लगा। डीप स्कोर लेग से आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। क्या बड़े लंबे लंबे शॉट देखने को मिले। एक और से रियाज, दूसरे ओर से दर्शन बांदेकर, बिल्कुल दोनों लंबे कद के खिलाड़ी। अच्छा स्पेल किया था आमिर साळगावकर ने। सचिन पाठजी का पहला ओवर अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो फुल टॉस गेंदे 2-3, वहीं से लेकर मैच फिर से जो कि कमबैक किया टू बी क्रिकेटर्स ने। इसी बीच दूर वाले छोर से अपने लंबे बॉलिंग रनअप के साथ साहिल आरोलकर और सामने उड़ाया, बिल्कुल सामने उड़ाया, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। बल्ले से और स्ट्राइक पर एक बार फिर से सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का आखिरी ओवर, 8वां ओवर, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मैदान पर, लेकिन एक बड़ा टोटल बना रही है मैदान पर टू बी क्रिकेटर्स साकवाड़ वास्को क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद इस बार ऑफ साइड पर, थोड़ी सी हवा में, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं बना। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे और जब तक थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ, तीसरे रन का मौका मिलेगा क्या, चौथे रन का मौका मिलेगा जी। गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए।
बिल्कुल अच्छा स्कोरिंग अभिनव का। कई स्कोरर हम बिल्कुल नाम जरूर लेते हैं, उमेश सर उर्फ भाऊ आसगांवकर, विराज तेंदुलकर का, कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब, धीरज पालियकर, त्रिवेणी सावंत, बिल्कुल बेहतरीन स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं ये। और उन्हीं में से एक अभिनव जो हमारे साथ 5 रन मिल गए स्कोर के खाते में तुवी क्रिकेटर्स को। और इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर साहिल आरोलकर अगली गेंद लेकर, सामने बल्लेबाज है दर्शन बांदेकर। ओ ओवर पिच गेंद उड़ाया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। तीन विकेट पर चौथे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बनी और खुद के व्यक्तिगत इस टूर्नामेंट में 5 अब तक हाफ सेंचुरी लग चुकी है। 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं खुद के व्यक्तिगत। 124 टोटल स्कोर। 1 रन चाहिए हाफ सेंचुरी के लिए। देखना होगा क्या होता है आने वाली गेंद पर। साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर 124 रन 3 विकेट पर। ओ सामने उड़ाया इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। जोरदार तालियां। बिल्कुल इस सुनाई दी जब 5 छक्कों के बाद छठी गेंद दर्शन बांदेकर ने सम्मान के साथ खेला था, तब तालियां ज्यादा हुई थी। तो ये बिल्कुल अच्छे दर्शकों की निशानी है इस मैदान पर। बहुत अच्छे दर्शक मैदान पर जुड़ चुके हैं, बड़े प्यार के साथ इस मैदान पर जहां जहां जगह मिल चुके हैं वहां से लेकर मैच को देख रहे हैं। और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर देखो किस तरह से ये शॉट लगाया। ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद थी, सिर्फ दिशा दी। क्या बल्लेबाज के बल्ले में बिल्कुल जो कि जोर दमखम ताकत है। और गेंद चली गई 6 रन के लिए। 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल 136 136 रन। 137 का टारगेट रहेगा ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, अच्छा विकेट है, 8 ओवर का मैच है, सामने अच्छी टीम है ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की तो रियाज ने लगाए 5 छक्के 35 रन बनाए और दर्शन बांदेकर ने लगाए टोटल 7 छक्के। बहुत ही शानदार दोनों अभिजीत रहे मैदान पर। टोटल 136 137 का टारगेट। छोटा सा ब्रेक और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। वॉइस ऑफ गोवा, जो आवाज बिल्कुल गुजरात की 10 PL में भी सुनाई दी, सर हरीश काकोडकर माइक्रोफोन पर।
is a big total. This is semi-finals and 136 posted on the board. This is the second highest total. Mind you, what was posted by Sheldon Blasters 138 was just in 6 overs. So that itself shows how the wicket is. This is like a flat deck. Absolutely nothing for the bowlers. And you just have to bowl and you just have to feel lucky that sometimes the batsman should miss, or you bowl perfect Yorker length deliveries or the slower balls which are missed by the batters. Otherwise, it's going to be very difficult. Dhruv Parshe also have a very good batting lineup right from the start. They have got explosive openers who are in a prolific form, Amir Salgaonkar and Sahil, who have got tons of runs, lots of runs in this tournament. They are in good form and they need a good start. And that's the reason that a start should not be given. They have got Darshan Bandekar in bowling department. So Sarfaraz knows how to go about the game. He knows these are two important players. They need a start. That's the reason why Darshan Bandekar has been given the ball to start the proceedings in the first over. Here comes Darshan Bandekar to bowl to Sahil. So I'm trying to go for the helicopter shot. Wonderful delivery here from Darshan Bandekar's little misfield. You can see the body language was not there. He just tried to lumber over there, jog over there, and the concentration was not fully up to the mark. That's why one extra run given away. Just mere getting 136 won't you win your matches here at Muli Chashak. You got to be better than that. And Riaz and Darshan Bandekar both exploded out in the 22 yards, out in the middle, scoring some big sixes. Blistering knock from both the batters. 4 sixes coming from the bat of Riaz in one of the overs of Sachin. Then the next over, Darshan Bandekar had got himself going against the bowling of Lakshman. He hit 5 sixes of 5 balls and then defended the 6 ball. That was also in the slot. But Darshan doesn't go for the 6-6-6. He respects the bowler. And that's the reason why he just defended for a dot ball. So Amir and Sahil, at the moment the score is just 3 on the board. There's Amir for you. Played it above the inner ring and should go for 4 runs. This is quick outfield, no stopping that. First boundary coming for Dhruv Parshe from the bat of Amir Salgaonkar. To report the captain. That's a good ball. That's a very good ball. He came down the track to play that shot in the mid-wicket region. He saw the batsman coming down the track. A fired shot just went close to his ears maybe, and that's the reason 1 per the over was signaled by the umpire. So the pace unleashed. Whatever effort was there was given by Darshan. This time it was an off-cutter delivery here, slower off-cutter from the bowler. So variations used here by Darshan Bandekar in the first over. He's got the pace. He's a tall lad, almost 6'5", 7 feet. And when he delivers the ball, it comes from even a greater height. He's got the pace. He's got that strength in himself. Whenever the changes are made to be required in the body to generate the pace or bowl the slower ball, he's got everything in his armory. So looks to be just a single. Trying to go for the big heave. They need big sixes in the power play overs. So restricting the batters to just 9 runs on the board is 9 without loss. Dhruv Parshe after completion of 1 over.
So here comes Sarfaraz Nawaz, surprising in the sense that Sarfaraz Nawaz was not bowling considering the illness, or you can say the fitness problem, but he has now started bowling. That's a good sign here for not only team 2 cricketers of Sakwar. Very good running between the wickets, scampering through for the couple. They need to get runs of every ball. They need to get runs of every ball and in between the sixes and the boundaries. Cannot afford to keep dot balls at this stage, because just like Darshan Bandekar hitting 5 sixes or 4 sixes from Riyaz might not happen in both the innings. So they need to keep themselves going, get at least 2 sixes every over. Ah, that's the one. That's the one. That was slow one. Picked up beautifully here on the leg side by Sahil. Gets a 6. Is like bowling in Chinnaswamy Stadium in Bangalore. There's hardly anything for the bowlers. Even if you get 240, it can be changed. Just like this tournament. You can't get yourself relaxed. Fantastic, beautiful, outstanding, glorious shot here from Sahil. First one was a short one, picked away on the leg side. Second one was a fuller one, placed straight down the ground at the long off region. Looking beautiful and in good touch, Sahil. That's a positive sign here for Dhruv Parshe. They are not giving away the match. They know very much this is a batting deck. 136 that is posted can very well be chased if they bat sensibly. They need to get more runs in the power play overs. Another one. This time getting a boundary towards the wide long on region fielder. There is no mercy for the bowler here. Absolutely no mercy. This boundary takes a score to 27. 27. And that means 18 runs coming off Sarfaraz Nawaz over. He's trying to change the field here, but absolutely nothing happening for him. At least you should have more pace, or you should have the leg spin or the variations. Otherwise, you will be dealt with so many runs. That's nicely bowled. Fuller length onto his body, onto his toes. Just getting the single. Amir says singles is enough. So if they need to get 137 runs, they need to get somewhere around 60, maybe 60 to 65 runs in the first 4 overs. They should target the bowlers. They should see that if Darshan Bandekar bowls well, they should get more runs of the other bowler, whether it is Sarfaraz Nawaz or whether it is anyone else. They have to target the bowlers. Amir comes on strike. Going for the big one. Wide signal by the umpire. 20 runs so far in this over. Sarfaraz Nawaz not happy. Maybe he's telling that the batsman had shifted, but when you are bowling the off cutters for the left hander, sometimes when it passes the guideline, umpire sees that guideline when it is passed. So that's the reason why I'm having a little bit of inquiry to the umpire. Sarfaraz Nawaz still he has to bowl that last ball. 29 on the board. That's a huge one. That's a huge one. That's mind-blowing cricket here from Dhruv Parshe. They are not living here without a fight. They are fighting it for a place in the finals. Amir and Sahil has got 26 runs of this over from Sarfaraz Nawaz. 2 overs gone. It's 35 on the board without lose of any wicket. Dhruv Parshe.
संजय नायक माचो रिपोर्ट कर हांगा इमिजिएटली. शांतादुर्गा टीचो कॅप्टन संजू माचो हांगा जाता तितले तुका ऑर्गनायझरचा वतीन कळयता की जाता तितले बेगीन हांगा येवन रिपोर्ट करचो. हे तुमचे टीम शीट STB कारापुरान आपल्या जे टीम सिलेक्शन दिल्लें आसा. शांतादुर्गा टी तुमी मातशे येवन टीम सिलेक्शन दिवचे आनी टॉसाक येवचो. फुडले सेमीफायनल सर्त जातली जी कुडचेरे म्युनिसिपालिटी शांतादुर्गा टी आणि STB कारापूर या संघा विरुद्ध. पण अजून पर्यंत हो संघ एक चुरशीचो अटीतटीचो सामनो असो हांगा लढटा. Here comes Darshad Bandekar. Played away nicely on the leg side, but straight to the fielder. So just going to be a single. So Sahil, it's a catch-20 situation here for the bowler. They know that, in fact, the batsmen, they know that the target is so much. They just cannot afford to relax against any bowlers, whether it is Darshan Bandekar or whether it is someone else. In spite of knowing that Darshan is outstation bowler or he bowls, he has got the pace, he has got the knack of picking up wickets. Still, they cannot relax. They just need to keep on moving. This time defended nicely, played it in the covers, just gets a single. Was trying to go for the big heave, then saw the ball was slightly off cutter section, so just defended, played down towards the offside, gets a single. This is the third over, and at the moment the score has reached 37. The second over, I think, was a wonderful one. It was an expensive one for the bowling side, but it was you can say beneficiary as far as the batters are concerned. This is in the air. This might be a chance. The ball has not gone anywhere. Fielder coming underneath and takes a good one. Takes a good one. So Darshan Bandekar strikes. I told you he has knack of picking up the wickets. Strikes the first big blow here for team Dhruv Parche. And it's 38 on the board for 37 for 1 Dhruv Parche. Somewhere lower down the order. They have to get him early and try and get a score just like how Darshan Bandekar scored a 50. They need somewhere around 30, quick fire 30, 35, 40 or maybe 50 from Bhushan Gole to try and come close to the target, and then the rest of the job done by the lower middle order batters. Bhushan Gole will be under pressure as well as an outstation player. He saw Darshan Bandekar as an outstation player performing for the opposite team. Now he has to perform with the bat. See, sometimes as a outstation player, it's a tough job. Just not getting a feel of the previous games with the team. You are not gel with the team. You just come and join your team directly in the semi-finals. That's nicely bowled, beautifully bowled here. So intention looks to be from Bhushan Gole. Try and see off Darshan Bandekar. Try and see off his over. He is the threat for them. He looks to be the one who has got more pace compared to the other bowlers of two cricketers. So far just 2 singles conceded by Darshan Bandekar and a wicket as well. This time nicely left away here by Bhushan Gole, and a wide signal here by the umpire. So trying to bowl outside the off stump, not bowling on the body line or somewhere closer to the arc of Bhushan Gole. Going for the switch hit, but that was fired on the offside. Fired on the offside. So far, this has been tremendous over, just like the way it was bowled by Sachin Parji.
just conceding 2 runs and picking up 2 wickets. This was a similar sort of over. That's nicely played. There's might be in the air. That might be a chance. There's a fielder over there, but he just waits for the ball to bounce back to him. On one bounce, collects the ball and throws the ball back to the keeper. And 2 runs taken. Sarfaraz Nawaz is absolutely not happy. Absolutely not happy. Look at him firing the fielder. They should have gone for the catch, is what he says. This catch could have won us the match. But Bhushan Gole survives. 3 over gone is 40 on the board for the loss of 1 wicket. Chasing a total of 137 runs. So 97 runs required of 30 balls. So now this has turned to be a 5 over match where 97 runs are required, almost close to 20 runs per over, which means 3 sixes to be hit almost every over. So 3 sixes is not an easy task, but Amir and Bhushan can definitely do it. It's a very good batting surface, as we mentioned every time. So very much gettable. It's not out of the hands, and both the overs of Darshan Bandekar have gone out of the contest. And that's going to be the first one. First of the 3 sixes that are required in every over. Beautifully hit here. Heaved away on the leg side for a mammoth 6. Amir Shalgaonkar. So here comes once again the bowler, Sangmesh. This time once again trying to heave on the leg side. Not getting the sweet part of the bat, just gets a single. So Amir not happy. He may be feeling that was a ball in the slot, could have been hit away for a 6. It's not that every ball will be hit for 6, but the first one was a 6. So they've got 7 runs of the first 2 balls. And getting Bhushan Gole on strike, they need a quick fire innings here from Bhushan Gole. They have to target these bowlers of Sakwar, although Darshan Bandekar came as an outstation bowler, bowled very economically, picks up an important wicket of Sahil. This still there is enough batting left in Dhruv Parshem. We saw the batters at number 3, number 4, number 5 position can score those big hits whenever the team required. So withdrawing his run up at the last moment, hearing the voice of Darshan Bandekar trying to get the fielder more towards the covers at the long off position. That's nicely bowled here. Nicely bowled here, right? Oh, that was really close. That was really close. Good throw here from Sarfaraz Nawaz. He's a live wire on the field. He's quick, fast, agile, and that's what he wants everyone from his team to reciprocate, to repeat the performance in the field just like he does every time. This time once again trying to heave the ball. Still he's not middling the ball. This might have been an opportunity. This was almost, you can say, certainly in the slot, missing the timing. But Amir looks to be a more better option here for Dhruv Parshem to get those 6s. So far 4 balls have been faced in this over. First one was a 6, second one was a single, third one was a dot, fourth one is a single. So 8 runs taken of the first 4 balls. That means if you cost 20 runs is required, 2 6s are required in 2 balls
Otherwise, 1-6 will be added into the next over, which makes it even more difficult. That's the one. That's the one. That was required badly. Badly required. And it's Amir Salgaonkar is hitting it beautifully here. He is fighting it out for the team. These sixes are very much required. He has to live with the pressure and the burden of keeping sixes being hit almost every ball. He has got a reputation of doing that. And he needs to continue that juggernaut of hitting the sixes. Still there is one more six required. .54, the score moves on to 54. Still a long way to go. As you say in Hindi, Dilli abhi bahut dur hai. It's a long way to go towards the target of 137 runs. That's nicely bowled, very nicely bowled, just outside the off some full length delivery from Sangmesh. So just restricts the batter to just 2 sixes in this over. 4 overs gone, halfway mark of the innings chase, and it is 55 on the board for the loss of 1 wicket through Parche. Now you can say somewhere around 10 to 15 runs short through Parche, but can they make up that? Can they match up and explode the way it was exploded by the two of the stalwarts, you can say the big men, the big players, Riaz and Darshan Bandekar for the team, 2 cricketers. If someone plays a knock like that, which can get the asking run rate somewhere to around 15, 17 maybe, then it's quite possible. On this pitch, on this venue, big totals are chaseable. You as a bowling unit are never comfortable in any sort of total that is posted on the board by your batters. There is always a chance for the side chasing, and we are still hopeful that this match is certainly going to go into the last 2 deliveries of the innings. 55 at the moment, 55 for the loss of 1, target of 137 runs. .82 runs required in 24 balls. And the match interestingly poised. Here is a bowling change from the far end, and the change in commentary box over to Ashok next for further updates in Hindi. थैंक यू, धन्यवाद हरीश सर। 24 गेंदों का खेल, 82 रन मैच को जीतने के लिए। सामने आमिर साळगावकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्लोअर बॉल, लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए। गेंद चलेगी विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये वो पिच है, ये वो मैदान है जो 6 ओवर में 138, ये मैच 8 ओवर का है। क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे, बन भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मैच 8 ओवर का है। 82 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए, और सामने आमिर साळगावकर स्ट्राइक पर। छोटे गेंद पोल किया, इस बार गेंद हवा में, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर आमिर साळगावकर आउट होकर वापस डीजे। शांतादुर्गा कारापुर क्रिकेट टीम और एसटीपी कारापुर और शांतादुर्गा कुड़चोड़े, दोनों टीम प्लीज आइए। शांतादुर्गा कुड़चोड़े और एसटीपी कारापुर क्रिकेट टीम, दोस्तों आइए, जल्द से जल्द दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला तुरंत खेला जाएगा। जो मैच होगा शांतादुर्गा कुड़चोड़े वर्सेस एसटीपी कारापुर, इन 2 टीमों के बीच में। तो और एक बड़ी सफलता मिली, जो बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी मैदान पर। उससे पहले 10 गेंदों में 24 रन साहिल के, और आमिर साळगावकर अभी आउट होकर 3 छक्के लगाकर 1 चौका लगाकर सामने भूषण घोड़े और टीम के संकट मोचक, बिल्कुल मैं कहूँगा हरपन मौला खिलाड़ी राम नागवेकर मैदान पर आते हुए। एक बड़ा मैच जो बिल्कुल दोस्तों मुझे याद आ गया झिंगारों की, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रतियोगिता थी, और तब ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने एक बड़े टोटल को चेस किया था। वो मैच मुझे बिल्कुल याद आ गया। बिल्कुल आने वाले
21 तारीख को वो प्रतियोगिता शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले राम नागवेकर स्ट्राइक पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, कड़ी धूप सूरज माथे पर दूर दूर जमाएगी फील्ड, और इसी बीच में सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अरुण। ऑप्टम से बाहर, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल जो विकेट है उससे विकेट से बाहर गेंद को पिच किया था, इसीलिए अंपायर का इशारा जो नो बॉल का, और नो बॉल के साथ 1 रन भी जुड़ जाएगा टीम के स्कोर के खाते में। 5वां दिन, आखिरी दिन इस मूली चषक 2024 मैकलन स्पोर्ट्स का एक बहुत ही शानदार आयोजन, और हर साल जो कि शिव जयंती की ये टूर्नामेंट का जो अंतिम दिन होता है, और अंपायर का इशारा हो चुका है फ्री हिट का। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। राम नागवेकर स्ट्राइक पर, सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर भूषण गोले, और अपने बॉलिंग बार पर अरुण अगली गेंद लेकर फ्री हिट की गेंद। एक बड़ा शॉट होना चाहिए इस फ्री हिट की गेंद पर ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, अनियमित बाउंस थोड़ा सा विकेट पर, और थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, सर पर लगी गेंद। इस मैच में जब फील्डिंग कर रहे थे तो भी राम नागवेकर थोड़े से जो कि गेंद लग चुकी थी, अब थोड़ी से फिर से जो गेंद लग चुकी है, लेकिन अपने आप को संभाला। मालूम है उनका रुकना खेलना बहुत महत्वपूर्ण है इस सेमीफाइनल के मैच में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ऑफ स्टंप पर कोई खास समझ नहीं पाई इस गेंद के बारे में। लगातार 2 गेंदों ने परेशान किया राम नागवेकर को, और इस मैच में अगर जब जब डॉट गेंदें निकलती जाएगी रन रेट बढ़ता जाएगा स्कोर बोर्ड पर। आखिरी ओवर पर अगर मुकाबला 20-22 रनों पर आ गया तो मैच में मजा होगा, लेकिन आखिरी ओवर में अगर 32-35 रन का टोटल, शायद थोड़ी सी मेहनत होगी, करनी पड़ेगी। धीमी पिक, स्लो ओवर 1, एक नकल गेंद, फिर से परेशान किया राम नागवेकर को। खेल मैदान पर चलता हुआ 5वें ओवर का, और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 56, 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए कैप्टन, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, शांता दुर्गा कुड़चड़े। चलिए दोस्तों प्लीज आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए। आने वाला मैच बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। मुकाबला होगा जो दूसरा सेमीफाइनल का। यूट्यूब पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 6ठे ओवर की शुरुआत और संगमेश आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। मिली हेलीकॉप्टर, लॉन्गा बाउंड्री पर गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। इस बार पहले कोशिश आगे निकले थे, लेकिन जैसे देखा गेंद थोड़ी दूर है, अपने आप को झांक दिया बिल्कुल गेंद के ऊपर, और रन बचाए 3। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ 57, लॉस ऑफ 2 विकेट, 57 रन 2 विकेट पर। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार बल्ला घुमाया था, गेंद चले गई विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट पाइन लेग पर, और जब तक शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। लेकिन अब मैच सिंगल डबल का नहीं रहा है मैदान पर। इस मैच को यहां से लेकर आपको जीतना है तो बस बड़े शॉट, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। संगमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बैटर है भूषण गोले। ओ बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर, एक गजब का छक्का 6 रन के लिए।
मैच को जीतने के लिए 73 रन 73, अभी भी 73 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का मुकाबला, फाइनल का दरवाजा बिल्कुल खुल जाएगा, बस थोड़ा सा समय बाकी है दोस्तों इस अंतिम फेरे में प्रवेश करने के लिए। और फुल टॉस, बहुत ही लाजवाब, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई। देखना होगा, अपील हो चुका है मैदान पर और हम सहर्ष स्वागत कर रहे हैं। मंच पर आगमन हो रहा है आदरणीय सर, सम्माननीय सर सौरभ जी गांवकर, जिनका आगमन हो रहा है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से इस मूली चषक 2024। तो देखना होगा क्या हुआ वहां पर निश्चित रूप से। तो 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और अभी भी चाहिए 67 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। गेंदे बची है अभी भी 13 गेंदे 67। लास्ट कॉल शांतादुर्गा कुड़चोड़े क्रिकेट टीम, लास्ट कॉल आपके लिए, नहीं तो सामने कारापुर क्रिकेट टीम को हम टॉस बिल्कुल दे देंगे। शांतादुर्गा क्रिकेट टीम लास्ट कॉल आपके लिए, नहीं तो टॉस बिल्कुल होगा कारापुर क्रिकेट टीम का। स्लो ओवर 1 फंस गए, विकेट कीपर के लिए मौका, एक स्लो ओवर 1, गति में परिवर्तन, जल्दी खेल बैठे भूषण गोड़े, तीसरी सफलता मिलती हुई इसी के साथ टीम को। और अब थोड़ा सा दबाव और बढ़ चुका है जो कि मैच पर 5वां दिन, अंतिम दिन। शुरू के 3 दिन में बहुत ही शानदार कमेंट्री सम्माननीय सर तुषार नाइक के जो अंग्रेजी और उन्हीं के साथ संतोष मरिये विंगुरले, जो बहुत ही अंग्रेजी और मराठी की कमेंट्री इस टूर्नामेंट के साथ पिछले साल में सर कुणाल दाते वो भी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके थे। और अब जो कि सर हरीश काकोड़कर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है दोस्तों दोपहर के सत्र में। तो खेल बाकी है अब टोटल अभी भी, जो कि 2 ओवर का, और 2 ओवर में 67 रन 12 गेंदों में 67 रन, 12 डिलिव्हरी 67 रन, 12 चेंडू 67 धावा सामना जिंकण्यासाठी। ढेर सारी टूर्नामेंट आने वाली, बिल्कुल बहुत जल्द जिंगारो बॉयज का टूर्नामेंट, उन्हीं के साथ गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा, पानपरा क्रिकेट उसगांव, जगदम्ब चषक, ये भी सीसी धारगल की एक और एक जो कि बड़ी प्रतियोगिता आने वाले समय में लगते एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट, मांद्री चैंपियंस ट्रॉफी जो 4,44,444, बहुत जल्द वेदांत 11 हरमल की ओर से और एक बड़ी प्रतियोगिता। तो बस आने वाली क्रिकेट का बिल्कुल बड़ा हंगाम जो कि है, लेकिन उससे पहले कौन रहेगा हकदार इस मूली चषक 5वें पर्व का मैकलन स्पोर्ट्स का आयोजन, 12 गेंदों का खेल और 67 रन, 12 डिलीवरी 67 रन। और इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पर संतोष। तो टॉस हो चुका है, कुड़चोड़े क्रिकेट टीम टॉस जीत चुकी है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत इस 5वें पर्व में, सेमीफाइनल का मुकाबला जो दूसरा, और इससे बीच सामने गेंदबाजी में परिवर्तन। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा गली पर फील्ड होती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, 22 का 1 रन जुड़ गया सिंगल्स जो कि स्कोर के खाते में। 11 गेंदों का खेल 66 रन, हर गेंद पर अब छक्का लगाना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को, हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। सामने संतोष और बॉलिंग बार पर अरुण। छोटी गेंद पोल किया इस बार वाइड लॉन्ग ऑन पर, फील्डर सामने हाथों में गेंद और चौथे विकेट का पतन होता हुआ ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम का। डीजे
गेंदबाजी कर रहे अरुण। आने वाले 10 गेंदों का खेल बाकी है मैच का, और जीतने के लिए चाहिए 65 रन। और दूर से खेला इस बार, बल्ले से भीतरी किनारा लगा, गेंद गई विकेट कीपर के पीछे। रियाज फील्डिंग कर रहे जो स्लिप पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल वहीं पर रुका हुआ। 65 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए, और सर गेंदें बची है सिर्फ 9 गेंदों में 65 रन। तो टीम का आगमन होता हुआ कारापुर क्रिकेट टीम, आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत से सपोर्टर आ चुके हैं दोस्तों, आप सभी का भी स्वागत है। सपोर्टर होना चाहिए अपने टीम के साथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। छोटी गेंद, इस बार एक बहुत ही शानदार अपरकट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे रन, और अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर, और फिर से बल्ले से लगी विकेट कीपर के पास, पीछे गेंद चली गई, स्लिप पर फील्डर गेंद को कैच करते, और सफलता मिलती हुई और एक जो कि टीम को। आज शुभम चंद्रो जी आ चुके मैदान पर। और बढ़िया शॉट इस बार हाफ वॉली पर लेकर, एक सुंदर ऑफ ड्राइव, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन सिंगल बन गया स्कोर को। राम नागवेकर बिल्कुल अब पता हो चुका है कि अब यहां से लड़ना मुश्किल रहेगा इस मैच में। 7वां ओवर जारी है, एक बड़े टोटल का मुकाबला, टारगेट सामने था 137 का, और उसको जवाब देते हुए ठीक ठाक 2 ओवर तक 35 रन पर थी, लेकिन वही से लेकर थोड़ी से पीछे हो गई मैच में ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम। सामने शुभम चंद्रो जी अपने बॉलिंग बार पर साइश। अंतिम ओवर का खेल मैच का जारी मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद, ऑफ कटर, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकले, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को परेशान करने वाली ये गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग बात पर अगले गेंद लेकर राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे साइश। ऑन साइड पर खेला इस बार, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, फिर से एक बड़े इत्मीनान के साथ, आराम के साथ सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो थोड़ा सा मुकाबला एक तरफी रहा मेरे ख्याल से। पावर प्ले में 2 ओवर में 32, बाद में 2 ओवर ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने कम बैक किया था, लेकिन आखिरी 4 ओवर में रियाज और दर्शन बांदेकर ने बिल्कुल मैदान पर बड़े बड़े शॉट लगाए, लंबे लंबे शॉट लगाए। ये बाउंसर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद, तो वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। ओ बल्ले से बिल्कुल कुछ आवाज तो सुनाई दी, और इसी के साथ और एक सफलता, राम नागवेकर वापस। टीम को लगा छठा धक्का, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, सफलता मिली साइश को। अंतिम ओवर का खेल जारी है, टारगेट 137 का, और जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर हम जुड़ जाते हैं, सावंत ब्रदर्स एस बीट। नए बल्लेबाज मैदान पर साइश।
तो गेंदबाज साइश, बल्लेबाज आ चुके हैं साइश, साइश टू साइश। अंतिम ओवर का खेल मैच का चलता हुआ मैदान पर। और वाइड यॉर्कर, एक बहुत अच्छा यॉर्कर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल अभिनव जुड़ चुके हैं स्कोरिंग के साथ, उन्हीं के साथ हमारे सर हरीश पारसेकर। सर थोड़ी सी दिक्कत होगी मैन ऑफ द मैच के साथ, रियाज की चर्चा होगी, दर्शन बांदेकर की चर्चा होगी, लेकिन स्कोरर की जानकारी अंतिम रहेगी। जो स्कोरर का निर्णय होगा मैन ऑफ द मैच का, वही बिल्कुल सर हरीश पारसेकर और उन्हीं के साथ अभिनव, ये दो स्कोरर हमारे बिल्कुल बगल में जुड़ चुके हैं। मैन ऑफ द बिल्कुल जो कि आपके लिए नाम जरूर डिक्लेयर होगा। एक छोटा सा दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक होगा और दूसरा सेमीफाइनल का मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सर इस मैच का मैन ऑफ द मैच। चलिए दोस्तों, जिन्होंने 5 छक्के लगाए और गेंदबाजी में बिल्कुल शानदार गेंदबाजी रही, पावर प्ले में 1 विकेट, बस वही नाम दर्शन बांदेकर मैन ऑफ द मैच। हरीश सर थोड़ी सी चर्चा जरूर होगी, टोकन ऑफ लव होगा और हमारे आदरणीय सर सम्मानीय सर सौरभ गांवकर, जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी के साथ नवाजा जाएगा, जुड़ जाएंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में सर सौरभ गांवकर और उन्हीं के साथ हरीश काकोडकर के साथ। और चलिए मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल का पहला मैच समाप्त होता हुआ दर्शन बांदेकर। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक है 5 मिनट का, दूसरा सेमीफाइनल शुरू होगा। चलिए हरीश सर। मुली चषक मॅक्लॅरन स्पोर्ट्स क्लबातर्फे जर्सी दिता विकीबा परब देव बरें करूं सौरभ बाब। तसोच आता म्हाका दिसता सौरभ बाबान जे प्लेयर ऑफ द मॅच आसा, जबरदस्त बॅटिंग परफॉर्मन्स, 50 रन काडले सेमीफायनलाक आणि 2 सुंदर ओव्हऱ्यो, फक्त 12 रन दिवन ओव्हरी काडिल्ली आसा, अशें सुंदर बॉलिंग प्रदर्शन, गुड ऑलराउंड परफॉर्मन्स, आउटस्टेशन प्लेयर सौरभ बांदेकर requesting Saurabh Bandekar to please come on the stage and collect Saurabh. Darshan Bandekar, please. Saurabh Gaukar will give the award. 1 wicket and a 50 in the semi-finals. Congratulations, Darshan. मुली चषक म्हणजे एक गोव्याचा नामवंत असा चषक आहे आणि सुंदर खेळ केला, 50 रनाची सुंदर पारी, काय म्हणायचं आहे? मी फर्स्ट टाइम इथे आलो आहे खेळायला. ग्राउंड बघून तर पहिलंच मी विकेटवर आलो तर माझ्या मनात खेळायचंच असंच होतं आणि बॅटला बॉल लागायला लागले तर मी सुटूनच गेलो त्याच्यानंतर. एकदम विकेट चांगली आहे, सुरेख आहे. आणि जेव्हा 5 बॉलमध्ये 5 षटकार ठोकले, त्याच्यानंतर 6व्या बॉलमध्ये मनात काय चाललं होतं? मारायचा की नाही मारायचा? कारण दर्शन बांदेकर फेमस आहे, याच्यापूर्वी आम्ही बघितलं आहे, व्हायरल झाला होता व्हिडिओ की 2-3 वेळा तुला चान्स मिळाला होता पण तू 6व्या बॉलवरती षटकार मारला नाही, तर काय चालतं मनात? एक रिस्पेक्ट टू कमल हवे सगळ्या प्रेक्षकांमध्ये, काय कसं काय चाललंय? मी एक ऑलराऊंडर आहे आणि मी पण बॉलर आहे. जेव्हा 5-6 बसतात तेव्हा बॉलरच्या मनावर किती प्रेशर असतं ते मला पण माहिती. 6 मारला.
जेव्हा मी व्हॉट्सॲप ओपन केलं तर तुझा तो व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे गोव्यामध्ये आणि खूप रिस्पेक्ट आला आहे सगळ्या व्हॉट्सअप क्रिकेटच्या ग्रुपावरती तुझ्याबद्दल आणि आदर पण वाढला आहे आणि तुझं कौतुक करण्यासारखं आणि मी तुला फायनलमध्ये तुझा यश आवडतं. थँक्यू सर. दर्शन बांदेकर, wonderful from him. Now I request Dhruv Parshe team, Ram Nagvik or someone from Dhruv Parshe to kindly collect the token of love from the organizers. Representative Dhruv Parshe, राम नागवेकर ना जाल्यार आनी कोण आसा जाल्यार ताणें मातसो येवचो हांगा टोकन ऑफ आमचे कडल्यान कलेक्ट करचें. एनीवन फ्रॉम ध्रुव पार्शे? ध्रुव पार्शेची टीम एकटो कोण तरी यो मातसो हांगा. येस राम. तर आता फुडली सर्त जी जातली ती सेमी फायनल 2 जी आसा STP कारापूर आणि शांतादुर्गा टी जी कुडचेरे म्युनिसिपालिटी. पळोवया दोनी बरी एक झुंज जातली. फर्स्ट सेमी फायनल आमकां ध्रुव पार्शेच्या वतीनं यादस्तीक भेटवण ही यादस्तीक सदांच मुली चषक मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लब सदांच दिता कारण जेन्ना कोणी हरता तेन्ना कांयच घेवन वचना पूण मुली चषकांतल्यान आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा जी आसा ती घेवन वतात. राम ज्या फायनलीक राम सेमीफायनली पर्यंत हेलो हेलो टेस्ट राम एक बरी टीम सदांच की पार्शे एक लो करता तुमकां पहिले म्हटल्यार मुली चषक ऑर्गनायझर्स जे आहा मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लब यांचे अभिनंदन करपाचे की एक बरी अशी टुर्नामेंट ते घडोवन हाडटा आणि म्हाका दिसता हे 5th सीझन सो आमी पयलींच फावट पार्टिसिपेट जाले सो सेमी फायनल सुद्दां एक बरी अचिवमेंट आसली आमकां पूण म्हाका दिसता ज्या अर्थे दर्शन आणि रियाज यांनी जो
स्लॉग ओव्हरीन जो आमचेर हल्लो केलो न्हू तो मॅचीचो टर्निंग पॉयंट आहलो की आय थिंक वी कन्सिडर्ड अरावंड 87 or 88 रन्स इन दोज 3 overs. तो मॅच टर्निंग पॉयंट जालो नाल्यार आमकां टार्गेटेड 88 रन्साचे आसताले. हय आनी म्हाका दिसता तुमी बरें परफॉर्म केल्लें आनी जी फुडली तुमकां सर्त आसा तांकां तुका यश आवडटा. बरी टीम तुमी आनी सेमीफायनलीक पावप मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लबाच्या आयोजीत मुली चषक हेंच मोठें कित्याक सेमीफायनलीक खंयची टीम केन्ना एक जिखपाक शकता हारपाक शकता तें जाताच. सो गुड लक टू यू इन द नेक्स्ट टुर्नामेंट्स. थँक्यू. बाबा निलेश नायक हाका जर्सी दिता विकी बाबा परब. आमचे जितले जाण हांगा मानेस्त आपल्या वेळ काडून येतात तांकां आमी हांगा भगवे रंगाची जर्सी आज तुमकां खबर आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आनी आतां सेकंड सेमीफायनल चालू जाता. विकी नायक अगेन्स्ट हर्षद मातोंडकर. Oh, chance dropped. Look at Harshad Matondkar there. He was walking back to the dressing room. That was such an easy chance. You cannot drop Harshad Matondkar off the very first ball. This is a golden opportunity lost here. Same thing happened in the first semi-finals as well. The chance was dropped in the first ball. And it is Kane. Kane it is. Who knows it better than Sanjay Naik that Kane cannot be dropped. So big break here for Harshad Matondkar and STB Karapur of the very first ball. Going for the switch hit. Now I think Kane will definitely go with an aggressive approach. He knows that I have been given a chance, and whenever good batters are given a chance, they always go the attacking way. They feel that it is going to be their day. There is no point in hanging around. I will play my shots. I will play the areas that I am comfortable in. Vicky certainly had created a chance and an easy one. This time nicely bowled. This is his special delivery. Chance of a run out, but the throw was slightly slow. Very slow throw, underarm throw, and no power behind that, so single easily taken. Dheeraj Boir, outstation player for Shanta Durga Tikurchere Municipality, and Pritam Bari for STP Kharapur. That's a good shot. That's a good shot. Going. Oh, almost taken it. Sanjay Naik close to the boundary, almost taken it. The jump was the perfect. He jumped very nicely, and 6 runs. It was actually pretty good jump. The ball was going above his head. Still, maybe he tried to pick it one-handed. It is not an easy take close to the boundary. He was very close to that rope. That's lovely comeback here. Beautiful comeback here from Vicky Naik. The first one was a chance dropped easily by the fielder, but then he decides that I will bowl once again a leg cutter to Harshad Matondkar. This time the keeper doesn't commit a mistake, and the big wicket of Harshad Matondkar by Vicky Naik in the very first over is 8 for 1. Hello test. Hello test. And Dheeraj Boir, as an outstation player, has an outstanding record in Muli Chashak. He had played in the previous 2 editions, and he was in the champions team. So whichever team he comes as an outstation player in the last 2 editions have won the tournament. So that's exactly why Shanta Durga team will feel very positive about one of these part of the games of Dheeraj Boir. He is fielding at the long on region at the moment. Is 8 for the loss of 1. Here comes the new batter.
Sachit. So predominantly offside field, most of the fielders inside the inner ring, mid of short cover, short extra cover, short point, backward point, and short third man. The ball goes to the short cover, chance of a run out, direct hit was required, a direct hit. Very well tried here by the fielder in the short covers, but in the end they scamper through for a comfortable single. So Vicky bowling very well as usual. He starts with the bowling the power play overs and then tries to pick up a wicket, which he has picked up the wicket pitch. Arshad Mathunkar back in the pavilion. At the end of one, it's 10 for 1. 9 for 1. So now, first over, I think Shanta Durga T will be very confident after Vicky bowled it over. And it is not easy, especially on a wicket like this, to bowl in the power play overs and just considering 8 runs and picking up 1 wicket. I think it's a wonderful job by the bowler Vicky Naik. And now is first change. The power play over are going to continue. These are the first two overs of batting or mandatory power play overs, and then the next 6, the field restriction slightly eases up. Maximum 4 fielders, in fact, minimum 4 fielders should be kept inside the 30-yard, and maximum 5 fielders outside, as per the normal ICC rules, MCC law book. Here comes Sanjay Naik, the man in prolific form with the bat. Has got a 50 in the previous games at the quarterfinals, player of the match in back-to-back matches for the victory of Shanta Durga T. With the ball in his hand against Sachit and Siddesh. A big breeze flowing on the ground, and here comes Sanjay Naik. Trying to bowl slightly wide, starts off with a wide outside the off stump. And Vikas Desai, there was a scare for the team that Vikas might make it or not make it, but this time trying to play in the point region, and dot ball here. Sanjay Naik has got a pace. Sanjay Naik normally bowls with a pretty decent pace and good hard length, which is difficult to hit. Both Vicky and Sanjay Naik normally bowl in the power play overs, and that is an advantage most of the times when they pick up wickets in the first 2 overs. If you pick up opening batsman or the one down batsman in the first 2 overs, 1 or 2 wickets, then it always hurts the sentiments of the team batting. As outside edge, going straight to the short third man fielder, for him fielding at the short third man, stopping the ball, and the keeper trying to tell the fielder at the short third man, try to throw the ball if they are running, because there is a backup over there at the mid-on region. That's exactly what you have to tell, convey the experience to the younger generation of the team. That's in the air. Has he timed it well? No, it is well inside. And it's dropped. Oh my God. Outstation player it is. And he has dropped the catch. Maybe the ball has gone with the wind slightly away from him. And the catch has been dropped here. Dheeraj Boir, the last man on the ground to drop the catch, is a very safe fielder.
So 2 chances dropped, one easy, but then Harshad Matondkar was taken back behind the wickets by Vicky Naik, and now a chance given here to Sajid. Moves the score to 14. And once again, this is a wide outside the off stump, wide signal by the umpire Nilesh Parsekar. And Rupesh Gaus. Bhalo, as we call him, both are officiating the semi-finals and the final matches. Wonderful umpiring. Yes, outside edge once again, but falling in no man's land. So they are trying to hit the ball hard. It's still not middling. They are a little bit of edgy at the moment. The first one was a slightly short of good length. You can say not too half cracker. It was short of good length that bounced. Catch went to the mid-wicket region, which was dropped. Now once again a fuller length delivery. Missed time by the batter, getting a single, going at the non-striker's end. There's another one in the air, but safely landed. There is an array of fielders inside the 30-yard circle. 5 fielders on the offside inside the ring. 2 fielders deep on the leg side. 2 fielders inside on the 30-yard on the leg side. That's how the field has been set. Mid-wicket and deep square leg kept close to the boundary. That's swatted away. That's belted away. That's belted away for 4 runs. Just landing one bounce inside the rope, going for 4. So that will give little bit of confidence here for the batsman Sachit. That will finish over number 2. It is 21 on the board for the loss of 1, STP Karapur. So Vicky will continue to bowl his second over on a trot. They feel that they need to get wickets, and Vicky either bowls continuously or either bowls one over. So the captain decides that Vicky is bowling so far has been a pivotal for them to pick up wickets. Trying to go for the switch. Oh, that was very close. That was very close. He tried to put the foot there and trying to avoid the ball hitting the wickets, but somehow the ball escaped hitting the wickets. A little scared for a while for the batter, but then he survives to face the next one. That's in the air. That should be a chance. The fielder coming underneath and takes a good one. He grabs it. He grabs it at the last moment. It was not an easy catch. And look at Vicky. He is very ecstatic. Well, finally second wicket going down. A missed time shot, but a good catch in the end. Second wicket falling down of STB Karapur. Second wicket taken here by the team. Shanta Durgati at the score of 21.
So in comes Sachin. So far the bowling has been very good. Although they have dropped 2 chances, but that has not dented them. That has not hurt them badly, you can say. They got wickets very soon after dropping the catches. This is in the air, nicely chipped in the air, but for a single. There was a man over there in the short extra cover region, but it was placed more towards the covers and gets a single. Moves the score to 22. Sachin gets off the mark. They are trying to see off Vicky here, not trying to take chances against Vicky. Vicky so far has picked up 2 wickets. Both the wickets have been picked by Vicky Naik. One of Harshad Matondkar and the second one of Siddesh. So Sachit and Sachit on wicket. This time heaved away. That might be a boundary. The ball going over the head of the fielders. There is plenty of bounce on this new Khanna ball, and that just bounces above the head of the fielders many a times. That's exactly what has happened. Played with the off spin, played with the swing of the ball, and gets a boundary. This was very well timed. In fact, this was required in this over. Things were getting very slower as far as the runs were concerned, and they have to go after the bowling. They have to get somewhere around maybe 80, 90 at least to get something for the bowlers to be bowling at in the second innings. It's not easy to be bowling on the surface. We have witnessed somewhere around 100 runs also might be chased. But that's the reason why you need to pick up wickets. If you get somewhere around 70, 80, which might not be enough in the 8-over semi-finals, that's what exactly might be going in the minds of the batters. And it's always difficult when you pick loose wickets early, especially of Harshad Matondkar. He's known for the big hitting. He's one of the very good all-rounders in Goa, where he comes up the order and scores big runs in the power play overs, then picks up the wickets as well whenever the team requires. Plays for Goa Police. That was a key wicket for them. That's a lovely shot. That's one of the best shots that we have seen in the day. Wonderful square cut played throughout the ground. No chance for the fielder inside the ring and outside as well. A simmering. Most of the teams have bought all-rounders in their teams because they need a cushion for the Australian player to be bowling those 2 overs, and also handy when it comes to batting, hammer and tonking those sixes whenever required, the big ones. So most of the Australian station players are all-rounders in all the teams. Right now we know who are the finalists. Yes, in the air, that might be a chance. There's a fielder over there, and he takes it easily. So Dheeraj Boyd comes. Dheeraj Boyd strikes on the very first ball, and that's the 3rd wicket going down.
Outstation player strikes, get rid of the batsman. Is 30 for the loss of 3 at the start of the 4th over. The outstation or the overseas player, you can say, for the team STB Kharagpur. And now the battle between outstation player, bowler versus outstation batter. You can see the jerseys there, orange jerseys for the outstation players. Here comes Dheeraj Boyd against Pritam Bari. Let's shift in the air. Oh, that was in the gap as well. Certainly not going with the flow, just a check shot on the offside. Gets a single, gets himself off the mark, takes the score to 31. Dheeraj Boyd bowling left arm from over the wicket, left arm cutters. So left armers, whenever they were bowling those cutters, very, very effective. And he has got the cunningness of using his pace variations many a times when he bowls. And one of the deliveries that he will fire in. You can see there is one more chance. That is an easy chance here. He's taken. Second wicket to Dheeraj Boyd. And at the moment, the bowling attack of Shantanu Gatia skittling the batters of the team STB Kharagpur. They are in trouble at the moment. It's 4 wickets down at the score of 31. So 2 wickets from the outstation players. What a pick he has been. That's in the air. Is it going for 6 runs? Is it going for 6 runs? Yes, it does. Yes, it does. What a lovely shot. That will release a lot of pressure on Pritam Bari and the dressing room. Kharagpur Latif. Ah, lovely delivery. Nippy hit that one, says Dheeraj Boyd. He was not happy with that 6 coming from the bat of Latif. He knows that he had missed his length over there. Latif, the man in form, getting 50 in the previous game in Ram Chashak in Pare for the same team. So 50, whenever you're getting a 50, you can certainly say the man is in good touch, good nick. Not easy to get 50s in tennis ball cricket. It's a shorter format. Once again, a little more pacey delivery here. Just gets a single this time. Tried to hit the ball, but he knew that it was not in the slot to be hit away. But I think Dheeraj Boyd will be happy with the performance. Although 6 considered, he picks up 2 crucial wickets for his team. 4 overs gone, halfway mark of the first innings for the batting team STB Kharagpur, and they are 38 at the moment for the loss of 4 wickets.
So 4 overs gone, 38, 4 wickets down, and Pritam Bari is गंधार सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर आणि समोर स्ट्राईकला फलंदाजी करतोय तो लतीफ. वैयक्तिक 7 धावा, एक टोलेजंग खणखणीत षटकार त्याच्या बॅटमधून निघालाय. आकू टप्प्याचा चेंडू, एक पुलचा फटका आणि जोपर्यंत वाईड्स लॉंग ऑनला विकेट नाही घेतोय, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या मैदानात पूर्ण करतायत. सेमीफायनलची पहिली लढत थोडासा एकतर्फी सामना संपला, एक मोठा विजय संपादन केला ते तुम्ही क्रिकेटर्सने, आणि त्यानंतर मात्र दुसरी लढत या मैदानात नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि प्रतिस्पर्धी संघ कारापूर क्रिकेट संघ एस टी पी क्रिकेट संघाला फलंदाजीला मैदानात हे निमंत्रण दिलंय. 5वं षटक आणि गोलंदाज गंधार आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच चेंडू बॅटच्या आतलीकडे घेतोय, शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक घेतोय. प्रत्येकी एक एक खेळाडू ओव्हरसीज आणि या सामन्यात मात्र धीरज भोईर आणि त्याचा बरोबर प्रीतम बारी हे 2 महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटमधील मोठी खेळाडू, मोठी नावं या मैदानात प्रतिस्पर्धी या ठिकाणी म्हणजे आमने सामने आपल्याला मैदानात दिसत आहेत. बऱ्याच वेळा कदाचित एका संघाबरोबर खेळलेत, पण आज मात्र आमने सामने. फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटने एक विथ अलॉंग कार्पेट फटका आणि पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक विकी येतोय, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एक चांगली गोलंदाजी, नियोजनबद्ध मारा, ऑफ-स्टंपरचा अचूक गोलंदाजी मैदानात आपण सुरुवातीपासून बघतोय आणि आतापर्यंत 4 मोहरे हे तंबूमध्ये परत आहेत. अवघ्या धावा 42 धावा. पहिला सामना मोठ्या धावसंख्येचा झाला स्पर्धेत आणि बघूया दुसरा सेमीफायनल किती धावांपर्यंत पोहोचतोय. ओव्हरपिच चेंडू, फटका फसला एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. एक नेमका अंदाज चुकतो. एक साधा सोपा झेल होता आणि कदाचित दुपारच्या सत्रात असे झेल थोडेसे अवघड ठरतात, परंतु ही जरतरची कारणं सेमीफायनलच्या सामन्यात तुमच्यासाठी मी म्हणेन की थोडंसं कठीण असेल. बघूया सुटलाय झेल, मिळताय 2 धावा आणि येणारा काळ सांगेल हा झेल किती महागडा ठरतोय तो. शांतादुर्गा कुडचोडे क्रिकेट संघासाठी धावफलक पुढे सरकलाय तो बरोबर 43 धावा. 4 गडी बाद 43. षटक क्रमांक 5वं. गोलंदाजी मार्कवर गंधार. ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा एकदा मनासारखा प्रीतम बारीच्या फटका निघत नाही, स्क्वेअर लेगवरनं येतोय. एकेरी धाव. अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. तेवढंच जोखमीचं, तेवढंच पंच मात्र सहमती दर्शवतायत. जी धाव नव्हती ती धाव घ्यायचा प्रयत्न अंगलट येतोय. लतीफ मैदानातून रजा घेतोय धावबादच्या स्वरूपात. 5वा हादरा मैदानात बसतोय तो. STP कारापूर क्रिकेट संघाला जी जोडी जमते, एका मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय कारापूर क्रिकेट संघ, असं चित्र होतं आणि त्याच दरम्यान मात्र दुसरी धाव संजय नाईकच्या यष्टिरक्षकाच्या दिशेने आलेली अचूक फेक आणि तंबूचा रस्ता दकडतोय तो लतीफ. मैदानात प्रीतम बारी वैयक्तिक 5 धावावर आणि बघूया प्रीतमला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज कपिल हा मैदानात सज्ज होतोय. धावफलक मात्र स्थिरावलाय, थांबलाय अवघ्या 44 धावा, 5 गडी बाद. डीजे संघाला
भव्य दिव्य आयोजन, 5वं पर्व मॅकलन स्पोर्ट्स मुली चषक फोटोसोनिक प्रोडक्शनच्या माध्यमातून भरपूर प्रेक्षक जोडले गेलेत आणि त्याचबरोबर सुंदर अशी साऊंड सिस्टीम सार्थक, शाश्वत, सूरज सावंत, एस बीट डीजे सावंत ब्रदर्स आमच्यासोबत गुणलेखकाचं काम करतायत अगन आणि त्याचबरोबर सर आमचे हरीश पारसेकर. मी अशोक नाईक आणि हरीश काकोडकर सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. दुपारच्या सत्रात सामना रंगलाय मैदानात, सेमीफायनलची दुसरी लढत आणि जे उपस्थित प्रेक्षक सामन्याचा आनंद लुटतायत तुमचं पण मित्रांनो मनपूर्वक स्वागत. ओव्हरपिच चेंडू शपल टोलवायचा, एक मिड विकेटला आल्या आल्या मोठा फटका, थोडासा ताणून मारायचा प्रयत्न, फुलरलेनचा चेंडू बॅटला लागतोय, पायावर आदळतोय, धाव काही मिळत नाही. एका चांगल्या षटकाचा खेळ मैदानात समाप्त होतोय. या षटकात अगदी कमी धावा देतोय गोलंदाज गंधार. खेळ समाप्त झालाय 5व्या षटकाचा आणि या 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक मात्र पोहोचला येतो. निम्मे या ठिकाणी म्हणजे 5 गडी बाद झालेत. अवघ्या 44 धावा धावफलकावर उरलेत 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत किमान अजून एक 40 धावा हव्यात कारण समोर प्रतिस्पर्धी संघ तेवढा तगडा संघ. ओव्हरसीज खेळाडू दोन्ही संघात एक एका बाजूनं प्रीतम बारी तर दुसऱ्या बाजूनं धीरज भोईर आणि त्याचबरोबर विकास देसाई उर्फ भाऊ हा एक तडाखेबाज आणि संजय नाईक विस्फोटक फलंदाज. एक 90-95 धावापर्यंत कारापूर क्रिकेट संघाला ही मजल मारावी लागेल. बघूया काय घडतंय. उरलेत 18 चेंडू. गोलंदाजीत बदल झालाय. धीरज भोईर बहुधा आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक, संघाकडून 6वं षटक आणि समोर मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो बारी बारी अब प्रीतम बारी मैदान पर. 2 ओव्हरसीज खेळाडू आमने सामने आणि बघूया या 2 संघात 2 फलंदाज दिग्गज खेळाडू दरम्यान कशा प्रकारे हे षटक या ठिकाणी संपतंय. एक वाईड यॉर्कर टाकायचा प्रयत्न, थोडासा लाईनला भरकटतोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. भर उन्हात हे दोन्ही पंच कामगिरी करतायत. एका बाजूनं रुपेश गावस उर्फ भालो आणि सर निलेश पारसेकर. दोन्ही पंच खरोखर कौतुक करावं लागेल कारण रणरणीत ऊन असतं आणि अशा या उन्हात ही कामगिरी मित्रांनो खूप अवघड असते, सोपी नसते मैदानात. फुलरलेनचा चेंडू मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही. आज शिवजयंती, छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा आणि आपण सकाळच्या सत्रात अतिशय सुंदर असं सुगम संगीत म्हणजे ढोलताशा पथक ऐकलं जे मडकं येऊन या स्पर्धेसाठी आणि काय सुंदर त्या ठिकाणी सकाळचा सोहळा आपण बघितला तो या शिवजयंती कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. डावखुरा गोलंदाज ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा टप्पा पडल्यानंतर आणखी बाहेर जातोय. पंच वळतायत, दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. षटक सुरू आहे ते 6वं धावफलक पोहोचलाय तो 5 गडी बाद 46. समोर स्ट्राईकला सज्ज झालाय प्रीतम बारी आणि गोलंदाजी मार्कवर डावखुरा गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय तो धीरज भोईर. एक मनगटी फटका, आखू टप्प्याचा चेंडू, एक फ्लिकचा फटका, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक पहिली धाव वेगानं दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय आणि जोपर्यंत फेक होते विकास देसाई बघा थोडासा नाखुश दिसतोय या फेकीवर कारण संधी होती परंतु ती संधी मात्र हातातून निसटते आणि थोडीशी सुस्तावलेली फेक. दोन्ही फलंदाज अतिशय वेगानं पळतायत विकेटमध्ये आणि 2 महत्त्वाच्या धावा प्रीतमसाठी आणि 2 धावा संघासाठी आपल्याला बघायला मिळत आहेत त्या STP कारापूर क्रिकेट संघासाठी. दोन्ही संघांचे भरपूर सपोर्टर आलेत. मित्रांनो तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. मुली चषक 5वं पर्व आज अंतिम दिवस. फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर फटका स्ट्रेट ड्राईव्हचा गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण, डीप लॉंगॉनवरनं क्षेत्ररक्षक येतं आणि चेंडू अडवत. एक मोठा फटका निघाला होता परंतु मिळतात फक्त 2 धावा. क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षण खूप महत्त्वाचं असतं. धावांचं अर्धशतक या ठिकाणी पूर्ण होते ते STP क्रिकेट संघाच्या 50 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक 90 धावांची अपेक्षा असेल या सामन्यात कारण प्रतिस्पर्धी संघ विकास देसाई, संजय नाईक असे मातब्बर खेळाडू, त्याबरोबर ओव्हरसीज खेळाडू धीरज भोईर, विकी नाईक, संदीप अशी फलंदाजांची फळी असणारी संघ. दुसऱ्या बाजूने तेवढीच चांगली गोलंदाजी ही सुद्धा कारापूर क्रिकेट संघासाठी. परंतु सामना 8 षटकांचा आणि एकंदरीत 4 दिवसांचा जर खेळपट्टीचा विचार केला तर फलंदाजांना पोषक आणि त्यामुळे
मी म्हणतोय की कॉमेंट्री बॉक्समधून एक किमान 90 धावा हव्यात या मॅचमध्ये. बघूया उर्वरित चेंडूत काय घडतंय. सुंदर फटका, एक ऑफ ड्राईव्हचा देखणा फटका, डीप लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक येतोय. फक्त एकेरी धाव ही फलंदाज प्रीतम बारीसाठी आणि या एकेरी धावेबरोबरच धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 51 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6वं षटक आणि या षटकानंतर उरलेत 12 चेंडू. इथून थोडीशी आक्रमक फटकेबाजी ही करावी लागेल. स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो कपिल. एक वाईड यॉर्कर हलकाच अपील होतोय, परंतु पंच मात्र ठाम नकार देत आहेत, कारण त्यांना जाणवलंय की बॅट थोडीशी म्हणजे जमिनीवर लागली, आदळली आणि तोच आवाज आला आणि त्याचमुळे पंच मात्र अपील फेटाळतात. बघा प्रत्येक चेंडूवर अतिशय बारकाईने नजर ही आमचे दोन्ही पंच सन्माननीय रुपेश गावस आणि सर निलेश पारसेकर. स्कूपचा प्रयत्न, चेंडू येतोय तो यष्टिरक्षकाच्या मागे. आता मात्र 4 धावांसाठी बराच वेळानंतर चौकार मिळतोय तो कारापूर क्रिकेट संघाला. 4 धावा आणि थोडासा आम्ही संधी देतोय आमच्या डीजे मॅनसाठी. दुपारच्या सत्रात कदाचित आमचे सावंत साहेब त्यांना पण थोडीशी कदाचित भूक लागली असेल आणि त्याचमुळे ते थोडंसं व्यस्त दिसतात. पण तू वळूया, 6 षटकं समाप्त झालीत आणि या 6व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 55 धावा 5 गडी बाद, 55 रन 5 विकेट पर. उरलेत 12 चेंडू आणि इथून टोलेबाजी ही करावीच लागेल या मॅचमध्ये STP क्रिकेट संघाला. 12 चेंडूत किमान 3 ते 4 मोठे फटके हवेत कॉमेंट्री बॉक्समधून अंदाज. आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र शांतादुर्गा क्रिकेट संघासाठी ते आटोकाट प्रयत्न करतील की प्रतिस्पर्धी संघाला एक 75 ते 80 धावापर्यंत रोखायचं आणि पाठलाग सोपा करायचा. बघूया उर्वरित 12 चेंडू आणि काय घडतं या 12 चेंडूत. गोलंदाजीत बदल झालाय. वैयक्तिक दुसरं संघाकडून 7वं षटक. गंधार आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय आणि समोर मात्र स्ट्राईकला सज्ज झालाय तो प्रीतम बारी. आतापर्यंत थोडासा थांबलाय, शांत खेळतोय, परंतु नक्की माहिती आहे की मोठ्या मॅचचा मोठा खेळाडू आहे, मोठ्या स्पर्धा गाजवल्यात आणि त्याला पण जाणवलंय की आता इथून फटकेबाजी ही करावी लागेल. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू अतिशय अचूक लाईनवर ऑफ स्टंपरचा चेंडू फलंदाजाला निरुत्तर करतोय. एक निर्धाव चेंडू बरोबर गोलंदाज गंधार पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय. हाणामारीचं षटक स्लॉक ओव्हर मोठ्या फटक्यांसाठी, परंतु त्या षटकात मात्र पहिला चेंडू गोलंदाज हा निर्धाव टाकतोय. गंधार राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर प्रीतम बारी. बॅटची कड घेतोय चेंडू, परंतु टप्पा जमिनीवर पडलाय त्यामुळे फलंदाज सुदैवी ठरतोय. लागोपाठ 2 चेंडू निर्धाव. गोलंदाज गंधार पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण एक वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्रीवर अगदी दक्ष दिसतोय तो क्षेत्ररक्षक धीरज बोईर. एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट. यावेळी मात्र एक खणखणीत सणसणीत फटका, आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट आर्मपुलचा फटका आणि बराच वेळानंतर डीप मिड विकेटला एक टोलेजंग षटकार. 6 धावांसाठी डीजे. कारापूर क्रिकेट संघाला ओव्हरपिच चेंडू. गोलंदाज कमबॅक करतोय, त्याला आपली चूक जाणवली. यापूर्वीचा चेंडू जो आखूड टप्प्याचा होता त्यानंतर मात्र एक चांगला चेंडू फुलर लेनचा चेंडू टाकतोय आणि या निर्धाव चेंडू बरोबरच पुन्हा एकदा गंधार आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. एक लोअर फुल टॉस, सुंदर फटका, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह. 2 क्षेत्ररक्षक, त्या चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकाला चकवत चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईन पार करतोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. म्हणजे एकंदरीत एक चांगलं षटक या ठिकाणी STP कारापूर क्रिकेट संघासाठी. एक षटकार चौकार निघतोय आतापर्यंत या षटकात. आणि बघूया आपल्या स्पेलची सांगता करणारा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज गंधार येतोय आणि समोर फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय.
आज शिवजयंती, छत्रपती शिवरायांचा मानाचा मुजरा, माता जिजाबाई आणि त्यांना पण मान या ठिकाणी अगदी मानाचा मुजरा. ओ चांगला चेंडू, परंतु बघूया कव्हरच्या दिशेने हलक्याचं ड्राईव्ह करतोय, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि स्ट्राईक जो हवा होता तो स्ट्राईक मिळवण्याची जी धडपड होते ती मात्र साध्य होते मैदानात. खेळ समाप्त झालाय 7व्या षटकाचा आणि या 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक मात्र बरोबर पोहोचलाय तो 66 धावा, 5 गडी बाद. शेवटचं षटक, 6 चेंडूंचा खेळ अवघा हा बाकी या सामन्यातील. आवाज जो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतोय तुमच्या माध्यमातून आणि तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद. चला बघूया अंतिम षटक आणि या अंतिम षटकात चंद्रेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते. एका बाजूने एक चांगलं षटक आवश्यक आहे ते शांतादुर्गा कुडचोडे क्रिकेट संघाला, तर दुसऱ्या बाजूनं किमान 2 मोठे फटके हवेत. बघूया काय घडतं या 6 चेंडूत. चंद्रेश आणि समोर मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो प्रीतम बारी. आतापर्यंत एक चौकार, एक षटकार त्याच्या बॅटमधनं, कपिलने एक चौकार ठोकलाय, परंतु या षटकात मात्र कमीत कमी 2 मोठे फटके हवेत. पहिला सामना प्रेक्षकांची निराशा झाली, कारण एकतर्फी सामना झाला की नक्कीच प्रेक्षकांची निराशा होते. परंतु या सामन्यात बघूया एक अपेक्षा असेल की नक्की एक चुरशीच्या लढतीची, आणि बघूया दोन्ही संघादरम्यान हा सामना कशा प्रकारे रंगतोय मैदानात. एक सुंदर फटका, पहिल्या चेंडूवर स्वागत होत आहे गोलंदाजाचं. एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. डीजे म्हणजे गोलंदाजावर आता अतिरिक्त थोडंसं दडपण असेल. उरलेत 5 चेंडू, अंतिम षटक. धावफलक पोचलाय तो बरोबर 72 धावा. हाफ आलेप ड्राईव्ह करतोय ऑन साईडला, वाईड लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक. यावेळी मात्र धाव टाळतोय, कारण जे काय करायचंय ते प्रीतम बारीला करायचंय. त्याला माहिती आहे इथना सामना लांबवायचा, एक समाधानकारक जर धावसंख्या आपल्याला उभारायची आहे तर ती कामगिरी मलाच करावी लागेल, आणि त्याचमुळे थांबतोय. पुन्हा एकदा स्ट्राईकसाठी आपल्याकडे स्ट्राईकला राखतोय. निर्धाव चेंडू, पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर गोलंदाज बऱ्यापैकी कमबॅक करतोय. तो गोलंदाज चंद्रेश लागोपाठ 2 चेंडू निरुत्तर करतोय फलंदाज प्रीतम बारीला. धावफलक थांबलाय 72, 72, लॉस ऑफ 5 विकेट. 72 धावा, 5 गडी बाद. पुन्हा एकदा बाहेरची कडी, यावेळी मात्र दुसऱ्या धावेसाठी बघूया. डीप स्क्वेअरला बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक येतोय आणि जोपर्यंत परती होते धावबादची संधी, पंच आकाशाकडे बोट करतायत. फलंदाजाला परतावं लागेल कपिलला. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतो तो प्रीतम बारी आणि या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पोहोचलाय तो 73, 73 धावा, 6 गडी बाद. डीजे मुजरा, मातृभूमीच्या रक्षणासाठी आपले जीवन अर्पण करणारे अदम्य साहस आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा. ओव्हरपिच चेंडू आडव्या बॅटनं टोलवलाय मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आणि
मला वाटतं 2-3 धावा नक्की या ठिकाणी झाल्या असत्या, परंतु प्रीतम बारी कदाचित त्याची अपेक्षा, त्याचा इरादा असेल की या येणाऱ्या चेंडूवर एखादा मोठा फटका. लास्ट बॉल टू गो. इनिंगची स्पेलची सांगता करणारा जो की पहिल्या इनिंगचा खेळ संपाप्त होणारा शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल. 7 चेंडू आतापर्यंत डॉट. उडवलाय डीप लॉंगरला. एक सुंदर षटकार 6 धावांसाठी आमचे बॉल बॉईज त्या ठिकाणी. तेजू थँक्यू तुमच्यासाठी. तर 6 धावा षटकारानं सांगता होते या पहिल्या 8 ओव्हरची. आणि 8 ओव्हर नंतर धावफलक टोटल धावसंख्या पोचली ती 79 आणि सामना जिंकण्यासाठी 80 धावा. एक फायटिंग टोटल आहे. 8 षटकांचा सामना आहे. चांगली खेळपट्टी आहे, गोलंदाजी आहे, क्षेत्ररक्षण आहे, फलंदाजी आहे. 80 धावा टार्गेट समोर ठेवलंय. आणि बघूया कशा प्रकारे सामना रंगतोय. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा ऐकूया सर हरीश काकोडकर यांचा आवाज, परंतु त्या अगोदर मात्र एक छोटासा ब्रेक आमच्या डीजे साठी. पिकाचं नाव घेऊ पाहिजे काय ना.
नाव घेवपाचें काय ना तें सांग वी देसाय $79 posted on the board through Pritham Bari, who exploded almost in the last part, although few dot was considered by him. But I think 32 of 18 balls. They required many more. I think somewhere around 9500, so maybe 15 runs short. But still, match can be made. If they pick up early wickets, especially of the man in form, with Vikas Desai and Sanjay Naik, the openers are the key. Although there is a batting depth, a considerable batting depth in Shanta Durgati of Kurcharem team. But early breakthroughs, early 2 wickets, I can feel that STP Karapur can come back in this match. 80 runs is the target set for Shanta Durgati to enter into the finals to play against 3 cricketers. But STP Karapur will be hoping to pick up early wickets and try and make inroads into the batting order of Kurcharem team. And with the ball in his hands at the moment, Rudresh against Vikas Desai. There is a man in the mid-wicket region. There is a man at long off. So here comes the run chase of the second semi-finals. Nicely played. Wonderful drive towards the covers region, wide long off region for 4 runs. Per over required is the asking run rate. That's in the air, just wide of him, goes for 4 runs. Beautifully tied. Arshad Matonkar gave it a try towards the mid of region, towards the left hand side of him, but the ball was beautifully timed, placed very well, and with a straight bat. Because Desai looks more elegant and graceful when he's playing straight out the ground at a long off region. 14 already on the board when the asking run rate is just 10 runs. Going down towards the leg side. The sweep was a proper choice, you can say, but the ball maybe came back, jacked back into the right-hander, leg by signal by the umpire, and single to finish over number 1, 15 without loss after completion of 1 over.
the ball directly in the hands of the outstation player Pritham Bari, who is a fantastic bowler. We have just now visited him South Goa Premier League, where Vikas Desai must have faced him in the games that they have played against each other, and Vikas also fared well against him. The best batter of South Goa Premier League, when so many Indian players who played tennis superstar played at MCC ground. Vikas was adjudged the best player, best batter as far as Goan player is concerned, scoring 100 runs in that competition. And Pritham Bari certainly had picked up a few wickets and scored runs, player of the match in the games as well in South Goa Premier League. So that's going to be a very good battle. Pritham versus the batter Bhau. That was you can say the slightly short of good length, as maybe a leg cutter bowled by Pritham Bari. Bhau wanted to cut it over the point region, but wide signal by the umpire. Starts off with an extra, score moves on to 16. That's in the air. That might be the chance. That might just be the chance. And it's been taken. So the key wicket here, very important wicket of Vikas Desai, has been taken by Pritham Bari right into the attack. The first ball was wide, second ball was on target. Vikas went for the shot, getting a leading edge taken in the deep in the mid wicket region. So it's 16 for the loss of 1. Not bad. Trying to innovate himself, trying to go and play with the spin instead of that leg spin. Is trying to go the reverse way and let the ball come towards him. This didn't happen. Dot ball considered by the batter Rajat. That's in the air, but wide of the fielder. There's a man placed in the deep covers, but 2 runs easily taken. It is a long way. These boundaries are very big, not short boundaries. So by the time it goes in the gap and the fielder collects and throws the ball back to the bowler or the keeper, 2 runs mostly easily taken. Rajat Sawant is a fine reverse hitter, switch hitter. He likes to play that shot many a times and gets so many runs when he plays that shot. A little bit of field change you can see. Now more fielders on the offside towards the backward of point. 3 fielders and 1 in the short extra cover. That's lovely piece of bowling here. He knew that he was going for the switch. It scuffled him for the room ball on his legs, and fielders will do the job. Now the fielders are inside the 30 yards, so chance of taking a single is going to be very minuscule here. Dot ball, very good over here so far from the bowler Pritham Bari. Picked up the important wicket, still piling the pressure on the batters. Nicely played towards the fine leg region. No field over there. It goes for 4 runs. Easy pickings here. Finding the placement and finding the timing.
short fine leg and backward square leg region. This time he goes for the switch hit. This should be chance taken. That's a very good catch here by the fielder in the point region. Rajat goes back to the pavilion. Second wicket, second breakthrough here for STB Karapur. The match is turning to be interesting one. So pretty good over here from Pritham Bari and picking up 2 wickets. That was very important for the Fortunes. Now the match is interesting. That gets Vicky Navik on the wicket, will be at the non-striker's end, and Rudresh will continue with his left arm bowling. Left arm cutters bowling from around the wicket against Sanjay Naik. They got a man in the backward, a deep backward square leg region, deep mid wicket and wide long on region. Mid off, deep covers, deep extra cover. There is the field set. There is no man at the backward of point region, and now they are getting the man over there. There was so much of time taken in setting in the field. How to set the particular field for Sanjay Naik? It's very difficult to set field for him. He's a fine player. They're still not convinced where to place a field for him against Rudresh. Short covers and mid off. And nicely played as the ball went straight to the fielder. Stopped it and restricts the batter to a single. They need to keep taking the wickets, especially from the over of Pritham Bari, just like how he has picked up 2 wickets in the first over. If he can pick up another 1 or maybe 2 in the next one, that will certainly be very good here for the side bowling STB Karapur. 80 is not a big total on a surface like this one. They has chipped it in the air, but always safe. There are wide gaps on the offside. Only 3 fielders inside the ring in the mid-off region and short covers and short third man region. So if you can place it nicely, just like Afiki placed, just a check shot, check drive we can call it. Once again, flicked away nicely towards the mid-wicket. So far, they are dealing it in singles at the moment. 3 singles of the first 3 deliveries, not taking chances against Rudresh. So Sanjay Naik may be feeling that he needs to take the game deep, just like how he was playing in the previous game against Gumteshwar Margam in the quarterfinals, taking the game deep, not taking chances against Chirpu. Once again, down the ground, Pritham Bari has to cover a lot of area. Sanjay will pick up a couple here. I told you this is a big ground. By the time Pritham comes from the wide long on position towards the straighter position, 2 runs easily taken by the batter. 27, 5 runs taken off for the over so far. So at the moment, little subdued, not taking the chances of the big shots. Slowly and steadily moving towards the target. So again, he was trying to sweep the ball, trying to sweep and go for the 6. No chance of a second there. Good piece of fielding from the mid-wicket region.
6 runs taken of the first 5 balls moves the score to 28. So they are moving towards the target very sensibly at the moment. They know that it's 10 runs per over that is required, and they are somewhere around 9.5, 10 runs per over at the moment. Sensible batting. Once again down the ground. No risk whatsoever at the moment. Fielded very nicely here by Pritham. Throws back to the bowler. So 29 the score after completion of 3 overs. 8 runs considered by Rudresh, and the batsman also didn't go after him, playing very sensibly. 20. Will continue. They need wickets. That's the reason why they are giving their best bowling options at the moment. And Arshad Matonkar is yet to bowl. 3 bowlers are getting 2 overs each. So Rudresh has bowled those 2 overs. Now Pritham Bari will bowl his and complete his 2 overs. So certainly I feel Arshad Matonkar is definitely bowled those 2 overs. Maybe the 5th and 7th, or maybe the 6th or 8th. But I think 5th and 7th might be a better option for him, keeping some runs in the last over for his partner if the game goes that way. Game goes into the 8th over. That's what the team of STB Karapur will be hoping, that in the 2nd over at least Pritham Bari picks up 1 wicket, especially of Sanjay Naik, who has got so many runs for team Shantadurga Kurcharema in this tournament so far. A 50, a 40, so somewhere close around more than 100 runs already scored by this man Sanjay Naik. And that's good bowling here. Very good bowling. That's the shot Sanjay likes. But this was not in the slot where he could have swung away on the leg side towards the fine leg. They have done their homework. There's a man placed in the backward square leg region. More sort of fine rather than square. That's the reason. That's the exact position where Sanjay placed the shots. And Harshad Matonkar knows him better. Nobody knows in Goa cricket better than Harshad Matonkar how Sanjay plays. Very good friends of each other, and plays together as outstation players for the teams. Exactly the ploy must have been talked with Pritham Bari by Harshad Matonkar. Beautiful bowling here, fine bowling. Well, you can see he's a different kind of bowler. Whenever he comes into the bowling crease, he juggles the ball from the left hand towards the right hand and feels as if he's bowling those quick bowlers. But he is cutting the ball as a leggy. And these are sharp leg cutters. So you need to see where the ball is landing. This is just chipped in the air. Might be looking for a couple here, Vicky. And this is very difficult. You can't get the balance here. However good are your shoes. This is not the grassy outfield that you see in many other part of the Goa. So 2 runs I think is a pretty good job by the fielders. You can't run normally. You can't run here very quickly, just like how you run on the grass outfields. Still, I think in the morning itself there was a roller which was brought that made the infield and the outfield much more better than the normal ground. And the rollover was started in the morning at 9 o'clock, and it rolled every part of the ground, and that's why you feel like playing here on this surface. Otherwise,
is sometimes difficult on a bumpy outfield like this one for the players, because you are not getting the footing, you are not getting the grip on the ground to go quickly onto the ball. That's a loose ball. That's a loose ball. The dancing Vicky scores a dancing 6. Fantastic batting. It just went across on the offside, then came back to the position, and then just flicks it away on the leg side for 6 runs against. Wanted to bowl a Yorker length, watching Vicky just juggling in the popping crease. That's a good ball. That's a good comeback here. That is how you have to reply as a bowler. Bowling in the right areas, troubling the batters. And this was not a ball to be swept away. He likes to play that shot just like how Sanjay Naik wants to play in that scale leg and final leg region. But this was bowled slightly fuller, short of good length, the 3/4 length, the hard length. As inside edge, and Sanjay Naik says the ball is in the hands of the short tournament region fielder. No chance of a single. There was actually never a run in it. The ball went straight in the hands of the short tournament. Vicky wanted to go for a single. Sanjay saying absolutely no risk whatsoever at this stage. 4 overs gone. The match is evenly poised. 38 for the loss of 2 wickets. At the moment you feel there's just 2 wickets lost. Shanta Durga T must feel comfortable, but I'll tell you, Harshad Matonkar, if he can get rid of Sanjay Naik, that is his a very close friend, very good mates they are. If you can get rid of the danger man Sanjay Naik, this match you can see opening up in the second half of the 4 overs. And 42 runs required in 24 balls is like more than 10 runs per over. 20.5 runs per over required in the last 4. Although it is not difficult on a wicket like this, we have witnessed even 60-70 in the last 4 is very much gettable possible on such a surface. Is the semi-finals, is the pressure of playing and going into the finals of Muli Chashak that will play on the minds of the batter if a wicket is lost. So all important is taking the wickets, putting the right fielders in the right position and taking even the half chances, maybe a run out opportunity, maybe a catch in the deep. If things go right here for STP Karapur, we can see an interesting second semi-finals. At the moment, you can say it's 60-40 tilted in favor of Shanta Durga T of Kurcharem Municipality. But there can be always a turnaround in the game of great uncertainties we witnessed. So Harshad Matonkar has come on to the bowling mark on the bowling crease to be bowling against Sanjay Naik. This is the battle that everyone was waiting for. Harshad Matonkar, Kane versus Sanju. Normally play in the same team as players. And now, this time, just respecting, playing safely against Harshad Matonkar, gets the single. He knows that he is not an easy customer to be going after. Exactly knows the strength and weaknesses of the man, Sanju. So both playing for Goa Police. Same team, Australian players in the recently concluded going for the switch. There is a man in the deep, but he is just going to be a spectator. He is just going to be a spectator. Absolutely no chance there. The ball was bowled short. Vicky was into the act, and innovative and creative from Vicky Naik. Takes the score to 45. So Kane has that is once again fabulous batting display here from Vicky Naik. Kane has been
absolutely devastated here with the way Vicky has been flourishing with those sixes. Now they have decided that it's the time to go after the bowling, and they're going after Kane. So 51 at the moment, 50 up in the fifth over, 13 runs coming off the Kane's over so far, and you can see Pritam Bari now trying to take the leader position here. This is just chipped away in the air. That is why I call him the computer cricketer. He is a computer cricketer. He is very calculative. He knows he has already hit 2 sixes. There is no point in going after the bowling. 14 runs already have been scored. Moves the score to 52. 28 more runs required to reach towards the target. They're straight back to the bowler. Defensive. They know that they've got the runs which was required against Chad Matonkar. Still 28 runs required. 3 overs left after this one. So many live viewers watching this match. This time just flicked away. Just flicked away without power, just pure timing. And there's a man in the deep, so he's just considering a single in that region. That will finish over number 5. Score is 53 for the loss of 2 wickets. Playing very, very sensibly at the moment. Vicky and Sanjay not trying to take any risk whatsoever. Sanjay has been slightly subdued. He is slightly slow. He knows that he just have to stay on the wicket, and his time will definitely come to score the big ones. Whereas Vicky was the more aggressor in this partnership. He scored 3 sixes and a couple twice. That will finish 5th over on a high note here for Shanta Durga T of Kurcharem. It's 53 for the loss of 2. 27 runs required in 18 balls at asking run rate of 9 runs per over. With wickets in hand, you can see from 60% in the previous over, I think they have moved on to 75% as the win predictor for the side Shanta Durga T at the moment, with last 3 overs to be bowled. So Pritam Bari and Harjat Matonkar has to do something magical, or at least the fielders or the bowlers have to do something unimaginable and take wickets. If they are not taking wickets, if they are not taking the chances, I think the match might be well over in the 7th over itself. So now I'll leave the commentary box, and Ashok Naik will update you further in the next 3 overs, where just 27 needed to score for Shanta Durga T to enter into the finals to play against Sui cricketers. But there is still a match on. There is still a fight back. We have to wait for that fight from STB Karapur. थैंक यू सर, हरीश सर, धन्यवाद। 3 ओवर का खेल बाकी, 27 रन मैच को जीतने के लिए। और सामने संजय नाइक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल रुक कर खेल रहे हैं, संयम के साथ खेल रहे हैं संजय नाइक। बहुत अच्छी गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, थोड़ी सी गेंद नीचे रही और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। लतीफ गेंदबाजी कर रहे, सामने 2 बल्लेबाज, एक और से जो कि संजय नाइक खुद के व्यक्तिगत 5 रन पर, और राजेश बल्लेबाज प्रजेश उर्फ विकी। छोटी गेंद इस बार हुक्का गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई सी मार्का से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे देखिए, बड़े देर के बाद एक बड़ा शॉट निकला बल्लेबाजी में संजय नाइक के, और इस बार पुल किया गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, और एक बेहतरीन शॉट, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे स्कोर आगे बढ़ा 63 रन पर, 63 लॉस ऑफ 2 विकेट।
17 रन चाहिए। और बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आरिश सर ने बहुत ही सही बात कही थी, 90-95 का टोटल होना चाहिए था मैच का। एक बार ड्राइव किया गेंद को सामने अपने फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड करते लतीफ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुकवा 63 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रजेश और विकी नाइक जो नॉन स्ट्राइकर, इन पर उनके बल्ले से अब तक 3 छक्के और 1 चौका 1 छक्का लग चुका है। संजय नाइक जो स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं आने वाली अगली गेंद का। ऑन साइड पर खेला इस बार, देखना होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो, लेकिन 1 रन देने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 64 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला सेमीफाइनल थोड़ा सा एक तरफी रहा था, ये दूसरा सेमीफाइनल और शायद थोड़ा सा मैच 19-20 का मैदान पर दिखाई दे रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। प्रजेश उर्फ विकी नाइक स्ट्राइक पर और बॉलिंग बार पर लतीफ अगली गेंद लेकर। और पुल किया इस बार, गेंद को हवा में शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर जी एन मौके पर विकेट मिला, तो फिर से मैच ऑन हो गया मैदान पर। एसटीपी कारापुर क्रिकेट टीम कोशिश अभी भी जारी है मैदान पर, एक अच्छा विकेट और प्रजेश उर्फ विकी नाइक 3 छक्के लगाए उन्होंने, 24 रन बनाए खुद के व्यक्तिगत, 3 छक्के की बदौलत सफलता मिली लतीफ को। और जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर, तब तक सुनते हैं हमारे एस बीट डीजे। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 64 रन, 3 विकेट पर। बिल्कुल कड़ी धूप है, सूरज माथे पर है, अंपायरों को भी दाद देने पड़ेगी इतनी कड़ी धूप में। और उन्हीं के साथ हमारे बॉल बॉयज तेजस है, तेजू आपको भी धन्यवाद देने पड़ेंगे। बिल्कुल आपका भी योगदान बड़ा है दोस्तों। ओ हवाई फायर, क्या मौका बनेगा अपने फॉलो थ्रू में, गेंद के नीचे, ओ क्या छूटा, बहुत अच्छा मौका था मैच का ये, शायद बिल्कुल बेहतरीन टूर्नामेंट का एक बेहतरीन कैच हो सकता था। हर्षद मातोंडकर खुद के फॉलो थ्रू में, लेकिन शायद थोड़ा सा घूम गए गेंद के साथ मैदान पर। 2 रन बन गए स्कोर के खाते में, 12 गेंदों में 16 रन, शायद कैच को पकड़ते तो 11 गेंदों में 16 रन। संजय नाइक स्ट्राइक पर और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, पुष्पशील देसाई उर्फ पॉपे। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, शायद जिस तरह से रिएक्शन थी हर्षद मातोंडकर की, लग रहा है कि कुछ ना कुछ करीबी मामला था। गेंद और बल्ले के बीच में विकेट कीपर के हाथों से गेंद फिसली, लगातार 2 मौके बिल्कुल निकले थे। 10 गेंदों में 14 रन, 10 चेंडूत 14 धावा, 10 गेंदों में 14 रन, बिल्कुल अच्छा मैच हो रहा है मैदान पर। ओ ये मौका और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बारी बारी अब प्रीतम बारी, डीजे
गेंदों का खेल 14 रन। मैच को जीतने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर धीरज भोईर। 7वां ओवर जारी है, बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। यहां से लेकर बिल्कुल एक गलती मैच में महंगी बनेगी दोनों टीमों के लिए। देखना होगा 9 गेंदे 14 रन। हर्षद बातोनकर अपने टीम को ठीक ठाक कर रहे हैं। विकेट कीपर के साथ एक स्लिप है, एक डीप कवर पॉइंट, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट पैन लेग। ये फील्डिंग की जमावट मैदान पर। 9 गेंदे 14 रन। अच्छी गेंद, थोड़ा सा आपेश खेला जरूर था। मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 13 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए और गेंदे बची है 8 गेंदों में 13 रन, 8 चेंडूत 13 धावा। और अल्टी पल्टी की कोशिश, फुलरलैंड की गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार ओवर करते हुए गेंदबाजी में हर्षद मातोंडकर। खुद का दूसरा, टीम का 7वां ओवर। खेल बाकी 7 गेंदों का अभी भी। आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया। इस बार फील्डर है मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए बेल्टर, रनआउट का खतरा। ओ शायद बिल्कुल शानदार फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, अच्छा थ्रो, कोशिश बड़ी आ रही थी। 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर के बाद टोटल 69 लाख। सर बिल्कुल ये सभी पैनल का मुकाबला जारी है। क्या सुपर ओवर का मैच देखना होगा, आने वाला समय बताएगा। 6 गेंदे 11 रन, 2 ताकतवान, 2 बिल्कुल बेहतरीन टीम आमने सामने दोपहर के सत्र में। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर और गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में आ चुके हैं सामने सचित। सचित आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने स्ट्राइक पर धीरज भोईर और उन्हीं के साथ पुष्पशील देसाई। 6 गेंदे 11 रन, फील्डिंग को ठीक ठाक कर रही है। एक कांटे का मुकाबला दोपहर में एसटीपी कारापुर क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ शांता दुर्गा कुड़चोड़े क्रिकेट टीम मैदान पर आमने सामने। निराश किया था पहला सेमीफाइनल के मैच ने, लेकिन ये मैच बिल्कुल देखना होगा कहां पर समाप्त होता है। सहा चेंडूत 11 धावा, 6 गेंदे 11 रन। सामने सचित अपने बॉलिंग मार्क पर, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक थर्ड बैन बाउंड्री पर, एक शॉर्ट कवर पॉइंट पर, एक एक्स्ट्रा कवर। ये 4 फील्डर। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर। बिल्कुल सर जसप्रीत बुमराह की याद आ गई। क्या यॉर्कर था ये, सटीक यॉर्कर था। बल्लेबाज को बिल्कुल मजबूर किया। आखिर में गेंद बल्ले पे आके टकराई और विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो एक बिंदी गेंद, एक डॉट गेंद के साथ सचित अपने बॉलिंग मार्क पर। आखिरी ओवर 5 गेंदे और 11 रन अभी भी। 5 चेंडूत 11 धावा सामना जिंकण्यासाठी। ये शॉट लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। 1 रन, दूसरे रन का मौका मिलेगा और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट जरूर था, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर बिल्कुल फील्डर कोई मौजूद नहीं था। जो था वो लॉन्ग ऑफ पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट। 2 बहुमूल्य रन स्कोर में और 2 रन के साथ खेल बाकी 4 गेंदों का और 4 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 9 रन।
4 चेंडूत 9 धावा। दोनों टीमों के बहुत सपोर्टर मैदान पर अपने टीम के साथ। और छोटे गेंद पुल किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर। एक छोटी गेंद पुल किया इस बार और मिले 4 रन स्कोर में। डीजे गेंदे 5 रन, सचित बॉलिंग मार्ग पर और सामने बैटर है धीरज बोहिर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, शायद डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात फील्डर, एक गली, एक कवर पॉइंट, 3 गेंदे 5 रन, सचित बॉलिंग मार्ग पर। और धीमे फेंके स्लॉक से मिड विकेट पर, गेंद चली गई डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। और इसी के साथ फाइनल में प्रवेश करती हुई मैदान पर शांता दुर्गा कुड़चोड़े क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा मैच रहा, एक ओवर पिच गेंद, उसी पर मुकाबला समाप्त हुआ। लेकिन बिल्कुल हरीश काकोडकर सर सही जानकारी दे रहे थे, जो 80 का टोटल था तब वो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात थी, 90-95 का टोटल होना चाहिए था। 10 रन पीछे हो गई और यहाँ पर रुकना पड़ा, तो थैंक यू। आज 2 सेमीफाइनल का मुकाबला समाप्त। और चलिए हमारी स्कोरर के साथ चर्चा हुई और आखिरकार मैन ऑफ द मैच, बस वही नाम, प्रजेश उर्फ विकी नाइक। 3 छक्के बल्लेबाजी में लगाए, शानदार बल्लेबाजी रही, 24 रन बनाए और गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए। तो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया प्रजेश उर्फ विकी नाइक ने। मैच को जीतती हुई शांता दुर्गा कुड़चोड़े क्रिकेट टीम। तो एसटीपी कारापुर, आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आपके लिए टोकन ऑफ लव वो भी दिया जाएगा पहला, और उसी के साथ मैन ऑफ द मैच वो भी दिया जाएगा प्रजेश उर्फ विकी नाइक को। एक बहुत अच्छा मुकाबला समाप्त रहा। सेमीफाइनल का छोटा सा ब्रेक है और उसी के साथ एक 20 मिनटों का ब्रेक है और उसी के साथ फाइनल का मैच खेला जाएगा।
विकीन त्या खातीर ताका प्लेयर ऑफ द मॅच ह्या मॅचीक दिलें वता. तर सेमीफायनल बरी जाली पण ज्या तरेन तुमी क्वॉर्टर फायनल पर्यंत पाविल्ले खेळ बरो केल्लो STP कारापूर संघान तुका कितें दिसता टर्निंग पॉयंट कितें जालो स्कोर कमी जालो काय तुमी विकेट्स जर तर कन्सिस्टंटली काडिल्ले जाल्यार जिखपाक शकताले. सांगचें म्हटल्यार स्कोर पयलींच आमचो मातसो डावन जालो सो थंयसरूच मातशी गेम लूज पडली तरी आमी कमबॅक केलो बॉलिंगेन आनी बरी फायट दिली. आणि सेमीफायनलीक म्हाका दिसता जेन्ना 4 संघ जवळपास 30चे वयर संघ हांगा पार्टिसिपेट जातात तातूंत भितर 4थ्या संघा भितर तुमी सेमीफायनलीक प्रवेश केले म्हाका दिसता एक मोठी गजाल मुळी चषक हातूंत भितर सगळे ज्या गोंयच्या वाठारांतले टिमी आसात ते पार्टिसिपेट करतात आनी तुमी बरे खेळ घडोवन सेमीफायनलीक पावले तो एक पॉझिटिव्ह पॉयंट आसा तुमचे खातीर. हय सेमीक पावप सुद्दां व्हडली गजाल हरपाचें आनी जिखपाचें आसतात ते सोडून दिवप नेक्स्ट टायम आमी आनी इम्प्रुवमेंट करतले आनी ट्राय करतले हो टायटल व्हरपाक. आणि ऑर्गनायझरा खातीर 2 शब्द ज्या तरेन ते मेहनत घेता इतली कश्ट घेता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती तो उत्सवय बरोबर घेतात आणि क्रिकेटय बरोबर करतात एक आगळे वेगळे अशें तुमकां दर्शन हांगा पळोवपाक मेळटा सो तुमकां ऑर्गनायझर्सां बद्दल कितें सांगपाक जाय. ऑर्गनायझर्स म्हटल्यार ग्रावंड बरो वेल मेंटेन केला तशीच पिचूय चड बरी केला आनी ऑर्गनायझर्स टोटल कॉपरेट आसा सगळ्या टीम. देव बरें करूं. हे आशिल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह जे STP कारापूर संघाचे जे सेमीफायनलाक भायर पडले आनी फायनलाक प्रवेश केल्लो आसा शांतादुर्गा टी कुडचडेच्या संघान आनी प्लेयर ऑफ द मॅच विकी यो आनी तुजो प्लेयर ऑफ द मॅच घेवन वच. एक नामनेचो असो ऑलराउंडर गोंयचो आनी कुडचडे वाठारांतलो जाणें भरपूरशीं इनामां फावो जाल्या ताका आनी आज परत एकदा प्लेयर ऑफ द मॅच सेमीफायनलाक जेणे करून आपल्या टिमीक फायनलीक घेवन गेला.
मंत्री भोवमानेस्त गोविंद बाब गावडे हांगा पाविल्ले आसा. आमी रिक्वेस्ट करता सरा लागीं आमचे जे फायनल खेळटले ते दोन्ही टिमी तुमकां रेडी आसात हांगा. आनी ज्या तरेन तुमकां खबर आसा की गोंयाक व्हडा मान मेळिल्लो असो नॅशनल गेम्साचे यशस्वी रित्या म्हाका दिसता ऑर्गनायझेशन करपा खातीर अख्ख्या गोंयकारांनी गोविंद बाब गावडेचे कौतुक केल्ले आसा. आनी सरान आमचो मान वाडयल्लो आसा, गोंयचो मान वाडयल्लो आसा. नॅशनल गेम्स यशस्वी रित्या ऑर्गनायज करून आमी येवकार करतात तुमकां सर ह्या फायनलाच्या सोहळ्याक. आनी आतां टायम आयिल्लो आसा कॅप्टन आनी दोनी टिमीक ग्रीट करचो. तशेंच गोविंद सरा बरोबर प्रशांत बाब भंडारी, विशांत बाब नायक, दयानंद बाब भगत आनी बाकीचे मानेस्त आमगेले बरोबर आसात. सरपंच, पंच मेंबर, ऑर्गनायझींग मेंबर आनी सगळे हांगा जे आसात तांकां ग्रीट करतात आमचे क्रीडा मंत्री. जशें तुमकां सांगिल्लें की कला क्षेत्र आनी सांस्कृतीक क्षेत्र तशेंच क्रीडा क्षेत्र हे जे आसा जे युथाक लागीं आसा. यूथ सदांच त्या फिल्डा भितर लागीं वतात, चड पार्टिसिपेट जाता, भागीदार जाता आनी हें इम्पॉर्टंट क्षेत्र भुरग्यां खातीर आनी तें म्हाका दिसता यशस्वी रित्या सद्या हँडल करता आमचो गोविंद गावडे सर. आनी ते हांगा फायनलीक मुद्रत हजर रावल्या. मुली चषक एक गोंयचो नामनेचो असो टुर्नामेंट जांगा सगळे गोंयच्या राज्याचे अख्खे प्लेयर जे क्रिकेट खेळटात ते हांगा खेळटात आनी ते आपल्या खेळाचें प्रदर्शन घडयता. आनी लास्टाक 15 तारखेक हो सुरू जाल्लो म्हणल्यार 5 दिसाचो गोंयचो एक बरो क्रिकेटीचो फेस्टिवल म्हणपाक जाता असो मुली चषक आज सगळे टिमी बरोबर फोटो काडटले गोविंद गावडे सर. खास करून आपली उपस्थिती ह्या टुर्नामेंटाक लायिल्ली आसा, फायनलाक आयिल्ली आसा. आनी आमी अंडरस्टँड करता की सराचो शेड्यूल बिजी आसता तरी पूण तांणी सगळ्या जे पळय क्रिकेट मोगी आसा आनी खास करून अख्ख्या गोंयच्यान हांगा आयिल्ले क्रिकेटर्स तांकां हांगा आमकां भोवमान केलो आसा, आमचो मान राखिल्लो आसा आनी आयिल्ले आसा आवर्जून उपस्थिती. तर आतां
So here. Hello, hello. Test, test, test. Test. Hello, hello. Test. Test 1. Testing, test, test. Test 1. Yes, umpires, we are ready. Now it's time for the grand finals of the season 5 edition of Muli Chashak, organized by McLaren Sports Club. Wonderful atmosphere on the ground and lots of players, not only here from Cumbarjua, but people are viewing live across the globe to watch the finals between Shanta Durgati of Kurcharem versus the Tuvi cricketers of Sakwal Village Panchayat. Here comes Vicky Naik to bowl the first ball. As defensively played. And this is finals. You can expect a little bit of nerves going in the minds of all the batters, bowlers. The fielding needs to be good. आम्ही होकार करता सिद्धेश श्रीपाद नायक हांका झेडपी मेंबर खोल्लीचे तशेंच नॉर्थ गोवाचे चेअरमॅन अशें म्हणपाक जाता आनी ताच्या बरोबर बाकीचे सरपंच पंच मेंबर सदस्य हांगा पाविल्ले आसा. आमी फायनलीक तुमकां हांगा येवकार करता कमेंट्री बॉक्सा कडल्यान. तर ही फायनल आता सुरुवात जाल्ली आसा. आमचे सगळे मानेस्त हांगा तांणी आवर्जून उपस्थिती लायल्या. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी तुमचे मानाचे स्थान तुमकां दवरिल्लें आसा थंय बसका घेवची आनी हो फायनलीचो आस्वाद घेवचो. Trying to heave the ball. So starts off very well here. Vicky has been one of their prime bowlers. It is not easy to be bowling in the power play overs. तशेंच क्रिकेट जो आनी एक मोगी जो सदांच टिमी घालता क्रिकेटर्सांक सपोर्ट करता असो मिथुन बाब वैद्य म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या एक स्वरुपान हांगा आयिल्लो आसा. ताणें वेशभूषा केल्ली आसा. बरें दिसता मिथुन बाब. ज्या प्रमाणे कला आनी संस्कृती हो एक डिपार्टमेंट हो एक क्षेत्र जो आसा तो सामको गरजेचो आसा. आमी येवकार करता रोहन बाफरवळकर हांकां ताणी ते हांगा आयिल्ले आसा फायनलीक आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी मूर्ती आसा तांकां हार अर्पण करतले आनी ताच्या नंतर तांकां तांचे मानाचे स्थान जे माचेर दवरिल्ले आसा थंय येवन बसका घेतले. 3 dot balls in a row in the finals. What a start from Vicky Naik. Certainly putting the batting side under pressure. Azim now needs to break these clutches. Short ball pulled away. Not comfortable. Absolutely not comfortable in playing the pull shot. He should have been back and across. Now he's moving for the second. He's feeling the pressure. He's feeling the heat in the finals. And that's run out. This was not required at all. There was absolutely no run in it. This is a suicidal run and a wicket at the non-striker's end. Azim was feeling the pressure and he has to succumb to that pressure created by the fielding effort of Shanta Durgati, and the first wicket down for the loss of 1 on the board. So in the finals, you can imagine, starts off with 3 dot balls. It's just 8 overs. 8 overs. This is a flat batting deck. Absolutely no mercy for the bowlers. We have witnessed a score of 138, which is the highest total in just 6 overs. So you can imagine in 6 overs, if you can score 38, what sort of mindset will the bowlers have? They will be battered and bruised in the bowling department. The figures will be all in a jittery.
And you can see the way they are playing. They are trying to have a defensive mindset against Vicky. They know he is the danger man. He is the one who gives them the early breakthrough, early wickets. And Vicky has that cunning neck of a smart bowling, and he bowls at leg cutters and off cutters as well, which is almost at the last moment. So it's very difficult for the batters to pick it from the hands, and that's where they are struggling to get runs against Vicky. 2 for 1 in the first over. Here comes the last ball of the first over from Vicky Naik. A packed field on the offside, 2 fielders on the leg side close to the boundary line, long on and mid wicket region. As trying to actually heave it away towards the mid wicket, getting towards the long on, gets a single. So dealing in singles at the moment in the first over, not a single, 4 and a boundary. Score is reeling at the moment after completion of first power play over is 3 for 1 at the end of 1. And have got messages not only from Goa, but I'm telling you, ladies and gentlemen, people from Dubai, people from UAE are also watching Muli Chashak finals. As right now, through the internet and through YouTube, anyone can watch it anywhere. And Photosonic is giving you the live coverage of this telecast of Muli Chashak 5th edition. And it's now played between two teams, both teams hailing from South Goa region. One from Kurcharem municipality, one from Sakwal village panchayat, battling against each other to be crowned as the champions of this 5th edition of Muli Chashak, organized by McLaren Sports Club. What 5 days we have witnessed. Finally, we have come down to 2 teams, almost more than 35-40 teams participating, starting from 15th of February. And here we are coming to the end, the conclusion part, and the championship is eluding. Yes, should be a chance. Taken! Is taken! Although it's not Sarfaraz Nawaz, but it is Anil who has to depart. So second wicket and on a roll at the moment, the team from Kurcharem. तशेंच तुमकां खबर आसा की ज्या तरेन ह्या टुर्नामेंटाक डिसिप्लीन आनी कायदे जे आसा तुमी सगळ्यांक फॉलो करपाक जाय. एक गोंयचो नामनेचो टुर्नामेंट. हांव रिक्वेस्ट करता दोन्ही सपोर्टर्स जे आसात शांतादुर्गा आनी टू क्रिकेटर्स मातशे फाटल्यान सरचे. बाउंड्री रोप जो आसा ताच्या लागीं रावपाचें ना कोणें, मातशे फाटल्यान सरात. So Sanjay Naik starts off with a wicket in his first over in the finals. That's nicely bowled, just outside the off stump. This is good length here, very good length. And I think that was a right thing to throw and shy at the stumps, because the man who is in prolific form, getting more than 150 runs in the competition so far as batting is concerned, leading run getter in this competition. Sarfaraz Nawaz, the man in form, and they need to get him early. They need to see his back early. All the 2 wickets are already back in the pavilion, but till Sarfaraz Nawaz on the wicket, 2 cricketers will be very hopeful of a big total. This time it is bowled wide, so left all alone. Just like how Muli Chashak is one of the biggest, there is also one big announcement of the competition that is going to be organized by Ganpati Warriors, 8th All Goa Panchayat and Municipality level 6 overs tennis ball championship trophy 2024.
Mega prize of 2 lakh plus the Crystal Trophy. Runners of 1 lakh. Semi losers 30,000. Once again. So back to back wide here. The idea is we have to wait for the umpire's signal. He wants to whether confirm it, whether it is a no ball or whether it's a wide. He is going towards where the ball had been delivered, and he wants to see the mark, whether it's a no ball or whether it's a wide. It's a wide, says umpire, and that's the final decision from umpire Nilesh Parsekar. So I was talking about Ganpati Warriors. Ganpati Warriors वर्ल्ड टुर्नामेंट एक बरो टुर्नामेंट जाता जो 6 मार्च ते 10 मार्च दारबांदोडा पंचायत ग्राउंड दारबांदोडा हांगा जातलो. आणि जर कोणाकय संपर्क करपाक जाय जाल्यार दत्तराज गांवसाक संपर्क करपाक जाता 7350856958 असो एक मोठो टुर्नामेंट जो फुडल्या म्हयन्याक जातलो. ताच्या पयलीं मुळी चषकाचे फायनल. So trying to heave away on the leg side. So far it's a mix over, getting 2 wides. Sarfaraz Nawaz also not gone for the big shots that he's famous for. But there will be a point. There will be a point when these batters have to go after the bowling, as they'll be hopeful to get somewhere around 90 to 100 in the finals. That's in the air. That's going to be a big wicket. And it's taken. Sarfaraz Nawaz departs. The big fish has been taken by Sanjay Naik. 2 big wickets in this over. And at the moment, 2 cricketers are reeling with a score of 6 for the loss of 3 wickets. And it's going to take lot more than courage, lot more than the zest that is required. And it is going to be the pressure that will be piled upon by the bowlers of Kurcharem against the Sakwal players. Let's see how it turns up in the next 2 overs. Taken, and that is going to be the most important wicket, ladies and gentlemen. The Demon and Devil are yet to come. Riaz and Darshan Bandekar are still in the dressing room. Is the time Sarfaraz Nawaz feels that this is not the right time to get them. Right now, the pressure has been piled upon by the bowlers, and maybe somewhere around the 4th or 5th over, we can see the entry of Riaz or Darshan Bandekar, if at all a wicket falls here. So there is a certain planning here from the camp of 2 cricketers. Things have not gone the way they would have thought in the first 3 overs. In fact, 2 overs. And that's a very good finish to the over. 2 back-to-back good overs here from the bowlers of Shanta Durgachi from Kurcharem. It's just 7 on the board for the loss of 3 wickets in 2 overs. Of 3 is the score at the moment in 2 overs, and as usual, as is the scenario that we see almost every time, Vicky Naik, after bowling the first over, will continuously bowl his quota of 2 overs, the first and the third one, and he certainly always goes to pick up wickets. He is the wicket taker bowler, not a defensive bowler. And he will place the fielders in the right positions. In tennis ball cricket, normally the fielders in the deep, people feel that it's a defensive approach. It's not. If you place the fielders in the right position, and if you bowl the cutters, and you know exactly the spot where to bowl against a particular batsman, then those fielders become attacking players, attacking fielders, where the catches will definitely come in the deep.
Oh, this is actually a very good ball. Nothing short whatsoever. He was well into the shot way too early. And he gave a sign, gave an intention to the bowler that I'm going for the switch hit. And the intention should be little late. It should not be early. Invitation should not be given to the bowler here that I'm going the reverse way. That's lovely piece of bowling. Good backup delivery after that quick off cutter from Vicky. And that's always what I say to the bowlers. In tennis ball cricket, it is very hard to not go for sixes for a bowler. You got to be unpredictable. Unpredictable nature. You should not tell the batsman that I'm going to continuously bowl in the Yorker line. I'm going to bowl a particular hard length or the three-quarter length. You should be just unpredictable in the game of tennis ball cricket. And that's what Vicky Nice does most of the time. He just bamboozles the batsman with his line and length and with the variations that he has, the leg cutters, the off cutters, the Yorkers. Charismatic approach from the computer cricketer of Kurcharem. Ah, that's a lovely pickup shot. Beautifully picked up on the leg side towards the square leg region for 6 runs. That's the first 6 in the finals coming from the bat of Deepak. But better late than never. That's in the air. That might be a chance. Fielder coming from long on region. And yes, it is Bablu. Bablu takes it cleanly. So another one bites the dust here. And they are going one after the other. It's 14 for the loss of 4 wickets. Scorecard at the moment not looking good for Tuvi cricketers. And they are piling the pressure. Shanta Durga T bowlers taking wickets almost successively in quick this time played down the ground. It is Riaz now. So Riaz had been brought here and this was the right time. There is no point in keeping the big man a little later. He is a man who had hit 4 sixes in the previous game, the semi-finals. And 2 years back, I still remember that moment when I was in the commentary box and Riaz had hit 6 sixes of 6 consecutive balls here in the Muli Chashak season 3 edition. He was viral and he was famous after that big run machine by him. He is really a big guy. Certainly the sixes are not going to be very difficult if he gets somewhere around the mid of the bat. Another good over here from Vicky Naik. Very economical, just conceding 1 6 and picking up a big pot dot wicket as well. 3 overs gone in the finals of the first innings is 16 for the loss of 4 wickets.
So now this is the fourth over. So Vicky Naik bowled the first 2 overs, first and the third one. So Sanjay is also continuing with his spell. So still at this point of time, third bowler has not been opted here by Chanta Durgati of Kurcharim. They are going with their top 2 performance so far. Once again, they are trying hard to get the boundaries and sixes, but it's not happening for them at the moment. And I don't understand the mindset of many of the teams nowadays, that they are all dependent upon the toss. And if they win the toss, they elect to field first and think about chasing. And if someone loses the toss and gets to bat first, it's most of the times it plays in the minds of the batters. This is a new thing that is happening in cricket nowadays, but Riyaz it is. Look at the big flow. That's a mighty heave from the mighty man of Sakwal. Riyaz it is, the run machine, the demon with the bat in his hand. Entire complexion of the match in the previous game, the semi-finals, it was also the same way, but then he pumped up and played some big shot, 4 sixes on a trot, and you can see immediately after the 6 which was in the slot, Sanjay Naik had changed his length and changed his line. He's bowling little bit back at the moment and bowling is slightly wide, not bowling in the arc of the big man. This is a top edge. This might be lucky boundary. This is just a lucky boundary. This is quick outfield. Absolutely no stopping there once he crosses the inner ring. So Riyaz getting a 6, then a boundary here. This time a missed opportunity here, trying to bowl down the leg side. Even if it had got bat onto that, maybe he could have run down towards the fine leg for 4 runs. These are sometimes easy pickings, but as a batter, you are not sure whether the next ball it was going to be a full toss or not. Full toss is sometimes a surprise. You got to be ready for that. That's nicely cut away. That's nicely cut away. This is beautiful shot here. Square cut going towards the short third man region, and no chance for the fielders in the short third and the backward point region. So a 6 and 2 boundaries coming in this over, turning out to be expensive. And slightly now we can see the momentum is shifting. Momentum is shifting at the moment in this over. Is going to 33 the score, which was reeling somewhere around 17 and 20. And now it is getting a little bit of shape here. Good mold, especially from the bat of Riyaz, and giving pretty good company here by Sangamesh. Ah, that's a lovely shot. Innovative and creative. That what is required in the game of cricket, and it's a skillful tactical ploy. We can say for Sanjay Naik, and with the completion of halfway mark of the first innings of the finals, 4 overs gone, the score is getting in a pretty good shape. It's 37 for the loss of 4 wicket. Interestingly, the match is poised at the point of the time when we are yet to witness the entry of the terminator of Malwan, Darshan Bandekar, who has scored 5 sixes of 5 balls, and then he respected the bowler not to score a 6 of the 6th ball. And that is where everyone on the ground clapped for that wonderful gentleman's gesture from Darshan Bandekar. He could have gone for that 6 of 6 ball. He would have got the glory. He would have got the name. He would have got the fame. But he didn't get. He didn't take it.
he just respected the bowler, understanding what his mindset is going to be if I go here for 6 sixes against 6 balls of his bowling. And sometimes it is very devastating for a bowler when you see yourself being hit for 6 sixes. But then he stopped himself, stopped his instinct, and stopped himself by giving a dot ball of the last ball. So that's where everyone clapped here. So that man is yet to come on the wicket, and that is where two cricketers will be hopeful to see a score of somewhere around a projected score of 80 might be turning into somewhere around 9500, which might be a very good total in the finals. So for the next 4 overs, to tell about the fag end of the innings or the second half of the innings, is over to Ashok Naik sir, is a senior commentator in the commentary box. And the match with Riaz on the wicket and Darshan Bandekar yet to come on the crease is very interestingly poised. Keep watching Muli Chashak Season 5 finals. Lots in stake to be crowned as the champions. It's not easy to grab your hands on that wonderful, wonderful trophy. You need to work hard, toil hard, and get your talent from beneath to rise up the ranks and power it to the championship. थैंक यू, धन्यवाद हरीश सर। पहली गेंद पर चौका लगाता हुआ, जो कि 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, गंदार आ चुके गेंदबाजी पर, और गंदार की पहली गेंद पर स्वागत किया बड़े शॉट के साथ। रियाज 4 के साथ आगे बढ़ाते हुए टीम को स्कोर पहुंचा 41, 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत थी शुरू में, लेकिन वहीं से लेकर रियाज आ गया, और पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित रहा। 21 रन बने संजय नाइक की गेंदबाजी पर। 5वां ओवर जारी मैच का, और इस बार हाफ वॉली पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर को बीट करती हुई गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। अंतिम मुकाबला फोटोसोनिक प्रोडक्शन के ओर से, जो कि यूट्यूब पर लाइव प्रसारण, बहुत ही अच्छी साउंड सिस्टम एस बीट, जो सार्थक, शाश्वत और सूरज ब्रदर्स, सावन ब्रदर्स, जिनकी जो कि एस बिट साउंड सिस्टम, और रियाज साहब ने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, जो शुरू में दबाव था वो थोड़ा सा हटा चुके हैं, और एक चौका लगा उनके बल्लेबाजी में, और 45 रन टोटल 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चलता हुआ मैच का। इस बार हाफ वाली पर लेकर फिर से एक बार, लेकिन फील्डर है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन और जुड़ गया। पहला ओवर अच्छा रहा था विकी का, उसके बाद अच्छा ओवर संजय नाइक का, लेकिन तीसरे ओवर में 21 रन बने, और चौथे ओवर में जो कि संजय नाइक के रन बने, और वहीं से लेकर आगे बढ़ी, क्योंकि अच्छे विकेट सरफराज आउट हो चुके थे, अजीम, संगमेश, अनिल, और रियाज जब मैदान पर आए तो बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके साथ मैदान पर संगमेश, फुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा अंपायर का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। थोड़ा सा मैदान पर फुटबॉल देखने को मिला, लेकिन सही सलामत दोनों बल्लेबाज एक सिंगल बनाते हुए 46 टोटल, 46 रन। 5वां ओवर जारी है, 9 रन के साथ रन बनाते हुए मैदान पर। मुकाबला फाइनल का, एक ओर से तुवी क्रिकेटर्स साकवाल क्रिकेट टीम, तो दूसरी ओर शांता दुर्गा टी कुड़चोड़े क्रिकेट टीम। टीम के ऑनर है सर प्रणय गावकर। स्ट्राइक पर रियाज सामना करते हुए अगली गेंद का गंदार अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ। इस बार बैकफुट पर कट के बड़े खूबसूरती के साथ, और जब तक कवर पॉइंट बाउंड्री पर डीप पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन बड़े आराम के साथ। बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं रियाज। मालूम है अभी भी पीछे गेंदों का बहुत खेल बाकी है, ज्यादा विकेटें नहीं है जो खेमे में बिल्कुल दर्शन बांधे कर, लेकिन उससे पहले शायद सोच रहे हैं कि ये मैच आगे थोड़ा सा लेकर जाए, और आखिरी 2 ओवर में एक तोड़फोड़ की बल्लेबाजी और एक 80, 85, 90 का टोटल इस मैच में सामने वाले टीम के लिए खड़ा कर दी जाए। तो वी के ओनर है सर धर्मा चोडनकर। धर्मा चोडनकर सर, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। अल्टी पल्टी
थर्ड मैन बाउंड्री पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। डीजे और शांता दुर्गा टीम का स्कोर हो चुका है टोटल 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर के बाद टोटल 54, 54 रन टोटल। और गेंदबाजी में परिवर्तन, अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं गेंदबाजी शुरू करने के लिए धीरज भोईर। सामने बैटर है रियाज, 54 रन। आने वाले अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है, 18 गेंदों का। दोनों टीमों के ओनर बिल्कुल, एक ओर से सर धर्मा चौड़नकर तो दूसरी ओर से प्रणय गांवकर। दोनों का स्वागत है इस फाइनल के मुकाबले में। रियाज स्ट्राइक पर सामना करते हुए वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक थर्ड मैन पर ऑफ साइड पर, एक गली पर फील्डर है, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। यह फील्डिंग की जमावट है मैदान पर शांता दुर्गा टी कुड़चुड़े क्रिकेट टीम के। 5 ओवर 54, 54 रन। छठे ओवर की शुरुआत और बॉलिंग मार्ग पर धीरज भोईर। और एक बार लोअर फुल टॉस गेंद अच्छा खेला, ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ टोटल 55, 55 पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। पहला मुकाबला बड़े टोटल का, दूसरे में संघर्ष देखने को मिला कारापुर क्रिकेट टीम के साथ। और अब देखना होगा जीत की वरमाला किसके गले में पड़ेगी इस मूली चषक की। इस बार उड़ाया ऑन साइड पर, क्या मौका मिलेगा कैच का? डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर और बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द डे मैं कहूंगा। बहुत सुंदर कैच, बड़ी देर तक हवा में गेंद थी लेकिन बिल्कुल नीचे आए, नजर नहीं हटाई और कैच को तब्दील करते हुए संग में आउट होकर वापस 5वां विकेट खोती हुई तुवी क्रिकेटर साकवाड़ क्रिकेट टीम डीजे। फाइनल के मुकाबले में 3 विकेट पर 32 रन नाजुक स्थिति में, लेकिन वहीं से रियाज ने आक्रमण किया और रियाज का साथ दिया दर्शन बांदेकर ने और 100 से आगे निकली सेमीफाइनल में। अब भी मैं कहूंगा उतनी सुरक्षित नहीं है और मैदान पर आ चुके दर्शन बांदेकर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही शानदार, हल्के हाथों से ढीले हाथों से ड्राइव किया कवर पॉइंट पर फील्डर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे आते आते 2 रन के साथ अपने खाता खोला और 2 रन के साथ टीम को आगे लेकर गए। 57 पर पहुंचा टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अमन के साथ सर हरीश पारसेकर, वो भी बिल्कुल स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं। मैदान पर 2 अंपायर सर रूपेश गावस और उन्हीं के साथ नीलेश पारसेकर। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। शायद जिस तरह से माथे पर हाथ रखे थे बिल्कुल ऑफ स्टंप से करीबी मामला था। खेलना चाहते थे दर्शन बांदेकर, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चलेगी विकास देसाई उर्फ भाऊ के हाथों में। एक बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज है विकास देसाई और सामने दर्शन बांदेकर। उनके लिए एक बार फिर से धीरज भोईर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर।
और इस बार देखना होगा ये शॉट क्या दूरी पार कर सकेगी। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौका, ओहो क्या छूटा, दर्शन बांदेकर का क्या छूटा। बिल्कुल निराशा चेहरे पर सबसे हो गई, वो धीरज भोईर के चेहरे पर। मालूम है इस विकेट का मोल आने वाला समय बताएगा, ये मौका कितना महंगा साबित होता है सेमीफाइनल के मुकाबले में। ये कैच कहीं मैच हाथों से छूटना है दोस्तों आपके। संजय नाइक जो टीम के कप्तान बिल्कुल अच्छे फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छी गेंद, पीछा किया तो ऑफ स्टंप पर पुलर लेन की गेंद। बहुत अच्छा ओवर, एक सफल ओवर, निश्चित रूप से एक ब्रेक थ्रू था, एक बड़ा विकेट था, लेकिन बिल्कुल नसीब ने साथ नहीं दिया। क्या छूटा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के टोटल स्कोर 58, 58 रन 5 विकेट पर, 58 लॉस ऑफ 5 विकेट। स्कोर हो चुका है टोटल 58, 58 रन 5 विकेट पर। बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाजी धीरज भोईर की, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये विकेट बहुत मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, चंद्रेश आ चुके गेंदबाजी पर। 7वें ओवर की शुरुआत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रियाज और स्ट्राइक पर दर्शन बांदेकर। इस बार ओवर पिच, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। ये दोस्तों मैच में कोई बाधा ना हो जाए, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रन आपको गिनने पड़ेंगे मैदान में, ये रन गिनने पड़ेंगे दर्शन बांधे करके, जो आपने मौका उनको दिया है। चलिए छक्का लगा, 64 पर आगे बढ़ा टोटल 5 विकेट पर। और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर चंद्रेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रियाज और एक आक्रामक बल्लेबाज, और चंद्रेश राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। और बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन के ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, मुकाबला फाइनल का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ शांतादुर्गा टी कुड़चुड़े और तुवी क्रिकेटर्स साकवाल के बीच में। एक और से रियाज, एक और से दर्शन बांदेकर। बहुत अच्छी गेंद, हल्के से फ्लिक किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर। और जब तक मिड विकेट पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे, न तो ओवर पिच, न तो छोटी गेंद कर रहे, न शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं। बिल्कुल फुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों में, जो कि यॉर्कर लेन की ज्यादा गेंदबाजी, और लगभग सिंगल पर, जो कि पहली गेंद पर छक्का लगा और 2 सिंगल इस ओवर में। 7वां ओवर, चंद्रेश राइट आर्म राउंड विकेट और सामने दर्शन बांदेकर। पुल किया इस बार ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद थोड़ी सी तेजी के साथ आई बल्ले पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, स्ट्राइक एंड पर माफ के 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। और फिर से जो कि एक सिंगल पर ही रोकना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी, मेरे ख्याल से जो कि बीच में एक ओवर जरूर महंगा रहा, जो चौथा ओवर, जिस ओवर में बने 21 रन, 5वें ओवर में 17 रन, लेकिन फिर से कमबैक किया धीरज ने 4 रन देकर, एक विकेट भी चटकाया। ओ बहुत अच्छी गेंद, बल्ले से निचले हिस्से से लगी, टोस पर लगी, स्क्वायर लेग पर खुद निकले, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते,
एक सिंगल लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। देखो कितनी चौकरनी निगाहें दोनों अंपायरों के हर गेंद के साथ। और स्कोर हो चुका है टोटल 68 68 रन 5 विकेट पर। 68 लॉस ऑफ 5 विकेट, 68 रन 5 विकेट पर। सातवां ओवर और सातवें ओवर के आखिरी गेंद। और इस बार हवाई फायर कैच का मौका मिलेगा और इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं की संजय नाइक, अब बिल्कुल गलती नहीं की। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट, जल्दी खेल बैठे और दर्शन बांध देकर काफी निराशा के साथ वापस खेमे में लौटते हुए विकेट नंबर और चला गया। छठे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और आखिरी ओवर का खेल मैच का बाकी। डीजे एट 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लास्ट ओवर टू गो। चलिए कैच उतना महंगा साबित नहीं हुआ। कैच के बाद एक ही बड़ा शॉट लगा और आखिरी ओवर और नए बल्लेबाज मैदान पर दिलीप और बॉलिंग मार्ग पर धीरज बोईर। और बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में, विकास देसाई के। आखिरी अंतिम ओवर का खेल जारी मैच का और स्कोर हो चुका है टोटल 68 68 रन 6 विकेट पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही मैं कहूंगा शांता दुर्गा टी कुड़चुड़े क्रिकेट टीम के। ओ ये मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर विकास देसाई, रियाज आउट होकर वापस और एक धक्का लगा। 7वें विकेट का पतन होता हुआ स्कोर रुका हुआ 68 रन 7 विकेट पर। डीजे इस मैदान पर बहुत अच्छी गेंदबाजी धीरज बोईर की, बहुत शानदार स्पेल। फाइनल के मुकाबले में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और नए बल्लेबाज मैदान पर नंदेश। बहुत अच्छी लाइन पर एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था नंदेश ने। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे शांता दुर्गा टी कुड़चुड़े क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करती हुई। तुबी क्रिकेटर साकवाल बल्लेबाजी कर रही है। अंतिम ओवर का खेल जारी 68 रन 7 विकेट पर। फिर से एक यॉर्कर लेन की गेंद हल्के से स्लाइस किया, थर्ड मैन पर फील्डर एक रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा पैरों से जरूर रोका था लेकिन जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 70 रन टोटल। 7 विकेट पर 70 रन। आखिरी ओवर का खेल मैच का जारी। सामने धीरज बोईर गेंदबाजी कर रहे और बल्लेबाज है नंदेश, नॉन स्ट्राइकर इन पर दिलीप। मैकलन स्पोर्ट्स का आयोजन मूली चषक 5वां पर्व, 5वां दिन और फाइनल का अंतिम मुकाबला।
और पुल किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी देर के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे स्कोर हो चुका है टोटल 76। लास्ट बॉल टू गो, पहले इनिंग की 8वें ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। और बॉलिंग बार पर धीरज बोयर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, रन के लिए निकले, रनआउट का खतरा। जी बिल्कुल, स्क्वायर लेग पर अंपायर की उंगली आसमान की और रूपेश गावस उर्फ बालो। 8वें विकेट का पतन होता हुआ 8 ओवर का टोटल पहले खेल जो कि समाप्त हुआ। देखना होगा बल्लेबाजी रही जो पहले मैदान पर तुबी क्रिकेटर साकवाड़ क्रिकेट टीम की, सामने टॉस जीता शांतादुर्गा टी कुड़चोड़े क्रिकेट टीम ने पहले, और टोटल स्कोर जो कि स्कोर बोर्ड पर 76 यानी 77 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, खास करके धीरज बोयर ने अपने दोनों ओवर का कोटा किफायती गेंदबाजी की। जरूर उनकी गेंदबाजी की हम चर्चा करेंगे। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, उन्होंने दो की अपने गेंदबाजी में टोटल 12 रन और विकेटें चटकाई 3। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 12 रन 3 विकेट, बहुत ही शानदार जो कि गेंदबाजी रही। टारगेट 77 का छोटा सा ब्रेक के जरूर है, लेकिन उससे पहले कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। हॅलो हॅलो तशें तुमकां आतां खबर आसा की जशी फायनल सुरवात जाली तशेंच गोंय राज्याचे कला संस्कृती आनी क्रीडा मंत्री भोवमानेस गोविंद बाब गावडे सर हांगा पाविल्ले, तांणी सगळ्यांक विशीस दिल्ले। आनी आतां ज्या तरेन तांणी फर्स्ट इनिंग्स सारकी अशें पळयल्ली आसा आनी मॅचूय बरी इंट्रस्टींग आसा। फायनल एक स्कोर डिसंट आसा, चड ना, पूण फायनल बरी जावपाक शकता। तशेंच ऑर्गनायझर्सा तर्फे आतां एक फुलांचो येवकार करपाक आमचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री भोवमानेस गोविंद बाब गावडे सरांक दितलो विकी बाब परब। आनी येवकार करता तुमकां सर आमी ह्या टुर्नामेंटाक फायनल सर्तीक। तशेंच फुडले सुवातेर रोहन बाब भरमळकर हांचोय बी आमी येवकार करतात हांगा। रोहन बाब खास करून हांगा आयिल्ले आसा, क्रिकेट मॅच पळयतात आनी रोहन बाब हो आमचो जो फुलांचो येवकार आसा, परमळीत येवकार, तो तुमी स्विकारचो। तर आता फायनली कडे वळया। जशे आमी पळयतात की फायनल आसा, 77 रनाची गरज आसा। जो जैतिवंत जातलो, जो चॅम्पियन जातलो ह्या 5व्या पर्वाक, ताच्या पयलीं हांव सदांच म्हणटा की ऑर्गनायझींग करप हें खूब डिफिकल्ट काम, कारण थोडे ऑर्गनायज करता आनी ज्या तरेन करतात की लोकांक केन्ना टुर्नामेंट आयलो आनी केन्ना गेलो तो सुद्दां कळून वचना। पूण हो असो टुर्नामेंट मुली चषक जाका लोक एक वर्सभर दुसरें पर्व केन्ना सुरू जातलें हाजी वाट पळयतात
आनी हांगा खेळपाक सदांच जो क्रिकेटर्स आसा जो जावं नॉर्थ गोवाचो सावथ गोवाचो पेडणेचो काणकोणचो सगळे हांगा येवन खेळपाक सोदतात कारण एक बरो एनवायरमेंट बरें ऑर्गनायजेशन जाता ह्या ऑर्गनायझींग टिमीचें आनी जशें आमी ऑर्गनायजेशन म्हणटा एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक कितले कठीण त्रास जाता ते आमकां खबर आसा आमी करता जाल्यार तुमी चिंतात की नॅशनल गेम्स जेन्ना घडिल्ल्यो गोंया भितर त्यो नॅशनल गेम्साक यशस्वी रित्या एक पार पाडप बरे तरेन आनी गोंयांत भरपूर नामना कमयल्ली गोंयाचें नांव व्हड जालें करप ही गजाल मागीर पूण हे नॅशनल गेम्स आसा ते करपाक चिंतप हेंच मोठें कार्य आनी ते म्हाका दिसता गोविंद बाब गावडे सरान यशस्वी रित्या ते हाताळिल्ले आनी तांच्या लिडरशिपा खाला म्हाका दिसता तांणी सगळे जे तांचे स्पोर्ट्स जे अधिकारी आसात तांकां घेवन एक बरें ऑर्गनायजेशन कशें करप एक बारीक राज्य आसूं पण बारीक राज्य सुद्दां एक नॅशनल गेम्स घडोवपाक शकता हें दाखोवन दिल्लें आनी म्हाका दिसता फक्त ज्या वाठारान गोविंद सर एक आमदार म्हणून आसा मिनिस्टर म्हणून आसा ते तितल्याच पुरते न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचें नांव व्हड जालें अख्ख्या गोंयाक मान आयलो आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तांचें कौतुक करपाक जाय आनी तांकां मोठ्या ताळयांनी तांचो आमी गजर करपाक जाय कारण ही बारीक गजाल न्ही ही मोठी गजाल कित्याक एक नॅशनल गेम्साक जशें सराक खबर आसतलें चड लॉजिस्टीक करप ग्रावंड ऑर्गनायज करप ऑफिशियल्स रेडी करप आनी थंय एसीस जाय काय ना तो प्रत्येकाचें जे तांकां एक उदक जाय पडटा काय तांकां कितें स्पोर्टींग जे एक्टिविटीज आसा तांची प्रॅक्टीस करपाची आसा अशे खुबशे गोश्टी आसता म्हणून ते चिंतपूच खूब कठीण काम ते चिंतून मागीर यशस्वी रित्या पार पडप हें म्हाका दिसता खरेंच मोठी कौतुकास्पद गजाल जाल्ली आसा गोंया खातीर आनी हें एक म्हाका दिसता पयल्याच फावटी जाल्लें आसा आनी हांवूच म्हणटा एक स्पोर्ट्समॅन म्हणून सर तुमकां देव बरें करूं तुमकां देव बरें उदंड आयुश्य दिवं आनी अशेंच तुमी फुडें वचात गोंयकार तुमचे बरोबर सदांच आसतले Now it's time for Darshan Bandekar. Oh, that's a beautiful shot. That's a really beautiful shot. Good cricketing shot, copybook stuff. Played straight, played in the covers and starts off with the boundary. The man in a good form, Vikas Desai. Some of the fastest bowlers for sixes. He is not afraid about the pace. He has faced many fast bowlers in his prime time. I still remember one of the matches that I was witnessing in Sangam Cricketers. Some of the top Ranji bowlers from Goa were bowling against him, pacey, nippy and bowling the short balls, and he was pulling away with ease, with style, with grace. That is the talent that this man possesses. Lots of time to play his shots. One of the best batters that Kulcharam has ever produced till date, because that's why, and he's certainly showing why. And now it is Sanjay Naik, one of the most talented tennis ball cricketers around. It was late onto the shot, but still he will get the single. I think Darshan Bandekar is someone who has got a more extra pace, and more than the pace, you can see the height of this man. The way he's bowling somewhere around 6.5, and when the ball is delivered from the hand, it goes somewhere around 7 feet. So it is even more difficult. He will get that extra bounce compared to the other bowlers around on this deck. Once again, trying the shot at the long on region, just getting inside half of the bat, gets a single. And these players are very calculative nowadays. They know very much that Darshan Bandekar will certainly will be looking to pick up wickets, and they will try to be a conservative approach here, not to give away wickets, especially early wickets. Fantastic delivery, the Brahmastra of tennis ball cricket, or you can say the world cricket, the Yorker length delivery, perfectly bowled onto the toes, the toe breaker as we call it. Dot ball. They need to buy too many dot balls. More dot balls, more pressure. The batsman will take the risk, and if the risk doesn't pay off, you'll get a wicket.
Short ball and pulled away. There is no man in the deep. Loose delivery here from Darshan Bandekar, costing boundary here in the last ball of the first over. So 2 boundaries. Many matches alongside him. We had a few 50-run, 100-run partnership in leather ball cricket in GCA division matches. It was a treat watching him bat from the non-striker's end. He's such a classy player. He never will pressurize your non-striker. He will keep scoring runs with utter ease. That's the quality and that's the talent this man possesses. This is in the air and nicely clipped away on the offside in the covers region. No chance for the fielder to cut that off. This is the problem with Vikas Desai. If you bowl him outside off stump, he will drive you, he will cut you, he will play the off drive, and then you have to change your line to somewhere around middle stump. He will hit you on the square leg and mid wicket region. That's why he's a difficult customer to be bowling at. Takes the score to 15. And the talent that this team has, Kurcharem, they bat very deep. This time and catch taken. Vikas very well knows this was an inside edge and that's a fantastic catch here. And I think Sarfaraz Nawaz, it is maybe slightly hurt, painful. I think I request some medication here. It is provided here right in the commentary box. So requesting the 12th man or the 13th man to please go on the ground. The bowler once again ready, Sangmesh. New batter, Rajat. Yes, once again, that was almost somewhere close, scooped it. Sarfaraz, you can see that it is not easy to dive on this ground, but he still dive. He knows the championship it is the finals. You have to dive, you have to give all out. You might be injured, but even the injured player have come from the slumbers to win it for the team that they play.
That's once again a slower ball. It came slow. He was into the shot, and it came very late. That sometimes happens for the cricketers. You feel like yes, that is just a sweet cake that you want to eat it, but it doesn't come at you very quickly. Someone grabs it beforehand. There's another slower leg cutter. So they are not giving the pace that the batters are looking to get at the moment. They are bowling the slow leg cutters. It's a tactical ploy. They know how the different batsmen play nowadays. The field was set different for Vikas Desai. Now Rajat, he is a very strong switch hitter. So there is a man placed in the deep. Now that man has been brought inside the point region. And Darshan Bandekar from mid on shifts to long on. That's the one he likes. He will be certainly looking to get a boundary and gets the boundary. Good effort by the fielder, but no chance. There was, I think, than a normal slog shot on the leg side. I play him with him many a times, and I know that he just favors that shot. And he's a very good player on offside and leg side as well. Rajat Sawant. Score moves on to 20. And now once again they are fielding changes. But still he has got the shots on the leg side. He can play over long on, long off. And a talented cricketer coming up the ranks in Kurcharem cricket. This one came even slower. You can see there is a smile on Rajat's face. He was ready for that, but once again the slower ball deceived him. All ends up. That will finish the second over on a very good note. 2 overs gone is 20 for the loss of 1 wicket. Vikas Desai back in the pavilion. They don't have that much of chance other than bowling Darshan Bandekar. They need to get wickets here. If they don't get wickets here, this match is not going to last for 8 overs. This might be well over in the 6th over itself. So getting the Darshan Bandekar is the need. That's nicely driven on the offside. There's a man in the deep as a protection in the extra cover region. Just gets a single. Crosses over. Score moves on to 21. 77 is what they are looking at to get their hands on one of the biggest trophies in Goa. Muli Chashak, 5th edition. Shanta Durgati from Kurcharem. And so far they have played sensibly enough. There's good pace, very good pace, asking for a wide. It was well within the guideline. Mark for the umpires. Umpiring has been magnificent. Rupesh Gavas and Nilesh Parsekar has been fantastic throughout the day, both in the first semi-finals, second semi-finals, and now in the finals. This is in the air. This is in the air. This is going to be a big wicket. Oh, just landing in front. Just landing in front. Maybe a better effort. Look at Sarfaraz Nawaz. He's furious. They are in agonizing pain at the moment. That wicket is eluding them, especially of Sanjay Naik.
All the chances should be taken, but Sanjay is going to be the key wicket here. He binds them together, this team. As once again, just gets a single carpet shot towards the mid wicket region. Single will take the score a little forward. 24. Sanjay Nayak is the one I told you, he will take the game deep. He is not going to give away his wicket so easily. That's nicely played once again. Good effort, very good effort from the fielder in the short covers, and they were certainly looking or thinking for the couple. Sanjay Nayak wanted that. Rajat Singh, no risk here. Absolutely no risk. Mate, we have to take it deep. If we lose wicket in the form of run out, it's an opportunity. Is the door that has been kept ajar will be wide open like a community hall. So let's not do it. Let's keep it simple. This is in the air. Has he timed it well? Has he timed it well? No, he's taken in the deep. He's taken in the deep, and Rajat departs. So Darshan Bandekar has been brought here to take a wicket, and he gets the wicket of the last ball of the second over. And now the match will slowly and steadily turn out to be an interesting one. 3 overs gone. A very economical wicket-taking over from Darshan Bandekar comes to an end. It's 25 for the loss of 2 wickets after the completion of 3. So now, you can certainly say at this point it's 50-50, the prediction score. Sangamesh continues his bowling from round the wicket to Sanjay Nayak. A lovely piece of bowling here, right in the block hole. Hardly you can do anything. You can at the most get a single with a defensive shot towards the offside. And nowadays, if you can see, many of the bowlers coming and playing in IPL or even in Team India, many had played cricket, which a tennis ball cricket at the start of their career. And that's what Bumrah has said. I was just practicing continuously bowling the Yorker length delivery because that was the only escape ball in tennis ball cricket. Even many of the IPL players right now playing have come up, risen the ranks from tennis ball to the world of leather ball cricket. That's nicely played. He actually wanted to heave it on the leg side, but just coming a little quicker than he anticipated. And a single once again. That's how Vicky Naik plays. Both Sanjay and Vicky fare very well each other as far as batting partnership is concerned. So far, these are the two men that have won the matches single-handedly for their team, Shantadurga T of Kurcharem. As once again a shot, but it was a slow leg cutter. You can see the fingers rolling over the ball for the ball to get the turn as a leg cutter, and that's why Sanjay had to wait for his opportunity. He actually wanted to cut that, but then went towards the covers region. The finals, you expect that this is a flat deck, and flat deck, the total score somewhere around 120, 110 in 8 overs is expected, but that doesn't happen in the finals. Finals is altogether different. And this is once again played in the air. Might be a chance. There is a fielder there.
And very good stop in the end. You can see the extra bounce of this tennis ball. It just bounces more than you feel that is coming straight to you, but it has got little bit extra as far as the bouncing part is concerned. 2 runs taken by Vicky, which moves the score to 30. So 5 runs have come off the first 4 balls from Sangamesh. So far it's the same scenario, just like how Vicky and Sanjay had bowled the first 4 overs. It is Darshan and Sangamesh continuing and bowling those 2 overs each. And here comes the 4th over from Sangamesh. It's nicely bowled. Very nicely played in the covers. They have placed the right fielders in the right positions. And this is live. This is a really good running with the wickets. This is exactly how you have to run when things are not going in your favor. It's not that every ball you are going to get the boundaries and sixes. When you are not getting there, try to convert singles into doubles, doubles into threes. And that is exactly, you will move closer towards the target. 32 the score at the moment with this couple. Going for the switch here. This is a shot that he likes. Chance of a run out. Opportunity missed here by the batter. Missed by the short third man. And once again they will scramble for the couple. Well, is it the pressure of the finals or is it the anxiety? Sometimes it's the anxiety that takes on your cool mind, which happens for many players in the finals. Certainly, definitely does not happen with the Australians. They are certainly born to lift most of the crowns nowadays. And it's the mindset. It's all about the mindset that you enter when you are playing the finals, which is very strong for their side. So 4 overs gone, chasing 77 runs at the moment. 2 cricketers are 34 for the loss of. In fact, Shantadurga cricketers are 34 for the loss of 2 wickets. And 43 runs required in 24. Ladies and gentlemen, the match is still alive. It is evenly balanced. If they can get rid of Vicky and Sanjay Naik at this stage, maybe in the next 1 or 2 overs, you can see the batters who have not got so much of batting so far in this competition will have to bat at a time when the championship will come in front of their eyes. And when that happens, the nerves start to break down. It tends to play on your minds as the things come closer. And it is a tactic, it is the skills here of the captain of the fielding side. It also depends on him, how he sets the field, how he rotates the bowlers, how he puts the right fielders in the right position to get the right mix to get a wicket here. So it's a wonderful cocktail that is required to get a wicket with a beautiful sort of sipping mind. And let's see whether it is there. Let's see whether it is there in Sarfaraz Nawaz at this stage. So 43 runs required. I will leave the commentary box for the last 4 overs to senior commentator Ashok Naik sir, and we'll see you in the presentation arena later on. थैंक यू सर, हरीश सर धन्यवाद. 4 ओवर समाप्त हुए. 4 ओवर का खेल, बाकी 24 गेंदे, 43 रन. और पहली 5वें गेंद पर, पहली बड़ी पर एक बड़ा शॉट लगाते हुए बल्लेबाजी में स्टैक पर संजय नाइक जो अरुण का स्वागत करते हुए, और इन 6 रन के साथ अब मात्र 23 गेंदों का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए 37 रन. 23 डिलीवरीज, 37 रन. पांचवा ओवर अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं. टारगेट टोटल 77 का. और इस बार इनसाइड आउट, बहुत ही लाजवाब कैच का मौका. जी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर सामने फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और तीसरे विकेट का इन मौके पर बिल्कुल सफलता हासिल करते हुए टीम डीजे
भी बाकी 22 गेंदों का और 37 रन, 22 डिलीवरी, 37 रन, 22 चेंडू, 37 धावा। मुकाबला बिल्कुल अच्छा हो रहा है मैदान पर। संजय नाइक का विकेट मिला, एक बड़ा विकेट मेरे ख्याल से चटकाते हुए। तुबी क्रिकेटर, साकवाल क्रिकेट टीम, शांतादुर्गा टी, कुड़चोड़ी क्रिकेट टीम, 77 का टारगेट और न्यू बैटर पुष्पसल देसाई और सामने अरुण अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। दूर दूर जयमाई गई फील्ड। मान्यवर कक्ष में सम्मान्य अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए और काफी दर्शक इस मैदान पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मूली चषक 5वें पर्व में। मैकलन स्पोर्ट्स की ओर से आयोजन सर हरीश काकोडकर और मैं अशोक नाइक आप कमेंट्री बॉक्स में। इस बार ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अच्छी किस्मत में कहूंगा, आते आते बड़े शॉट के लिए निकले थे पुष्पसिल देसाई, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहा। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक बिंदी गेंद, अच्छा ओवर चलता हुआ अरुण का एक कीमती सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑफ साइड पर एक गली पर फील्डर तैनात किया है। अल्टी पल्टी गेंद आ चुके हैं थर्ड मैन बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चले गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे फासला कम हो गया। 33 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए मैच को मैदान पर। शांतादुर्गा टी, कुड़चोड़ी क्रिकेट टीम को 33 रन और सामने अरुण अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर छोड़ा जाने दिया। इस बार अप पर यह गेंद एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद, एक चौका अल्टी पल्टी का, उसके बाद एक बिंदी गेंद बिल्कुल लाइन पर, अच्छी लाइन पर और गेंद चली गई विकेट के पर सरफराज पर चप्पू के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद और गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए हमारे बॉल बॉयज तेजू जो कि गेंद को बिल्कुल सुपुर्द वापस करते हुए। तेजू, एक बार फिर से आपका थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। समाप्त हुआ 5 ओवर का। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है। 18 गेंदों का, 18 गेंदों में 33 रन मैच को जीतने के लिए। तीन ओवर का खेल बाकी। 5 ओवर का स्कोर हो चुका है दोस्तों 48। 29 रन चाहिए, 18 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 29 रन। 29, 18 डिलीवरी 29, 18 चेंडू 29 धावा। बॉलिंग में परिवर्तन, सरफराज आ चुके गेंदबाजी पर और हफाली पर लेकर थोड़ा सा आपेश खेला, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला। 2 फील्डर और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, बहुत अच्छा तालमेल, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में और इन 2 रनों के साथ अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 27 रन। टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे होते हुए शांतादुर्गा टी कुड़चोड़ी क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए लाइन पर बट के लेग स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ओवर चलता हुआ मैच का टोटल 6ठा ओवर। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है इस मैच का। बैकफुट पर निकले, कट के बड़े खूबसूरती के साथ फील्डर के ऊपर से डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। कोशिश जरूर बहुत अच्छी रही थी, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही और 4 रन के लिए चलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे
और भीतरी किनारा लेते हुए शॉर्ट पॉइंट लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। विकेट की तलाश है बिल्कुल तुबी क्रिकेटर साकवाल क्रिकेट टीम को, क्योंकि मालूम है विकेट मिला तो मैच फिर से वापसी होगी, और अगर एक दो बड़े शॉट लगे तो बिल्कुल ढीला हो जाएगा हाथों के साथ मुकाबला। ये पगड़ा भारी होगा मैच में शांतादुर्गा टी कुड़चोड़े क्रिकेट टीम का। और इस बार ऑन साइड पर एक क्रैकिंग शॉट, मिड विकेट पर फील्डर बिल्कुल मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर कई गज अंदर, जो कि ऊपर जमीन से कैच को लपका, और आयन मौके पर एक और सफलता मिलती हुई मैदान पर तुबी क्रिकेटर साकवाल क्रिकेट टीम को। टोटल 56, 4 विकेट पर 56 रन, और मैदान पर धीरज बोईर बल्लेबाज, सरफराज उर्फ चप्पू अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा कैच मिड विकेट बाउंड्री पर, और सामने नए बल्लेबाज हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर शॉर्ट पॉइंट लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते सही निशाना लगाया, हल्का सा अपील जरूर रहा, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल के साथ रन बढ़ाते हुए अपने टीम के लिए। टोटल स्कोर हो चुका है 57। 20 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए, और गेंदे बची है 13 गेंदों में 20 रन मैच को जीतने के लिए। सरफराज नवाज उर्फ चप्पू अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आगे निकले, शॉर्ट ऑन बॉल मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे के लिए चाहिए 14 रन, 12 गेंदों में 14 रन मैच को जीतने के लिए, और सामने गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। सामने बल्लेबाज है स्ट्राइक पर धीरज बोईर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रजेश उर्फ बीकी ने बहुत ही अच्छा शॉट लगाया पिछले आखिरी गेंद पर, और वहीं से फिर से रन जो कि गेंदों और रनों का फासला बढ़ गया, और कट किया इस बार ऑफ साइड पर, थर्ड मैन बाउंड्री पर एक अपर कट का शॉट, गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का, और मैच थोड़ा सा नजदीक आ गया। 5वां पर्व मुली चषक मैकलर स्पोर्ट्स का आयोजन, फाइनल के 2 मैच सेमीफाइनल में एक यानी टोटल 4 ओवरसीज खिलाड़ी
और बहुत ही अच्छा सफर रहा इस टूर्नामेंट का। लगातार 5 दिन, शुरू के 2 दिन में तुषार नाइक और संतोष मरिये, बहुत ही एक अंग्रेजी और एक मराठी की कमेंट्री, और उसके बाद सर हरीश काकोडकर और मैं अशोक नाइक। और फिर से कट कैच बार बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में गेंद चली गई, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए डीजे। गेंद हवा में वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई कैच का मौका बना। सातवां ओवर जारी, साइश को मिली सफलता। धीरज बोहिर 11 रन बनाकर आउट हुए। बैकफुट पर कट के इस बार गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन पर। और यहीं पर इस 5वें पर्व के चैंपियन मैदान पर शांता दुर्गा टी कुड़चोड़े क्रिकेट टीम, अभिनंदन आपका डीजे। जो ओवरसीज खिलाड़ी और जिस टीम में है वो टीम चैंपियन धीरज बोहिर। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी रही, बल्लेबाजी रही, एक अच्छा मैच रहा। 7वें ओवर पर मैच को समाप्त कर दिया और इस साल की 5वें पर्व की चैंपियन क्रिकेट टीम शांता दुर्गा टी कुड़चुड़े क्रिकेट टीम, अभिनंदन आपका। और उन्हीं के साथ भी क्रिकेटर्स, आपका भी अभिनंदन। बहुत अच्छा क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में आपने भी खेला और दोनों टीमों के आने वाले टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक से बढ़कर एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाले समय में बिल्कुल जल्द ही जिंगारो बॉयज बेती, मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी, गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा की टीम की प्रतियोगिता, जगदम्ब चषक, सीसी धारगढ़, पानपराग उसगांव, बिल्कुल ये आने वाली एक से एक बड़ी 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 प्रतियोगिता जो कि, लेकिन उससे पहले आज का सफर समाप्त हुआ चैंपियन इस टीम की इस साल की मूली चषक 5वें पर्व की शांता दुर्गा टी कुड़चुड़े क्रिकेट टीम।
तर स्पॉन्सर्साक आमी सगळ्यांक पयलीं आभार मानतात, कारण तांच्या शिवाय हें सगळें संपन्न जायनाशिल्लें येदो मोठो टुर्नामेंट. सिद्धेश बाब नायकान सगळ्यांत मोठो तेंको दिलो आनी ताच्या फुडें रोहन बाब हळमळकर, समील बाब वळवयकर, गजानन परब, सौरभ बाब गांवकर, संदेश शिरोडकर हांणी आमकां सहकार्य केलें ह्या मॅक्लॅरन स्पोर्ट्स क्लब. ताजे खातीर ह्यो टुर्नामेंट सक्सेसफूल जालो. हॅलो हॅलो तशेंच आमचे आतां मानेस्त हांगा सगळे हजर आसात. सगळ्यांक आमी फुलांनी परमळीत येवकार स्टेजीचेर माचयेर केल्लो. आतां म्हाका दिसता वेळ काडनासतना हांव आमचे जे मानेस्त आसात तांकां एक एक करून आमी तांचे जे उतरां आसा ती घेवया. सगळ्यात पयलीं जशें तुमकां खबर आसा ऑर्गनायज करता आसतना कितले त्रास जाल्या, कोणें मदत केल्ली आसा, कशे तरेन हो टुर्नामेंट घडटा. 5वो पर्व आनी 5वो पर्व 2 लाखाचे वयर टुर्नामेंट घडोवन हाडप कमी न्ही. हांव मागतां सगळ्यांक जे आमचे मानेस्त हांगा आसा तांकां येवकार करपाक विकी बाब परब हाणें सगळ्यांचे येवकार करचें. हॅलो तिची हार्दिक शुभेच्छा. हॅलो हार्दिक शुभेच्छा. टुर्नामेंट हॅलो हॅलो हो टुर्नामेंट घडोवपा खातीर आमकां सगळ्या भुरग्यांनी तशीच स्पॉन्सर्सांनी हेल्प केलो आनी आमचे चीफ गेस्ट आनी सगळ्यांक मानेस्त आपलो टायम दिवन हो टुर्नामेंटाची शोभा वाडयली. त्या खातीर तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंच्यांनी हांगासर आपलो सामको टायम काडून ते येवन हांगा प्रेजेंटेशनाक उबे रावले. सो हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. खरें म्हणल्यार गोविंद सर ज्या प्रमाणे विकी उलयला तो कमी उलयला, पूण ताणें म्हाका दिसता मेहनत चड केल्ली आसा. खरें सांगल्यार हांवें ताका हाजे पयलीं सुद्दां हांव जेन्ना टुर्नामेंटाक येता, विकी खरें म्हणल्यार इतलो काळो ना, कळ्ळें तुका. पूण खरें कोतान ताणें जे पळय वतान भितर हांगा मेहनत केल्ली आसा, सगळ्यांक घेवन वचपाचें, हें चुकलें जाल्यार तें हाडपाचें, जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वतान भितर मातसो तो काळो जाल्लो आसा आनी ताळोय पडिल्लो आसा सगळ्यांक आड्डून हाडून. पण विकी तो तुजे परिश्रम तुज्या ताळ्यान दिश्टी पडटा. फुडले सुवातेर आमकां जे सहकार्य केल्ले आसा आमचे स्पॉन्सर्स तांकां आमी मनागजांतल्यान उपकार आठयता. पूण सगळ्यात पयलीं सामील बाब वळवयकर आनी आपली 2 उतरां करची ह्या वेळार. श्रीदेवी शांतादुर्गेक नमन करता आनी सगळ्यांक तुमकां आज शिवजयंतीच्यो ज्यो उनोनीत परबी दिता. आजच्या ह्या मुली चषक प्रायज डिस्ट्रिब्युशनच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आमचे सगळ्यांचे लाडके आनी गोंयचे एक तडफदार मंत्री, मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय राज्याचे खेळाचे मंत्री तशेंच सांस्कृतीक मंत्री आनी जाका गोंयान एक बऱ्या पैकी नांव आसा अशें गोविंद गावडे सर, हांगा उपस्थित जिल्हा पंचायत बाब, जो नॉर्थ गोवाचो जो चेअरमॅन आसा सिद्धेश नायक, खूब तेंपान म्हजो मित्र रोहन हरमलकर, निलेश शिरोडकर, हांगा सगळे उपस्थित मान्यवर आनी सगळे जमलेले हांगा खेळगडी आनी खास करून विक्रम परब हो आनी त्याची संपूर्ण टीम हांचे हांव मनपूर्वक अभिनंदन करता. कारण येद्या मोठ्या पद्दतीचो टुर्नामेंट आमच्या तरी ह्या वाठारान आमकां पळोवंक मेळना. हांव आमच्या मतदारसंघाचेच उलयना, संपूर्ण नॉर्थ गोवान तरी म्हाका दिसता हो पयलो टुर्नामेंट जो इतक्या मोठ्या पद्दतीन जाता आनी खरेंच तेजें मनपूर्वक अभिनंदन करता. कारण हो जरी खेळ जरी आसलो क्रिकेट खेळ, म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट ताणें हो टुर्नामेंट आपल्या वडिलांच्या नांवान दवरलेलो आसा. तें सगळ्यांत म्हत्वाचें. खेळ हो आसात, पण एक आपल्या वडिल्या बाबतीन आसलेलो मान सन्मान प्रेम हें म्हत्वाचें आसा आनी त्या खातीर तांणी
भुरग्यांक तरणाट्या भुरग्यांक संदी मेळपाक जाय ह्या खेळान, त्या खातीर तेणी सर्वस्व आपले दिलेले आसा. हांव ताका पळयता की तेजे परिश्रम, अथक परिश्रम, तेजे बरोबर जे वांगडी आसलेले ज्या पद्दतीन काम करता, तळमळीन काम करता, म्हणूनच ह्या येद्या मोठ्या टुर्नामेंटाचे यशस्वी आयोजन जाता. परत एकदा मनपूर्वक अभिनंदन, दोन्ही टिमीचे अभिनंदन, विजेत्या टिमीचे अभिनंदन, आणि म्हाका हांगा 2 उलोवंक दिल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. जय 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 हिंद, जय गोवा. तशेंच फुडले सुवातेर 2 उतरां उलोवपाक हांव मागता प्रशांत बाब भांडारी, सोशल वर्कर, हांणी ह्या वेळार सगळ्यांक संबोधचें. नमस्कार सगळ्या शिवप्रेमी आणि क्रिकेट प्रेमी. आणि आज माचयेर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री तथा कला आणि सांस्कृतिक मंत्री सर गोविंद गावडेजी, तसेच आमचे नॉर्थ गोवा जिल्हा चेअरमॅन तथा आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धेश बाब, समीर वळवयकर बाब, रोहन हळमळकर बाब, तसेच आमचे कुंभारजुव्याचे युवा ज्यांनी डॉक्टरेट मेळयले इंजिनियरिंगान, जे सौरभ बाब, आमचे दया, नीलम परब, म्हजे खास दोस्त जे खांडोळा पंचायतीचे सरपंच बाब विशान, तसेच जयेश बाब, आणि आमचे शिवाजी महाराज. खरेच एक आनंदाची गोष्ट आणि पळोवन सुद्धा धन्य जाता ते म्हणजे विकी बाबाचें एकत्रित्व. खरेंच शिवजयंती करपाचो अधिकार आज निलेश बाबाचें नांव घेवपाक विसरलो, पूण उतर याद जाली म्हाका की खरोच शिवजयंतीचो हक्क आणि जयंती मनोवपाचो जर विकीक अधिकार आसा जाल्यार कारण ते सदांच सत्याच्या बरोबर आसा आणि सत्यानूच ते काम करता. म्हणूनच तांकां हे शिवजयंती जी करता ताचे लागून तुमी ताळयो मारून तांचे उपकार आठोवचे. आणि हांव खरोच धन्य जाता, कारण आमी येदे व्हडले मनीस न्ही, पूण आज आमच्या विकी बाबा खातीर हे येदे व्हडल्या माचयेर जे नावाजलेले जे सगळे आमचे मुखेल सोयरे तसे बाकीचे सोयरे हांच्या मदीं उबे रावन म्हाका 2 उतरां उलोवंक मेळटा. आज एका हातान ताळी वाजना, होता जिवा म्हणून वाचला शिवा, त्या प्रमाणे आज विकी बरोबर ताजे असंख्य मित्रमंडळी आसा. खरेंच तुमची तोखणाय करपाची की आज एका हातान ताळी वाजना, तेन्ना सगळ्यांची नांवां घेवन गेलो जाल्यार मातसो त्रास जातलो. पूण तुमकां सांगता, तुमी सगळ्यांची एकी ही अशीच दवरची, आनी विकी बाबाचो सदांच प्रयत्न आसता एकसार करपाचो, भुरगे सांबाळपाचो, आनी तुमच्या वेळा खंयच्याय उल्याक धांवून येवपाचो. तशेंच ते आमचे भीमसिंग आज क्रिकेट खेळ्ळे, पूण क्रिकेट खेळटा आसतना सगळ्यांचीच नांवां येता, पूण खरें म्हणशी भीमसिंगान जो एक अथक परिश्रम करून ती पीच केल्या, त्या पिचीक खरो वालोर जे आज सगळ्यांनी आपले क्रिकेटीचे जो खेळ दाखयलो ती पीच. बाकीचे आमचे सगळे जाण आसाच विकीक सहकार्य करपाक, आनी उमेदीन ते सहकार्य करता आनी फुडेंय ते करतले अशी आस बाळगिता. पूण आज एक संगम हांगा आसा, त्या संगमाचेर म्हाका एकूच आमच्या क्रीडा मंत्री सामको मना काळजांतल्यान रिक्वेस्ट आसा. जशें माशेलान तुमी एक मैदान सुसज्ज मैदान केलां, तशें आमकां तुमी फुडली शिवजयंती येवच्या पयलीं हें दितले अशी आस बाळगिता. कारण आज तुमचे कडेन घालूत रीत आनी पाडूत रिवाज अशी राजसत्ता आसा, आनी त्या राजसत्तेचेर तुमी उतर दितले तुमच्या भाशणान की आमचे फुडली जयंती येवच्या पयलीं सुसज्ज मैदान आमकां मेळटलें अशी तुमचे कडल्यान अपेक्षा आसा, आनी ती तुमी पुर्तता करतले. कारण तुमी तुमच्या प्रत्येक शब्दाचेर आनी वचनांचेर सदांच ठाम आसता, आनी हेच तुमची जशी तुमच्या जिबेर सरस्वती आसा त्याच प्रमाणे तुमच्या वचनाचेर आमकां विश्वास आसा, आनी तुमी हें वचन आमी दितले अशी आस बाळगिता. आनी विकीन म्हाका हांगा पळोवन ही 2 उतरां उलोवंक दिल्ल्या बद्दल विकीचेंय देव बरें करूं, आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाजें भाशण आयकल्ल्या बद्दल तुमचेंय देव बरें करूं. जय शिवाजी, जय गोवा, देव बरें करूं.
देव बरें करूं प्रशांत बाब, खरेंच मोलाची उतरां आनी फुडले सुवातेर जाणें आमकां मदती केल्ली आसता, सदांच भुरग्यां बरोबर आसता. जावं तो कोंकणी युवा महोत्सव जातालो तेन्ना हांव ताका पळयतालो, सदांच सिद्धेश बाब आसतालो युवा दी गोवा टिमी बरोबर. सारकें मरे सिद्धेश बाब. आनी क्रिकेट जावं जाल्यार खेळा मळार प्रत्येक फावटी तो भुरग्यांक सपोर्ट करता आनी हांगाय बी ताणें तेंको दिल्लो आसा. झेडपीचो अध्यक्ष नॉर्थ गोवाचो सिद्धेश बाब नायक, तुजी 2 उतरां जावनी. मुली चषक सीझन 5 आज ह्या फायनलीक आनी ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक माचयेर हजर आशिल्ले आमचे माननीय क्रीडा मंत्री गोविंदजी गावडे, तशेंच निलेश शिरोडकर, समीर वळवयकर, रोहन हरमलकर, भगत सर, सौरभ रायकर, हांगा सरपंच विशांत नायक, जयेश नायक, प्रशांत भंडारे आनी समोर जमिल्ल्या सगळ्या निलम परब आणि समोर जमिल्ल्या सगळ्या माझ्या मित्रांनो, आज खूप बरें दिसता कारण आमचे माननीय क्रीडा मंत्री हांगा आयिल्ले आसात आणि आज तशेंच चड उलोवपाचें अशें हें ना कारण आमचे क्रीडा मंत्री उलयतलेत, पण आज सगळ्यात पयलीं शिवजयंतीच्यो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आज हांगा विक्रम परब आसा आनी ताजी फूल टीम आसा. 5 सीझन कंटिन्युअसली आणि प्रत्येक सीझन प्रत्येक फावटी नवीन इनोवेशन, नवीन इम्प्रूवमेंट, नवीन कॉन्सेप्ट फुडें घेवन येवप आणि बऱ्या तरेन हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप सगळ्यांक बरोबर घेवन हें खूब मोठी गजाल आसा. आमी आमचे आदर्श आणि ह्या सगळ्या जगाचे आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराज तांचे कडल्यान खुबशे आमी शिकपाक जाय. आज आमी भगवे कुर्ता घालतात, शिवजयंती साजरी करतात, घोशणा दितात, सगळें बरें आसा. तर खऱ्या अर्थान आमी शिवाजी महाराजांची शिकवण आचरणांत हाडटले जाल्यार तांचे तातूंत म्हाका दिसता की आमी हें जग जिखपाक शकतले. आज शिवाजी महाराजांचे शिकवण तांचे जे जीवन आसा तातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी आमी शिकपाक जाय आनी म्हाका दिसता आज विकी जसो हांगा हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता त्या हितूंतल्यान आमकां ते पळोवपाक मेळ्ळें. एक तातूंत आसा लिडरशीप, महाराजांची लिडरशीप जी आशिल्ली, दुसरें आसा दूरदृश्टी, तिसरें आसा मॅनेजमेंट आनी इतलो व्हडलो जो कारभार आसा तो सांबाळपाक लागून म्हाका दिसता ही लिडरशिपाची गरज आसा, ह्या मॅनेजमेंटाची गरज आसा आनी ताका लागून हें सगळें श्रेय जें आसा तें विक्रम परब आनी ताच्या बरोबर आशिल्ल्या सगळ्या टिमीक वता. आज खूब बरी हांगा गेम जाल्ली आसा, खूब मजा आयली फायनल्स पळयता आसतना आनी आतांच आमी उलयताले कॅचीस वीन मॅचीस, खूब बऱ्यो कॅचीस हांगा धरल्यो, पण म्हाका दिसता एक स्कोर बरो आसल्या कारणान ते फुडें हें करपाक पावलें ना. पण म्हाका अशें दिसता की अशाच प्रकारच्यो गेम्स ज्यो आसा प्रत्येक शेनवार आयतार हांगा चालू आसता. ह्या ग्रावंडा बद्दल सांगपाचें जालें म्हणल्यार हांव प्रत्येक भाशणान उलयता, पण आमचे माननीय क्रीडा मंत्री आज हांगा आयिल्ले आसात. ह्या ग्रावंडाक खूब मोठो इतिहास आसा. हो ग्रावंड असो नाशिल्लो. लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या टायमार ज्यो घडामोडी जाल्ल्यो आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांनी जो आवाज उठयल्लो ताका लागून आज कंपाऊंड घालून जालें, हांगा हो ग्रावंड क्लीन जाला आनी हें सगळें श्रेय जें आसा कुंभारजुव्या सगळ्या भुरग्यांक वता. आज आमचे माननीय क्रीडा मंत्री हांगा आसात, तांणी आज हांगा सगळे आमचे विक्रम परब आसा, बाकी सगळे पंच आसात. आज हांणी सगळ्यांनी फॉलोअप करून ह्या ग्रावंडाचें जें काम आतांच प्रशांत बाबान म्हणलें की वो बेगिनांतल्या बेगीन करून मेळपाक जाय. माननीय क्रीडा मंत्र्यांचे खूब खूब आभार मानता आनी अभिनंदन करता की ही ग्रावंडाची जी फायल आसा ती खूब फुडें पावल्ली आसा. म्हाका दिसता बेगिनांतल्या बेगीन तें टेंडर जातलें आनी कामूय सुरू जातलें. आतां ते सांगतलेच, पूण तांकां खूब खूब आभार मानता आनी अशाच प्रकारचे बरे बरे टुर्नामेंट ह्या ग्रावंडार ऑर्गनायज जातले. बरो टॅलंट ह्या गांवचो आसा तो वयर सरतलो. ह्या गांवचें, गोंयचें आनी ह्या देशाचें नांव वयर काडटलें, तातूंत मात्तूय दुबाव ना. म्हाका हो मान दिल्या बद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. धन्यवाद. देव बरें करूं सिद्धेश बाब. तशेंच फुडल्या सुवातेर हांगाचे सोशल वर्कर निलेश बाब शिरोडकर हांणी 2 उतरां करचीं.
छत्रपती शिवाजी महाराजाक वंदन करून आजच्या ह्या सुंदर अशा टोर्नामेंटाक आज आमकां 5 वर्सां जाली आणि 5 वर्सां सदांच पळयता विकीच्या बरोबर काम करणारे जे भुरगे आसा आणि ते भुरगे एक सुद्दां भुरगो हांगा म्हाका दिसना कमी जाला म्हणून आणि म्हणूनच ह्या छत्रपती शिवरायाचे मावळे म्हणून तुम्ही काम करता आसतना हो टोर्नामेंट इतको सक्सेस करून दाखयता त्या खातीर तुमचे मनांतल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आदरणीय व्यासपीठ हांगा आसा आनी व्यासपीठाचेर गोंया राज्याचे क्रीडा मंत्री आसत, सांस्कृतीक मंत्री आसत, पूण मनांतल्यान सांगन एकूच दिसता आमचे काळजांतले मंत्री म्हणटा ते गोविंद बाब. कारण आमच्या तरण्या भुरग्यांच्या हृदयान आशिल्ले एकूच मंत्री म्हणजे गोविंद बाब. आणि अशें ह्या काम करता आसतना क्रीडा क्षेत्रान एक गोंयान आमकां मोठें नांव दिलें ते म्हणजे 37व्या क्रीडा क्षेत्रान जेन्ना काम करता आसतना आपली मेहनत सकाळचो 4 आणि रातचो 12 घरा येवन जी मेहनत करून जी सक्सेसफूल करून दाखयली इंटरनॅशनल गेम्स त्या खातीर तेजे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि त्याच खातीर आज हे ग्राउंड आसा गोंयचे ते सगळेच म्हाका दिसता सुजलाम सुफलाम अशें जातले. त्या खातीर मात्तूय दुबाव ना. हो टोर्नामेंट खरेंच इतकी वर्सां आमी सदांच उलयता 5 वर्सां जाल्यार उलयता पूण आज खरेंच एक हेतून बरें दिसलें कारण क्रीडा मंत्री हांगा आसा तेही शिवाजी आसा आणि साक्षात शिवाजी हांगा आयिल्ले आसा त्या खातीर त्या शिवाजीक जोरदार ताळयो मारा कारण तोय एक बरो क्रिकेट प्रेमी आसा. क्रिकेट प्रेमी आसतना तेणे भव्य आपले वेशभूषा करून हांगा आयिल्लो आसा. गोविंद बाबाक ताचें आकर्शणूय जाल्लें आसतलें. हांव चड वेळ घेना, सगळेच मान्यवर बरे उलयले आनी सरा कडेन हांव कांय मागना कारण तो हांव मागतलो इल्लेशें पूण तेज्या पेक्षा तो चड दितलो म्हणटा तेजें मागप ना अशी सगळ्यां कडेन अपेक्षा करता आनी 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. तशेंच ज्या तरेन सराक आनी फंक्शन आसात आनी खबर आसात की हांगाच फंक्शन आसात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे खूप उत्सव चालू आसात. गोविंद गावडे सराक मायक सुपूर्द करचे कळी 1-2 गजाली सांगता ज्यो हांवें स्वताच पळयल्यो आसात. स्वता कलाकार ते क्रीडा जेन्ना क्षेत्र म्हणटा कला आनी सांस्कृतीक जेन्ना आमी क्षेत्र म्हणटात हे अशे 2 निगडीत क्षेत्र आसात जंय युवा सदां आकर्शीत आसता. जे जावन आमचे करियर करतात कला क्षेत्रान संस्कृती जपोवपाचें काम करता. तशेंच जेन्ना आमी खेळमाळ म्हणटात जावं ती क्रिकेट जावं ती फुटबॉल जावं ती खंयचीय गेम तो आज इनकम सोर्सीस जाल्लो आसा नाल्यार कोणाक एंटरटेनमेंटूय घडटा कित्याक आज इतलो लोकांक स्ट्रेस आसा तो स्ट्रेस रिलीज करपाचें जर आसा जाल्यार ह्या 2च डिपार्टमेंट एक कला संस्कृती आनी दुसरो म्हणटा तो क्रीडा आनी ही इम्पॉर्टंट मिनिस्ट्री सामकी इम्पॉर्टंट मिनिस्ट्री जी सर हाताळटा. आनी एक अशी गजाल जी हालींच जाल्ले पर्पल फेस्ट थंय सर एक्चुली सराचें डिपार्टमेंट न्ही तें पूण तो थंय पावलो प्रेजेंटेशन सोहळ्याक आनी व्हीलचॅराचेर क्रिकेट चालू आशिल्ली जे जांकां पांय ना जांकां दोळे ना जांकां हात ना अशे प्लेयर्स थंय खेळटाले इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक. एक्चुली तांचो शेड्यूल त्या टायमार बिजी आशिल्लो एका फाटल्यान एक इनॉग्रेशन चालूच आशिल्ली पूण ते फूल मॅच ते व्हीलचॅर क्रिकेट आयले आनी फूल तांची मॅच पळयली एक बॉल चुकयनासतना आनी प्रेजेंटेशनूय केलें आनी गेले. तो तांच्या मनान तळमळ आसा जो जाचे कोणाक हात ना पांय ना तांकां दिसलें की आपूण थंय रावचें तांकां तो सम्मान दिवचो तांकां ते आपल्या खातीर हांगा ती मॅच दाखयता कोण क्रिकेटाचे परिश्रम करता. सो एक क्रीडा मंत्री आसतना सुद्दां ताणें थंय हजेरी लायली आनी फूल मॅच पळयली. जोरान ताळी जावनी हे तुका तुजें काळीज बरें आसपाय तुजें मन बरें आसपाय जाल्यारूच तुवें थंय रावपाक शकता. आनी सर तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी कलाकार तुमकां खबर आसा खूब जाण कलाकारांची तळमळ आसा तांकांय बी खुबशी कितें मदत आसता जाय पडटा तशेंच ग्रावंडूय डेवलपमेंट जावपाचें आसता. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन युवा एक नेतृत्व तुमचे कडेन आसा एक क्रीडा मंत्री म्हणून तुमी खूब कितें घडोवपाक शकता. 37th नॅशनल गेम्स करून गोंयाक तुमी ऑलरेडी मानाचो तुरो दिल्लोच आसा पूण हाजे फुडें आनी खूब कितें घडोवपाचें श्रेय तुमच्या हातान जावपाक जाय कारण युवा फक्त ह्या वाठारांतलेच न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचे तुमकां एक स्रोत म्हणून पळयता जे तुमी आमकां युवाक कितें तरी दिवपाक शकता आनी दितले हातून काडी मात्र दुबाव ना. गोविंद गावडे सर तुमची 2 उतरां जावनी. सगळ्यांक म्हजो जय शिवराय. आजच्या ह्या मुळी चषकाच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात या भागातले जिल्हा पंचायत सदस्य आणि माझ्या उत्तर गोयच्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्री सिद्धेश श्रीपाद बाब नायक त्याचप्रमाणे आमचे
आत्ताच ज्यांनी सुंदर विचार तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसात ते म्हजे इश्ट श्री निलेश बाब शिरोडकर, म्हज्या बेतखंडोळाचे सरपंच श्री विशांतबाब नायक, तिवरेचे सरपंच श्री जयेशबाब नायक, म्हजे दुसरे इश्ट समीलबाब वळवयकर जे सदांच ह्या युवकांक आधार करपा खातीर फुडें आसतात, म्हजे तिसरे इश्ट श्री रोहनबाब हरमळकर जे सदांच आपल्या नेतृत्वाची कस मुखार वता आसतना भुरगे घडचे ह्या आधारान आधार करीत आसात. आमचे प्रशांतबाब भंडारी, त्याच प्रमाणे ज्यांच्या फुडारपणा सकल आज मॅक्लेरन स्पोर्ट्स क्लब हो विकीबाब परब यांच्या नेतृत्वाक सकल हो एकंदरीत 4 दिसांचो टोर्नामेंट हांगा घडोवन हाडिल्ले आसात. जशे म्हजे इश्ट हरीश बाब मडकयकर हांणी म्हणिल्लें आसा कंपेरर की खूब कमी उलयलो म्हणून आपलो विकीबाब, पण हांव सदांच म्हणटा एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. म्हणजेच कामांतल्यान आपूण कितें तें सिद्ध करपाचें ज्वलंत उदाहरण जर कितें जर आसा जाल्यार तो आमचो विकीबाब आसा. बरेचशे जाण ह्या समाजान आमी पळयतात, उलयता खूब पूण काम करपाची इच्छा नासना आनी प्रसिद्धीच्या जोतान रावपा खातीर बरेचशे जाणांक पयल्या लायनीचेर रावपाक आवडटा, पूण खरो नेतृत्व तेंच आसता. त्या प्रसिद्धीच्या मुखार न येत आसतना आपल्या कामांतल्यान ते कर्तृत्व घडोवपाचें. आनी ह्या म्हज्या सगळ्या आजच्या मावळ्याक, मुळी चषकाच्या सगळ्या मावळ्याक म्हजो मानाचो सलाम, माजाचो मानाचो मुजरो. हांव ज्या वेळाचेर आख्खी गेम हांवें पळयलेली आसा, दोनूय टिमीचें म्हज्या मना पासून अभिनंदन. द वे यू हॅव प्लेड, म्हणजे जो सेन्सिबल आमी खेळ म्हणटात, ज्या खेळां भितर तांत्रीक बाजू आसा, ज्या खेळां भितर डिसिप्लीन आसात आनी ज्या खेळां भितर प्रॅक्टीस जी आसा ती आजच्या ह्या फायनली भितर आमी पळयली. हरीश बाबान म्हणिल्लें आसा की म्हाका खेळांत खूब इंट्रस्ट आसा आनी म्हाका खबर आसा ह्या भारताचें उज्वल भवितव्य जर कोणा जर कडेन जर आसा जाल्यार म्हज्या ह्या गोंयचे मातयेंतले ह्या युवकां कडेन आसात. हो युवक जर ज्वलज्वलीत जर जातलो जाल्यारूच आमची ही भूंय जी आसा ती खूब मुखार पावतली. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे ह्या मातये खातीर लडटाले, पण औरंगजेबाचे सगळे जे मानाय जे आसा ते पोटा खातीर लडटाले, कारण तांकां विचार नाशिल्लो. पण मावळे आपल्याक कितें करपाक जाय, आपूण खंय पावपाक जाय आनी आपल्या स्वराज्याचें रक्षण कशें करपाक जाय हें आज काम आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी करून दाखयलां. आनी छत्रपती महाराज म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचें नांव अजूनही प्रत्येकाच्या वोटाचेर आज गुणगान करीत आसात, तर तेजें नेतृत्व, तेजें कर्तृत्व, तेजें वक्तृत्व आनी जशें सिद्धेश बाबान म्हणिल्लें आसा तें प्रशासन नियोजन हें खूब म्हत्वाचें आसा. तें एकंदरीत आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आज दिसून येता. हांव इतलेंच म्हणटलों की म्हज्या ताजे तवान तरुण पिढीन आपूण स्वतःचें कर्तृत्व, स्वतःचें नेतृत्व किंवा स्वतःचें व्यक्तिमत्व घडयत आसतना मनीस जोडप हें खूब म्हत्वाचें आसता. ज्या वेळाचेर आमी मनीस जोडटले त्या वेळाचेर विचारांचें आदान प्रदान जातलें आनी तातूंतल्यानूच एक उर्बा निर्माण जातली, ती क्रियाशील उर्बा निर्माण जातली. तातूंतल्यान तुमचें जीवन फुलतलें, ढोलतलें आनी त्याच वाटेचेर तुमच्या स्वप्नाक गवसणी घालपा खातीर तुमकां एक वेळ मेळटलो, एक खीण प्राप्त जातलो. आनी खेळ हो असोच एक आसा जो मनशाक जोडटा, जो मनशाच्या भावना भितर मिसळटा आनी ह्याच भावनाच्या अंतर्गनात एक मनशाची सुखदुःख जाणटा आनी आपल्या समाज कार्यातून तांकां आपले नैतिकतेची जाणीव करून दिता. मनीस ज्या वेळाचेर एकठांय येतलो, मिसळतलो, तेन्नाच आपूण कोण हें सिद्ध करपा खातीर एक ताकद निर्माण जातली. आनी हीच ताकद निर्माण जावपा खातीर आज अशी तरेचे हे व्यासपीठाची गरज आसा. आनी म्हणूनच विकीबाब परब आनी तेंच्या एकंदरीत मॅक्लेरन स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे जाणवलदाराचे हांव मना पासून अभिनंदन करतां. उरलें तुमची सगळ्यांची मागणी. सिद्धेश बाबान म्हणिल्लें आसात, हय
म्हाकाय जाय. ह्या फक्त म्हज्या प्रिय मतदारसंघातले न्ही, म्हज्या कुमारजुवे मतदारसंघान सुद्धा बरे तरेचे मैदानां उबी जावची. आणि सदांच ज्या वेळाचेर खेळाचे हांवें जबाबदारी घेतली त्या वेळाचेर म्हजो पयलो ग्रावंड, दुसरो ग्रावंड, तिसरो ग्रावंड जर आसा पळय न्ही, ते हांवें म्हज्या मतदारसंघान केलें ना. मनशाची एक दूरदृश्टी आसा. दुसऱ्याक पयलें वाडप आनी नंतर उरलें जाल्यार आपूण ताची टेस्ट करप असो म्हजो स्वभाव जावन आसा. पूण प्रश्न येतलो की तुवें हें मैदान केन्ना उबारलें, तर हें मैदान हांव खेळा खात्याची जबाबदारी घेवचे पयलू हांवें हातीन घेतिल्लें नाशिल्लें. फक्त तेजें उद्घाटन आनी तेजें फावंडेशन म्हजे कारकिर्दीन जाल्लें. पूण हें मैदान सुसज्ज अशें मैदान वट्ट 10 ते 11 कोटी रुपये खर्च करून हांव येणाऱ्या काही दिसां भितर फावंडेशन घालतलो. हें सगळें जर शक्य जर कित्याक जर आसा जाल्यार तुमचे नेतृत्वाचे गुण जे कस जे आसात ते आमकां मुखार व्हरपाक जाय. प्रत्येक म्हज्या खेळगड्या गोंयांतल्या तरणाट्याक दिसपाक जायना की म्हजे कडेन मैदान नाशिल्लें म्हणून हांव मुखार पावपाक शकना. अशा त्या परिस्थितींतल्यान तर तुमी इतलें जर जर गाठपाक शकता जाल्यार अशी तरेची मैदानां जर आमी निर्माण जर केली जाल्यार तुमी त्या मैदानाक गाजोवपाक शकतात. कारण खेळ एक क्षेत्र जावन आसा, तुका धाडस आणि खंयच्याही परिस्थितीचेर मात करून आमी आपले व्यक्तिमत्व घडोवपाक शकता. आणि म्हणूनच अशाच तरेच्या ह्या कुमारजुवेच्या ह्या मैदानाक एक नवो साज चोडोवया. एक नवे आपण एक मैदानाक एक नवे नवे ज्यो काही गोष्टी साधन सुविधा आणि ते नवे टेक्नॉलॉजी आशिल्ली मैदान उबारपा खातीर तुमचे सहकार्याची गरज आसा. कारण एका हातान ताळयो वाजना बरे जर ताळयांचो गडगडाट जर जातलो जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचो हातांचो, विचारांचो, मनांचो, तनांची अत्यंत गरज आसा. ज्या तरेन आज हो खेळ तुम्ही आज हांगसर उबो केल्लो आसा अशेच तरेचे तुम्ही मुखार वचचे. हांव तुमचे बरोबर सातत्यान सदांच उबो आसतलो हे म्हजें उतर जावन आसा तुमकां. आणि तुमच्या सगळ्या गोंयकारांक आणि परत ह्या सगळ्या टुर्नामेंटाक ऑर्गनायज केल्ल्या सगळ्या वांटेकार जाल्ले सगळ्या टिमीचे हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता. आणि तुमकां मुखावेल्या आयुष्यान भितर जिवना भितर यश आवडयता. अशेंच मुखार चला. व्यसन दिन जावचें न्ही. व्यसा पासून दूर रावपा खातीर प्रत्येक क्षेत्र तुमचें निवडचें, आवडीचें क्षेत्र निवडचें. आणि 100 पैकी दिल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांतले आपले शिवचरित्र जें आसा त्या शिवचरित्राचो जर तुम्ही अभ्यास जर केलो तातूंतले तातूंच तुम्ही फक्त 10% जर अवगत जर केले जाल्यार तुमचे क्षेत्रांतलो शिवाजी हे तुम्हीच जावपाक शकता. हे आजच्या आयोजनांतल्यान आज तुम्ही आज दाखोवन दिल्ले आसात. तुमकां अशीच भरभराटी मेळची आणि शुभेच्छा व्यक्त करून परत एकदा विकीबा परब आणि बाकीचे सगळे जांडवलदाराचे हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे स्पेक्टेटराचे आणि दातेंचे मनापासून हांव आभार व्यक्त करता, अभिनंदन करता. जर दाते जर ना जाल्यार म्हाका दिसता अशे तरेचे आमचे नातें जें आसा तें जुळपाक खूब अवघड आशिल्लें. हेच तुम्ही मुखार व्हरचे आणि हो टुर्नामेंट जो यशस्वी केले बद्दल प्रत्येक जाणाच्या खारीचो वांटो उबारलेल्याचो त्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन. सगळ्यांक परत एकदा जय शिवराय. देव बरें करूं सर. जनसंपर्क आशिल्लो हो लोकनेतो कशी लोकांची मनां जिखोवपाक शकता आणि जिखता हे तांच्या भाशणान सारकें दिश्टी पडटा. कारण जी तळमळ तांच्या भुरग्यां खातीर आसात प्रत्येक कडेन फक्त आज म्हणटा आमी प्रियोळ मतदारसंघा पुरतो गोविंद गावडे सर ना जाल्यार आज तो अख्ख्या गोंयांचो जाल्लो आसा. आणि तांणी कशी मनां हांगा आज सगळ्या भुरग्यांची हांगा जिखिल्ली आसा ते तांच्या भाशणानूच आमकां दिश्टी पडटा. तुमी तांचे कडेन उतरां दियात, तुमी तांचे कडेन सांगात की हें आमकां जाय तर डेफिनेटली एक मागले जाल्यार तुमकां 4 मेळटले गोविंद गावडे सरा कडल्यान. हातून काडी मात्र दुबाव ना. आणि एक मात नक्की आसा विकी, एक सांगपाक सोदता हांव की ह्या टुर्नामेंटाक हॅट्रिक चड जालें ना, हॅट्रिक जाल्योच ना दिसता, पूण प्रियोळा डेफिनेटली हॅट्रिक जातली हें मात सांगपाक सोदता. फुडल्या सुवातेर वळया. जशें आमचे मानाचे जे सोयरे आसा ते हांगा हजर जाल्ले आसा म्हणून मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लबा तर्फे एक यादस्ती कशी भेटवण आमी दितले. सगळ्यात पयलीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री भोवमानेस गोविंद बाब गावडे हांकां एक मानाची प्रतीक जे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आमी जशी सेलिब्रेट करतात, उत्सव मनयतात, तशी तांची प्रतिमा हे आमी आतां विकी बाब दितलो आमच्या गोविंद गावडे सरांक. सुंदरशी ही प्रतिमा
फुडल्या सुवातेर सिद्धेश बाब नायक हांकां एक यादस्तीक भेटवण. फुडल्या सुवातेर रोहन बाब हरमळकर जाणी आमकां खूप मदत केली या टुर्नामेंटाक. रोहन बाबाक एक यादस्तीक आनी भेटवण करतात. आमच्या एक प्रायम स्पॉन्सर म्हणून जांच्या खातीर हो टुर्नामेंट फुडें गेलो अशें म्हणपाक हरकत ना. जे युवांक सदांच हांगा मदत करता, खास करून क्रिकेटीक, आनी विकी आनी तांच्या वांगड्या बरोबर आसता अशें रोहन बाब हरमळकर. तशेंच फुडल्या सुवातेर सामील बाब वळवयकर हांकांय आमी एक यादस्तीक सुंदरशी पेंटींग आसा महाराजांची, जी डेफिनेटली म्हाका दिसता हे जे आमचे मानेस्त आसा ते घरान आपल्या खंय तरी हे पेंटींग दवरतले. आनी विकी बाबाशी जशें म्हणटा की हो एकच टुर्नामेंट आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीकच उत्सव मनयतात. फुडल्या सुवातेर गजानन बाब परब, सौरभ बाब गांवकर, सौरभ रायकर, संदेश बाब शिरोडकर मातशे मुखार यात. चिंबलाचे आमचे सरपंच मातशे लेट पावले पूण सारके टायमार पावले. तशें हांव रिक्वेस्ट करता विकी बाबाक आमचे बाकीचे मानेस्त आसात तांकां हें दिवचे. निलेश बाब मातसो मुखार यो. तुका एक मोगाचें प्रतीक आमचे ऑर्गनायजर्सा कडल्यान. तशें हांव रिक्वेस्ट करता आमचे बाकीचे जे मानेस्त विशांत बाब हांकांय एक मानाचे प्रतीक मुर्ती प्रतिमा छत्रपती शिवाजी महाराजांची विकी बाब दिता. अशें आमचे सगळे मानेस्त जयेश बाब आसा, यश बाबा मातशे मुखार येवचें. आमचे सगळे जे हांगा मानाचे सोयरे आसात तांणी आमी टायम काडून हांगा हजर जाल्ले. प्रशांत बाब भांडारी फुडल्या सुवातेर. दया सर जाणी हांगा आमकां मदत केल्ली आसा आनी प्रायजां दवरिल्लीं आसा खुबशीं. दयाबाब भगत हांकांय बी आमी एक मानाचो प्रतीक असो दिता मोगाचो. फुडल्या सुवातेर मिथून जो खरो आज ताणें ज्या तरेन वेशभूषा गेल्या खरेंच बरी दिसता. हांगा आमी सर म्हणटात की हो एकच टुर्नामेंट जो कला आनी संस्कृतीचो मेळ घडोवन हाडटा, ताचे बरोबर स्पोर्ट्स हाडटा. आनी एकच असो टुर्नामेंट जे हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जेन्ना जयंती जाता तेन्नाच जाता. एकच टुर्नामेंट जो हांगा जे ट्रॉफीज दिता ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची नाणी आसता ती दिता, ना जाल्यार तांची प्रतिमा मुर्ती आसा ती दिसता. बाकी कडेन तुमकां ट्रॉफी मेळटल्यो आनी कितें कितें शिल्ड मेळटली, पूण हांगा हो एकच टुर्नामेंट म्हणून हो म्हणटा हांव आगळो वेगळो टुर्नामेंट गोंयचो जो छत्रपती शिवाजी महाराजां म्हळ्यार कला आनी संस्कृती मुखार दवरता आनी क्रीडा क्षेत्र ह्या दोगांचो जर ताळमेळ कोणें बरे तरेन केल्लो आसा जाल्यार ते मुली चषकान आनी मॅक्लरन स्पोर्ट्स क्लबान. तशेंच आतां फुडल्या सुवातेर एक एक करून हांव आमचे जाणें आमकां मदत केल्ली आसा तांकां मुखार आपयता. सगळ्यांत पयलीं अंपायर्स जाणी हांगा खूब मेहनत केल्ली त्या अंपायराक. अंपायरांनी मातशें मुखार येवचें. निलेश बाब पार्सेकर तांकां तांची एक टोकन ऑफ लव आमच्या वतीन हांव रिक्वेस्ट करता. आमचे जे मानेस्त आसा तांणी ही भेटवण करची. सिद्धेश बाब नायक. केन्ना केन्ना एंकराकय मातशे त्रास जाता कित्याक मातशी जेन्ना इतले जाण गेस्ट आसता आनी सगळेच कोण सरपंच पंच आनी व्हडले व्हडले पदाधिकारी तो केन्ना कोणाक मुखार येवचें आनी ना येवचें हें सांगपाक खूब कठीण जाता. तर तुमीच समजून घेवचें आनी तुमीच मुखार येवचें आनी हे हांकां हांचो भोवमान करचो.
गांवस ताका आमी भालो म्हणटा, एक बरो क्रिकेटर आनी आज एक बरो अंपायर रुपेश बाबाचो भोवमान जाता. हरीश पार्सेकर, नरेश पार्सेकर आणि हांगा अंपायरींग केल्ली. हरीश म्हणटा आपल्याले नाव घेनाका पूण हरीश बाबा सर तुका आमी सगळे सर म्हणटा, रिस्पेक्ट करता, यो मुखार आनी तुजो भोवमान घे. तशेंच जे साऊंड सिस्टम, एक बऱ्यांतलो बरो साऊंड सिस्टम हजर आशिल्लो आनी डीजे साऊंड जो आसा बरे तरेन करतालो सूरज बाब सावंत, एस बीट्स, मातसो तूं यो मुखार आनी तुजो भोवमान घे. एस बीट्सा तर्फे कोण आसा? येस आसा. आणि फुडल्या सुवातेर जशे आमचे अशोक नाईक सर, अशोक नाईक सर, प्लीज कलेक्ट युअर टोकन ऑफ लव. तसोच म्हाका दिसता म्हजो टोकन ऑफ लव, म्हजें नांव बरयलां म्हणटकीर म्हाका घेवपाक जाय, नाजाल्यार ऑर्गनायजर्सा वायट दिसतलें. सो हांव म्हजो टोकन ऑफ लव घेता सरा कडल्यान. तर आता सगळ्यांचो भोवमान जाल्लो आसा. आता वळया बक्षिसा कडेन. जशें तुमकां खबर आसा ह्या टुर्नामेंटाक सगळ्यात पयलीं हांव सेमी फायनलिस्ट प्रायजां दितलो आनी बाकीचे प्रायजां मागीर दितलो. सेमी फायनलिस्ट जे आसा 33,333 रुपया आनी ट्रॉफी पयली वता ते ध्रुव पारशे. कित्याक सेमी फायनलिस्ट कोण आसा ते सगळ्यांक खबर आसा, सो तातूंत उत्कंठा चड उरना. सो बाकीची प्रायज आसा ती कोणाक खंय वतली ती खबर ना. सो पळोवया कोणाक वता ती. ध्रुव पारशेचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जाल्यार मातसो मुखार येवचो, ना जाल्यार STP कारापूर. STP कारापूर आनी ध्रुव पारशे जर कोणी आसा जाल्यार मातसो मुखार येवचो. यस, नाजाल्यार तुमी आसात सगळे एक बरोबर खेळटात, सो तुमी मातसो कलेक्ट करात आनी मागीर तांकां दिवपाक जाता. येस. सो फुडल्या सुवातेर STP कारापूर हो सेमी फायनलिस्ट जे एक सुंदरशी ट्रॉफी आनी 33,333 रुपयाचे इनाम घेवन वता. सेमी फायनलिस्टाची इनामां जाल्ली आसा. हांगा तशीच बाकीची इनामां जी एक स्पेशल अशी इनामां दवरिल्ली बाब सरान, दया भगत सरान. मोस्ट सिक्सीस आनी मोस्ट फोर्स. सो मोस्ट सिक्सीस गोज टू सरफराज नवाज. रिक्वेस्ट करता आमच्या मानेस्ता लागीं तांणी ही इनामां फुडल्या सुवातेर दिवची. तशेंच हायस्ट सिक्सीसा सरफराज नवाजान 18 सिक्सी मारिल्ली फॉर टू क्रिकेटर्स. वंडरफुल परफॉर्मन्स सरफराज चपू. हायस्ट फोर हे प्रायज वता आनी एक असो बरो ऑलराउंडर जो बॉलिंग आनी बॅटिंग दोनी हातूंत भितर तितलेंच बरें कार्य करता. आनी हायस्ट फोर वता संजय नायक संजू फ्रॉम चांतादुर्गाटी. फुडल्या सुवातेर आनी एक भोवमान करपाचो तो म्हणल्यार यूट्यूब फोटोसोनिकाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां रिक्वेस्ट करता मातशे मुखार येवचे आनी तुजो जो टोकन ऑफ लव आसा आमचे तर्फे तो मातसो स्विकारचो.
आता वळया फुडल्या इनामा कडेन. फोटोसोनीक मातसो बेगीन यो. तांची लायव्ह कवरेज आमकां दिश्टी पडटाली. यूट्यूब लायव्ह कवरेज बरी सुंदरशें प्रक्षेपण केल्लें. 2 कॅमेरास आनी जें करून अख्खे जगा म्हणल्यार वेब अख्खे वर्ल्ड वायड वेबाचेर हें प्रक्षेपण दिसतालें तें फोटोसोनीक प्रोडक्शन. आतां वळया तशेंच प्लेयर ऑफ द फायनल्स. जी फायनल तुमी पळयली खूब जाणांचे खूब कितें तें आसपाक शकता की हो प्लेयर ऑफ द फायनल्स तो प्लेयर ऑफ द फायनल्स कोणें विकेटी चड काडल्या कोणें बॅटिंगेक रन चड काडल्या. पूण जेन्ना आमी एक टीम बसता आनी काडटात की जाचो इम्पॅक्ट चड कोणाचो जालो जाच्या खातीर ही मॅच चेंज जाल्ली ताणें विकेट काडूं नाजाल्यार रन्स काडूं. प्लेयर ऑफ द फायनल्स गोज टू प्रजेश नायक एलियस विकी. विकी मातसो यो आनी तुजो प्लेयर ऑफ द फायनल्स कलेक्ट कर. तर आता फुडल्या सुवातेर जो आसतलो तो बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट. जेन्ना आमी बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणटात तेन्ना कॅल्क्युलेशन खूब आसतात की थोडे म्हणटात की थोड्यांची विकेटी चड आसतात थोड्यांची विकेटी मातशी कमी आसतात. पूण सदांच कॅल्क्युलेशन अशें आसता की त्या बॉलरान ओव्हरी कितल्यो घाल्यो कमी ओव्हरी घाल्यो काय चड ओव्हरी घाल्यो आनी कमी ओव्हरी घालून ताची स्ट्रायक रेट चड आशिल्ली आनी जेन्ना कारणान तागेले विकेट्स तरी पूण ताणें चड मेळयल्यो. म्हणून म्हणटा हांव स्ट्रायक रेट सदांच आसता ती इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या स्ट्रायक रेटी खातीर 1 ओव्हरीची संदी मेळटा. थोडे बॉलरांक 2 ओव्हरीची संदी मेळटा आनी 1 ओव्हरी मेळून सुद्दां ताच्या संदीचे जे सोने करता अशे बॉलर आसतात मॅच चेंज करपाक शकता. बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट गोज टू चंद्रेश देसाय. Best bowler of the tournament goes to Chandresh Desai. Cash prize of 5,000 rupees plus the wonderful trophy. Congratulations, show, for the wonderful trophy and the prize, cash prize of 5,000 rupees. Wonderful performance. The bowler in form nowadays in the cricket world. Yes, next up is the best batsman, the batter who has scored highest runs and has scored at a swift pace. The best batsman with the cash prize of 5,000 plus the trophy goes to Chapo Elias Sarfaraz Nawaz. Yeah, he is definitely a quality cricketer and plays some quality shots. He is Sarfaraz Nawaz, one of the talented batters. आणि ताका SK म्हणल्यार सुबोध केसरकर SK हाणें बेस्ट बॅट्समॅन जे ताका फावो जातलें ताका एक बॅटरी हांगा स्पॉन्सर केल्लें. सो देव बरें कर तुका SK. Yes, next is प्लेयर ऑफ द सिरीज. 2 प्रायजां आसा, प्लेयर ऑफ द सिरीज आनी मॅक्लॅरन चॅम्प. सो मॅक्लॅरन टुर्नामेंटाकच दिता. सो मॅक्लॅरन चॅम्प हांव लास्ट दवरता आनी प्लेयर ऑफ द सिरीज अवॉर्ड अनाउन्स करता. प्लेयर ऑफ द सिरीज स्पॉन्सर केला बाब निलेश शिरोडकर आनी हो आसा एक गोल्ड कॉइन. गोल्ड कॉइन 5.6 ग्राम्स. गोल्ड कॉइन 5.6 ग्राम. थोडे एका प्लेयराक पळयता, थोडे आपल्या टिमीच्या दुसऱ्या प्लेयराक पळयता की गोल्ड कोण व्हरतलो. गोल्ड कोण व्हरता तो पळोवया. एक प्रायज म्हाका दिसता ऑलरेडी कुडचड्यार गेल्लें आसा. कुडचड्यार आनी इनाम वतलें जाल्यार पळोवया. 5.6 ग्राम गोल्ड कॉइन, 6.5 ग्राम्स गोल्ड कॉइन. हो वता प्लेयर ऑफ द सिरीज संजय नायक. परत एकदा आनी एक इनाम कुमार जुळेंतल्यान कुडचड्यार वता. परबी
संजू जबरदस्त परफॉर्मन्स बॅटिंग इन बॉलिंग इन आणि 100 वयर रन काढले आणि विकेट्स काढलो आणि फायनली एक जैतिवंत पंगड ठरलो शांतादूर घाटी ऑफ कुडचडे. संजू तुका रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा तुगे वांगडी सगळे लग्न जाल्ल्या कॉइन मेळो आत तरी लग्न जा म्हणटा ते. तर आता फुडल्या सुवातेर मॅक्लॅरन चॅम्प खरोच म्हणटा तो एक सुपरस्टार. हांगा तुम्ही दिसता की बायसिकल प्राइज आसा. बायसिकल म्हणटा ते कमीच आसता. बायकूय हार्डली कमी टुर्नामेंटाक दितात. तशेंच मॅक्लॅरन चॅम्प हो अवॉर्ड दिवचे पयलीं म्हाका दिसता हांगा एक सेंटर स्टेज घेवया, एक टायम घेवया एक भुरग्या खातीर. कारण जेन्ना हांव ह्या टुर्नामेंटाक येता एक मनीस जो सदांच सगळ्यांक बरे तरेन ग्रीट करता, जो सगळ्यांक आपुलकायेन जेन्ना हांव सकाळीं येता ताका खबर आसा हांव कुडचडेच्यान येता आनी बाई तूं भाजी खाली, बाई तूं च्या पिलो, सगळे जे कोण गेस्ट येतात तांकां बरे तरेन ग्रीट करता. दीसभर हांगा रावता आनी बॉल जो आसा तो एकठांय करता आनी खंयच्याच कामान फाटी रावना. सगळ्यांक मनांतल्यान बरो एक मनमोकळेपणान आदरपणान तांकां एक रिस्पेक्ट करता. असो आमचो एक भुरगो तेजस नायक, हाजो आमी हांगा आज बारीकसो भोवमान करतले. तेजस तूं म्हाका दिसता ज्या तरेन हांगा केन्नाय कोणी येतले जाल्यार तेजस हें नांव सदांच मॅक्लॅरन क्लबाक याद उरतलें. तेजसाचो भोवमान करपाचो हांव विकी तुकाय बी परबी दिता, कारण तेजसाक तुवें खरोच जें ताका डिजर्वींग अशें स्थान आसा ताजें जें ताका भोवमान जावपाक जाय जो केल्लो आसा. परबी तुका तेजस नायक. उमेदीचो भुरगो आनी टॅलंटूय आसा, कलाय आसा, भरपूरशी वेगवेगळे आवाजूय काडटा तो. ह्या वाठारा भितरले 2 जाण भुरगे जाणी 37 नॅशनल गेम्साक भरपूर बरें कार्य केल्लें. मिनी गोल्फ तांच्या 2 जाणांचो भोवमान करतात आनी 37 नॅशनल गेम्साक बरें काम केल्लें. गोविंदराज तारी आनी नमन सदानंद सावंत हांचो आज बारीकसो भोवमान करतात हे ऑर्गनायझर्स. हांव रिक्वेस्ट करता गोविंदराज तारी आनी नमन सदानंद सावंत मातसो बेगीन येवचो आनी आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तांच्या तर्फेच तुमचो भोवमान जातलो. तुमी इतले बरें कार्य केल्ले 37 नॅशनल गेम्स आनी रिप्रेझेंटेटीव केले आनी बरें तुमी थंय आपलें नांव कमयल्लें. गोविंदराज तारी ना आनी नमन सदानंद सावंत. तशें जाल्यार आमी आसा कोण? ओके. हांव फुडल्या सुवातेर वता. मॅक्लॅरन चॅम्प champion who has played fantastically right from the first game till the end game, and the champ of the tournament, the McLaren champ, is Sarfraz Nawaz. Yes, Chapuk, please come fast and take your award. And honors will be done by our chief guest and honorable minister for the art and culture along with the sports, Shri Govind Bab Gavde sir. Chappu cycle घेऊन वास्कोशी गाडीन घालानी वर. Yes, now time for the runners up. Runners up, cash prize of 1,11,111 plus the trophy. It goes to 2 cricketers. Captain, please come in front and collect your trophy and then the team joins. मातशें बेगीन करात. आमचे चीफ गेस्ट गोविंद बाब गावडे सराक वचपाक जाय. आज खूबशीं अशीं फंक्शनां आसात, तरी पूण तुमच्या युवा खातीर ते हांगा मुजरत हजर रावले आनी अजून पर्यंत आसा. म्हणून तांकां म्हाका दिसता ज्या तरेन युवा पिढी तांकां आकर्शीत करता आनी युवा पिढी कडेन ते आकर्शीत जाता हें ताजें उत्तम उदाहरण आसा. विनर्स प्राइज हाच्या नंतर जातले. हे आशिल्ले तुमी क्रिकेटर्स. रनर्स अप
परबी तुमकां तुवें क्रिकेटर्स बरे तरेन खेळ्ळे पूण एक पावल खंय तरी फाटी उरले खेळाक हो जीत आनी हार ही आसताच कोण जिखतलो कोण हरतलो पूण आमकां इम्पॉर्टंट की हांगा तुम कोण हरता ते कितें तरी शिकून वतले आनी जिखतले ते फुडले सुवातेर प्रयत्न करतले की आनीकदा चॅम्पियन शांतादुर्गाटी कुर्चरेम winners of Muli Chashak season 5 organized by McLaren Sports Club is the team Shanta Durgati of Kurcharem, the champions of the 5th edition. Please collect your trophy, the captain and the team. Begin yet. Cash prize of 2,22,222 plus the trophy. जय देव बरें करूं तुका विकी म्हाका एक संद दिल्ल्या बद्दल हांगा कॉमेंट्री आनी एंकरिंग करपाक आनी अशीच म्हाका दिसता संद फुडल्या वर्सा म्हाका मेळटली अशी आशा करता आनी सगळे जे मानेस्त हांगा आयिल्ले हजर जाल्ले